Dignitaries on the dais are Professor Sangeeta Shukla Ma'am, Honorable Vice Chancellor CCS University Meerut, our chief guest Mr. Chandrasekhar Sharma Tanikela, Scientist F for Foresight and Vision Division, Caltech, New Delhi. Guest of honor Mr. Dhirendra Kumar Verma sir, Registrar CCS University. Our inaugural speaker Professor Pal Singh sir, Director Research and Development CCS University. Our guest of honor, Dr. Dinesh Kumar, Principal Scientist, ICR IASRI Pusa, Campus. Dr. Dinesh Kumar Tiwari, sir, संयोजक शिक्षा संस्कृति और उन्नयास मेरठ. Professor S.S. Sir, Nodal Officer, IP Cell, CCS University. Professor Rahul Kumar, sir, Head Department of Genetics and Plant Breeding, CCS University. Goddess of Knowledge, Ma Saraswati. I request all the dignitaries of the dais to kindly come forward to worship Goddess Saraswati. And I invite the students of MSc Biotechnology to sing Saraswati Vandana. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुझसे की तेरी है संगीत तुझसे हर शब्द तेरा तुझसे हम हैं अकेले हम हैं अधूरे तेरी शरण में हमें तार दे माँ हे चार दे माँ दे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ मुनियों ने समझी ऋषियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या से हमको अधिकार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञान कमल पे विराजे हाथों ज्ञानता के मिटा दे हमें उजालों कर दे माँ हे दे माँ अज्ञान कर दे माँ शारदे माँ अज्ञानता से मिटा दे। Thank you, students. Now it's time to officially welcome our honorable dignitaries and I request Professor Jitin Singh sir to offer a sapling to Professor Sangeeta Shukla ma'am as a mark of welcome. I request Dr. Nitin Tyagi sir, Agriculture College, Machura, to present a sapling to our guest of honor, Dr. Dinesh Kumar. Oh, yes, yes.
I request Dr. Neetu Singh ma'am from MIM College to present a session for Chief Guest Mr. Chandrasekhar Sharma Sanikela, sir. I request Dr. Nitin Garg sir to present a sapling to our inaugural speaker, Professor Birpal Singh sir. I request Dr. Ashu Tyagi sir to present a sapling to Professor S.S. Gaurav sir. I request Dr. Dinesh Pawar sir to present a sapling to Professor Rahul Kumar sir as a mark of welcome. I request Dr. Lakshman Nagar sir to present a sapling to Dr. Tanupriya ma'am. Thank you, everyone. Now I request Professor S.S. Gaurav sir, Nodal Officer IPCell, to give a welcome address. Thank you. Good morning to all. Thank you, Dr. Venika, for nice entering. Chairperson of this inaugural session, Honorable Vice Chancellor of our University, Sangeeta Shukla Madam, Chief Guest of this inaugural function, Chandrasekhar Sharma Tanikela Sir, who is serving as a scientist of Foresight and Vision Division and in charge Horizon Scanning Unit, IPR DST Government of India. Our inaugural speaker, my friend Professor Birpal Singh, Professor of Physics and Director Research and Development. Guest of honor, Sri Dhirendra Verma ji, Registrar of this university, who has left some of his engagement with the Indian office. And other guest of honor, an invited speaker, Dr. Dinesh Kumar, who is a renowned scientist, principal scientist, working at the Informatics Division, ICAR, IARI, IASRI, Pusan, Delhi. And Professor Rahul Kumar, Executive Department of International Planning. We have also with us Dr. Birendra Kumar, as we are jointly organizing this workshop under the umbrella of IPCS and in joint collaboration with the CCS University of Kenya, that is NGO work for the cause of education. Where he is looking after as a Sanjak convener of Meerut plant that comes from the 14 districts. So, on the dais. And of the dais, I can see several faculty members. Professor Jitendra Singh, Department of Microbiology, Dr. Vinay Pamar, Department of Building, Dr. Pavitra Deo from Horticulture, Dr. Lakshman, Dr. Rashmi, Dr. Neetu Singh from MIM, Dr. Dinesh Pamar, Dr. Nitin, Dr. Asu Tyagi, and several other faculty members from the different institutions. Here, all the distinguished guests, faculty member and dear students. And it is my great honor for myself to welcome you all on this one-day workshop on intellectual property right, enforcement and policies. I am sure that your presence will be highly appreciated and broaden the knowledge, experience, and other benefits to all the delegate participants and faculty members. The participant may understand how to make the use of technology transfer within and between the institutions and commercialize IP generated through in-house R&D programs.
We all know that progress and prosperity of any nation in this knowledge era depends on the level of scientific, technological, and industrial advances. I am happy to share that my university, Chaudhary Charan University in Meerut, is playing a very significant role in linking the university, research institutions, and industry together in the form of MOU and promoting in-house generation of teaching necessities under the generous and dynamic leadership of our Vice Chancellor, Professor Sangeeta. And I have no doubt to say that our research facility, contribution of creation of potential knowledge and human resources, we are far, far ahead university system and institution in not only India region, but in IP, Professor will talk about the different advancements, and credentials that we are far, far better in many institutions, not only in India, in many other nations. The main purpose and focus to organize such an event is to address the critical issues of young scientists, farmers as a PVR, that is plant variety protection, and student progression with deliberate, worthful knowledge to young researchers and specialists. I'm happy to share that we have got more than 450 student registration in this workshop, and the institutions those are located in this area, and we can see that more than 200 participants, several participants, they are on the way. I hope more than 300 participants will be there. We have also arranged this event could be broadcasted live streaming in our university YouTube channel to get the benefit for a large mass. In this channel, the link of this channel has been disseminated not only this university but other institutions. And thousands of students and faculty members are linked, and they are uh, just watching this event on live. At this juncture, on behalf of CCS University Meerut, along with the organizing committee, I warmly welcome Honorable Vice Chancellor Professor Sangeeta Madam, she has provided all the financial assistance, all the guidance, and all kind of supervision. So, Madam, I am very thankful on behalf of organizing committee for your generous help. And under this very busy schedule, she has managed time to come to bless us. Thank you, Madam, and welcome at this juncture. I also personally, I also personally thank you to Professor Pal Singh, who is the Director of Research and Development of this university and Professor of Physics. I requested him to deliver an inaugural lecture, including our credentials of university and some basic idea of IPR. So very generously, in not only a but I suggest. So I'm again very thankful to Professor Birpal, and I also welcome him at this event. We have with us our chief guest. Our chief guest, that is Shri Chandrasekhar Sarmaji, who is from DST. He is a very known person of IPR. We see that IPAC website, the leading person in India in the IPR discipline technology. So I'm thankful to you, sir, that you very generously agreed to the request and you are here. Welcome you and welcome you to the presence. We have with us Dr. Dinesh Kumar, sir, who is the very renowned scientist, not only in India and globally. If you go the area, we have 10 scientists, I think, of the globally well recognized in institutions and organizations. Very generously, only phone call, you have given it time. So, sir, thank you for traveling from Delhi and coming even before time. So, thank you, sir, and I welcome you.
personally at this university. I am also very thankful to Professor Dr. Biren Tiwari ji, who is here. Even today, he has a lot of investment in his college, the business and family function. Mother, but I requested him on the behalf of Shiksha Sankati Uttanya. So he will also be the center for the presence of them, not only gracious in the others. I also welcome Dr. Tiwari. I also study methodology and my younger brother who is continuously helping me every moment during the organization of this program, and whole day he will be here to help to guide my younger generation. So I am very thankful and welcome you, Professor Jitendra Singh, all the faculty members, all the dear students, participants, and whatever directly or indirectly involved to make this function alive and successful. I'm very thankful to all of you and welcoming you here again. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Now I request Dr. Nitin Garg, sir, from Department of Biotechnology, to tell us brief about the workshop. A very warm good afternoon to all present here. Today, we all are here to participate in one-day workshop on intellectual property rights, enforcement and policies, which is jointly organized by IP Cells University, Shiksha Sanskriti Uttarakhand, and sponsored by the Council of Science and Technology, Lucknow, UP. On this day, we are also celebrating Science Day in the honor of great Professor Shri C.V. Raman sir, who won in 1930. It is a day to innervate young minds and to impart scientific spirit. This year, the theme for National Science Day is Indigenous Technology for Viksit Bharat. This theme gave us an idea to celebrate this day by organizing a workshop on intellectual property rights. Idea, innovation, and creative expression based on which the public is ready to confer the status of property has been classified as intellectual property. Participants would understand how to use of technology transfer with and between the organization and providing a hands-on training how to reach or search the databases. Attendees would also be given information on their own rights and responsibilities regarding IP generated through their and commercialization options available for innovation for academic research. I also want to tell here, or I am very pleased to share you, that our university is first in UP and fourth in India in terms of number of patent granted status among all the universities in India. This all is because of the continuous motivation of our Honorable Vice Chancellor, Ma'am, Dean Researcher, and Nodal Officer, Intellectual Property Rights Cell, sir, and hard work of all the faculty members and students of the university. I welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Now I request Dr. Viren Kumar Tiwari, sir, संयोजक शिक्षा संस्कृति उपन्यास, to say few words. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के इस कार्यक्रम में शिक्षा उत्थान न्यास के तरफ से मैं इस सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं सहभागियों की स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के
कार्यक्रम के हम लोगों के वक्ता वीरपाल जी, मुख्य अतिथि दिनेश जी, हम लोगों के बीच में इस विश्वविद्यालय को, चरण से विश्वविद्यालय को उच्च शिखर पर पहुंचाने वाली यशस्वी, ओजस्वी एवं यशस्वी संगीता शुक्ला जी, ये सब तो कहने के लिए नहीं है। यहाँ पे जितने छात्र हैं, जितने लोग बैठे हुए, सबको पता है कि महोदय के नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय ने उच्च स्तर को प्राप्त किया अपने इतिहास में। ऐसे गतिशील के लिए एक बार जोरदार तालियां। जिस तरीके से जिस विश्वविद्यालय को आने के बाद सबको साथ लेकर के विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदया ने कार्य किया और विश्वविद्यालय के नैक के इंस्पेक्शन के दौरान परिश्रम करके अपने उच्चतम मापदंड स्थापित कराया विश्वविद्यालय के लिए। उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग के बीच में हम लोगों के शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के मेरठ प्रांत के, मेरठ केंद्र के और विश्वविद्यालय केंद्र के संयोजक प्रोफेसर जितेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लक्ष्मण नागर हम लोगों के शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रतियोगी परीक्षा के प्रांत के संयोजक का दायित्व है, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस विश्वविद्यालय में तमाम शिक्षक जो कार्यरत हैं, उपस्थित हैं यहाँ पे, सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के बारे में बिल्कुल एक बात करके समाप्त करूंगा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास मातृभाषा कोई विकल्प नहीं है। देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। और समस्या नहीं समाधान की चर्चा करें, इन 3 ध्येय वाक्यों को लेकर कार्य करता है। और शिक्षा में भारतीय विकल्प खड़ा करना इस उद्देश्य के तहत कार्य करता है। 2004 में जब तत्कालीन सत्ता परिवर्तन हुआ केंद्र में, तो पूर्व सरकार द्वारा जो भी सकारात्मक थे, जो भी उसको सरकार ने बदलते हुए तमाम तरह की विकृतियां पाठ्यक्रमों में आ गई। उसके विरुद्ध 2004 में शिक्षा बचाओ आंदोलन के रूप में दीनानाथ बत्रा जी के नेतृत्व में कार्य प्रारंभ हुआ और बहुत सारे पेश किए गए न्यास शिक्षा बचाओ आंदोलन के रूप में और सफलता मिली। बहुत सारे पाठ्यक्रमों में विकृतियां दूर हुई कोर्ट के माध्यम से। फलस्वरूप 2007 में 24 मई 2007 में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का गठन किया गया, शिक्षा में भारतीयता के लिए कार्य करने के लिए। तब से निरंतर अपने सचिव राष्ट्रीय सचिव अतुल भाई कोठारी जी के नेतृत्व में न्यास निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अवेयरनेस के लिए कम से कम 400 से ज्यादा सरकार संगोष्ठियां न्यास कर चुका है। अभी हम लोगों के जयपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था न्यास का, उसमें प्रोफेसर पंकज मित्तल जी वो अध्यक्ष के रूप में चुनी गई, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग सुनने के लिए आए हुए हैं अपने गेस्ट को। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Now I request our guest of honor, Dr. Dinesh Kumar, Principal Scientist, IPR, ISI, New Delhi, to share his views about the program.
आप सभी को नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन इस कार्यक्रम। मुझे बहुत खुशी है कि बौद्धिक संपदा का कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इससे भी ज़्यादा प्रसन्नता है कि मुझे मौका दिया गया है जो कि वैज्ञानिक के रूप में, और कुछ दिनों तक मैं आचार्य भी था विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। जो भी सीखा और मैनेजमेंट डीन एकेडमिक जो किया उसको साझा कर सके। बौद्धिक संपदा अधिकार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते क्या क्या बदलाव लाना है, विस्तृत चर्चा तो बाद में, अभी मात्र एक दो बिंदु मैं कहूँगा इसलिए क्योंकि और इसमें ही बौद्धिक संपदा भी है जो कालांतर में हमें देश की पिछले अगर क्रिया की करते हैं तो क्या वापस हम या मेरी सोच को देने के लिए आयोजित की गई है। मेरी तरफ से हार्दिक बधाई कुलपति महोदया का कि उन्होंने इसकी महत्वता को देखते और इतना अच्छा विश्वविद्यालय का प्रदर्शन होते हुए और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब मैं सीधे आता हूँ कि 2047 में भारत 35 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ विश्व के अग्रणी देश में आएगा या नहीं। अगर आएगा तो उसमें विद्या मंदिर रूपी विश्वविद्यालय की क्या भूमिका होगी, और जो हमारे नए नियम एक्ट पास हो चुके हैं जिसको हम कहते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023, जो कि अगस्त 2023 15 अगस्त के दिन वो जारी हो चुका है, अब एक्ट बन चुका है, लागू हो चुका है। क्या हम अपने सभी प्राध्यापकों को इसके प्रति प्रेरित कर पाएंगे? इसलिए ये कार्यशाला आवश्यक है। और जब मानव विकास हुआ तो सबसे पहले होमो सेपियंस जो हमारा है, इससे पहले निएंडरथल मानव का नाम आपने सुना होगा। वहीं से ये विकास हुआ। पहले एग्रीकल्चर वाली बात थी, फिर उसके बाद नेशनलिस्ट इकोनॉमी आई, उसके बाद इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आई। आज की तिथि में ये नॉलेज इकोनॉमी, जिसको हम नॉलेज 4.0 कह सकते हैं, और शिक्षा 4.0 के जगह मैं कहूँगा 5.0 अग्रणी होकर चलना है। और इस विश्वविद्यालय ने ये दिखाया है। और जब तक हम 4.0 नॉलेज 4.0 तक नहीं पहुँचते हैं, तब तक ये 35 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य 2047 जब हम 100 वर्ष के होंगे पूरा होगा, तो ये कार्यशाला आप सभी को मानसिक रूप से करने के लिए और समझने के लिए कि हमें क्या सोचने की ज़रूरत है। अंतिम बिंदु कहूँगा कि ग्लोबल इनोवेशन में हम पिछले 2 साल से 40वें पैर पे हैं। हम में से कोई नहीं मानेगा कि क्या 39 राष्ट्र के लोग
लोगों से ज़्यादा बुद्धिमत्ता रखते हैं, बौद्धिक संपत्ति अधिकार रखते हैं। यह सत्य ज़रूरत थी, शिक्षा में शिक्षा नीति से ये हो रहा और शिक्षा में परिवर्तन के साथ-साथ अनुसंधान चतुर्वर्ष अनुसंधान का अभिप्राय मेरा विज्ञान से नहीं है। यह अनुसंधान प्रबंधन के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, सभी विषय में, जिसमें इतिहास, भूगोल, वनस्पति विज्ञान सभी में है। इसमें है, हम के पावर आगे जाएँगे और आपके हाथ में जो सेल फ़ोन है, आपके पास जो लैपटॉप है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो एंड्रॉयड का हो या विंडोज़ का हो, ये हमारा नहीं है। यह मुझे हमेशा महसूस होता रहता है कि हमारे छात्र, हमारे वैज्ञानिक क्यों नहीं 39 राष्ट्र को पार कर पा रहे कार्यशाला इसीलिए है। पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, सभी को सादर Professor Anil Malik, sir, head department, and Professor uh, Dushyant from Geology. Yes, you are correct. Now it's time for inaugural lecture. And before that, I would like to give a brief introduction about Professor. Yes, sir. Professor Birpal Singh, sir, is professor in the Department of Physics at CCS University Meerut. He has pursued his post-graduation as well as doctorate degree from CCS and joined as assistant professor in 2004. He is also holding the post of Director, Research and Development, Chief Proctor, Security Officer, and Deputy Director, Center of International Cooperation in University Administrations. Recently, he had worked as visiting professor in Tokyo University of Science at Japan, and visiting scientist as Raman Fellow in University of Puerto Rico, USA. He has also visited Germany, France, China, USA, and many other countries and presented his research work. He has also कार्यक्रम जो अभी प्रोफेसर दिनेश जी ने भी चर्चा की है और संप्रदाय ऐसे विषय हम लोग अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल नहीं करते हैं। हमारे पास अलग से सेल है। ऐसे कार्यक्रम में मंच सुशोभित कर रही हमारी माननीय प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, उन्हीं के साथ हमारे आज के गेस्ट और कार्यक्रम का जो गौरव जी
विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छे दिन का एक विज्ञान का अध्यापक होने के नाते और आप सबको भी पता है, हमारे देश का, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। आप सब बैठे हैं और प्रोफेसर दिनेश जी भी हैं, सब लोग IPR के महारत हासिल करने वाले। मुझे बस ओवरव्यू देना है, मुझे क्षमा करेंगे, वहां मेरा कोई विशेषज्ञता इस विषय में नहीं है। हाँ, इतना है कि थोड़ा जानता हूँ, पढ़ने लिखने का शौक है, तो ये भी पढ़ने लिखने की कोशिश करता हूँ। चेंज करें, स्लाइड चेंज दे देंगे, पोइंटर दे दो, अब मुझे दे दो, मैं नीचे आ जाऊंगा। यहीं से करते हैं। So, first of all, as I told you, wish you all very happy National Science Day 2024. And as Mr. Sarma also told that the theme of 2024 National Science Day is very, you can say, relevant in terms of the vision of our Prime Minister Viksit Bharat, that the indigenous technology for Viksit Bharat. And we all know that at this moment we have to acknowledge, we have to you simply say, remember the great scientist Sir C.V. Raman. We all know that why we celebrate. This is all about some contribution and something about Sir C.V. Raman. We know all well that on 28th February 1928, he discovered a very important phenomenon of physics. We all know the Raman effect. And that Raman effect is very useful just to characterize so many materials, starting from materials we use in life science to physical science. So it's very important kind of discovery. And just after that, he was awarded by Nobel Prize in 1930. This is all about some achievements of great Sir C.V. Raman. We all know all about these achievements, but just for remember that particular day, National Science Day, I really try to put these slides in front of you people. This will be the plan of my talk. Firstly, I will try to say something about my university, CCS University Glance, recent advancements and rankings. I will try to show you. After that, I will let you know something about my contents of the talk. And ultimately, I will say thanks to you all. So, as far as the achievements of this university is concerned, this is all about the achievements. Here you are seeing that our university is accredited by NEC with A++. And here, it's again a matter of fact that we have to realize that we have A++, and our CGPA out of 4 is 3.66. It's really very impressive CGPA. Even your 3.5 is more than enough for having A++. But our university has CGPA 3.66. And this is all about the university profile. This particular university has been established in 1965, the old university. And right now in our campus, we have 7 faculties, starting from faculty of science to faculty of your sports and all. We have 37 departments, and we are running more than 136 programs in our university right now. And we have more than 2-3 faculty members who are serving for this university, the university campus only, and more than 5,000 university we have students we have in our university. I used to say that it is really doing very excel in the leadership of our Honorable Vice Chancellor, Professor Sangeeta Shukla ji, in research as well as in sports. I personally feel that.
And from that point of view, you will see that our more than 29 publications of research articles are really in a good journals having impact factor more than 5. And the highest impact factor in which our faculty papers are student publishing, that is more or less 25. And H index, if you see the H index of this university, that is last 5 year of last 5 year, that is citation is 11.4. So this is all about the brief of our university, and this is all about the rankings. Recently, पीछे जाइए. In India today, with MDRA has announced the rankings of government universities, and in that our university really has third rank in our Pradesh, including center universities. Again, because it's a matter of data, we have to realize that we are at third position among how many universities. So you have to realize that in Uttar Pradesh, how many universities are there, and this data is including center universities. So we are at third position, including center university in UP, and in whole Bharat, we are at 22 rank as per India Today MDRA survey ranking. And as far as Dr. Nitin Garg has mentioned, that we are fourth position in patent in the country. Now, in that case again, you have to realize at fourth there are 4 universities, including Chaudhary Charan Singh University Meerut. Now, rest 3 universities are really well known. आप लोग कहते भी है, JNU भी हमारे साथ है, चौथे नंबर पे ही है. यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, हम भी चौथे नंबर पे ही हैं. और यहाँ देख लीजिएगा, द यूनिवर्सिटी विच इज एट थर्ड रैंक, दैट इज आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी गुंटूर. इन लोग के 16 हैं पेटेंट ग्रांटेड इन लास्ट 3 ईयर. हम लोग मेरठ के हैं. अगर थोड़ा सा पता होता कि 16 करके हम लोग आ जाते तो लगभग हम 20 कर लेते, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है. मेरा कम से कम ये कॉन्फिडेंस है, मैं यहीं का छात्र हूँ. तो हम लोग और ऊपर आ सकते थे, बट फिर भी हम लोग चौथे नंबर पे हैं, पूरे देश में हैं. इट्स मैटर ऑफ रियलाइजेशन. आगे चलो. Recently, as far as the research footprint and citation of this university is concerned, Clarivate with Web Science has awarded India Research Excellence Citation Award 2023 to our university among the category of state university of whole country, जहां देश में लगभग 450 से ज्यादा राज्य विश्वविद्यालय हैं, वहां आपका विश्वविद्यालय उन सभी 450 राज्य विश्वविद्यालयों में नंबर 1 पे है रिसर्च साइटेशन अवार्ड्स के मामले में. आपको हिंदी ज्यादा समझ में आती है ऐसा मुझे लगता है, तो वो मुझे बताना होता है कई बार, तब थोड़ा लगता है कि आपको कुछ हुआ है. माने हम लोग नंबर 1 पे हैं 450 विश्वविद्यालय में, लगभग 450 विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय हैं देश में. वहां हमारी रिसर्च साइटेशन की बात यहाँ पे हो रही है. आप सभी लोग साइंस के विद्यार्थी है, साइंस करते हैं. साइटेशन का मतलब आपको पता होता है, माने रिसर्च आपने की है, क्या उसका यूज है, कौन लोग उसको पढ़ रहे हैं, कौन लोग साइट कर रहे हैं, तभी उसका फायदा है. वहां हम लोग ऐसी रिसर्च कर रहे हैं, आपका विश्वविद्यालय ऐसी रिसर्च कर रहा है कि आप पूरे प्रदेश नंबर 1 पे है. इसी के साथ साथ आगे चलिए बेटा. कैटेगरी और थी, पीछे चलिए, जिसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में अवार्ड मिलना था. व्यक्तिगत श्रेणी में आप ही के विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर स्वरूप कुमारी को वुमेन इन रिसर्च में पूरे देश में ये इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड वुमेन इन रिसर्च कैटेगरी में उनको दिया गया है. और मैडम वाइस चांसलर भी इस प्रोग्राम में फंक्शन में थी. हम लोग जब इस अवार्ड को रिसीव करने गए थे, वास्तव में हमें नहीं पता था कि हमें कौन सा अवार्ड मिलने जा रहा है. हम लोग चिंतित थे. मैडम भी बार-बार यही कह रहे थे कि पूछिए कहाँ पे हम लोग हैं, क्या हमारी स्थिति है. हम लोग डरे हुए थे, और यहाँ तक भी हम प्लान कर रहे थे कि अगर हम कुछ लास्ट में होंगे, 8वें 10वें नंबर पे होंगे, तो अवार्ड ले लेंगे, धीरे से निकल लेंगे, खाना-वाना नहीं, डिनर नहीं करेंगे. बट जब हमें पता चला कि हम लोग इस पोजीशन में हैं, बड़ा अच्छा लगा. और एक बात मैं और बताऊँ आपको
एकमात्र विश्वविद्यालय था पूरे देश का जो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में भी और इंडिविजुअल कैटेगरी में भी जगह बनाए हुए था। कोई भी संस्थान नहीं थी। तो ऐसा आपका विश्वविद्यालय है। ये कुछ एक डेटा है जो हम लोगों ने किया जिसकी वजह से हम लोग को ये मिला। 792 रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स हम लोगों ने पिछले 5 साल में पब्लिश किए और उसी के फुटप्रिंट्स पे हम लोग को ये रिसर्च अवार्ड मिला है। इसी के साथ-साथ इफ यू सी व्हाट इज आवर पोजीशन अक्रॉस द ग्लोब, माने पूरे विश्व में हम कहाँ हैं? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अगर आप एशिया कंटिनेंट की बात करते हैं, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 डिक्लेयर हुई अभी। वहाँ साउथ एशिया में हम लोग 219वें पोजीशन पे हैं। फिर वही बात कि 219वें पे हैं, तो हमें जानना होता है कि 219वें पे हैं, कितने विश्वविद्यालय यहाँ रहे होंगे? लगभग 6000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय यहाँ हैं। साउथ एशिया में 6000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, तब आपका विश्वविद्यालय 219वें नंबर पे है। ये भी एक आपका पूरे एशिया में जहाँ लगभग देयर आर मोर देन 13,000 यूनिवर्सिटीज़, वहाँ आपका विश्वविद्यालय 701 से 750 वाले बैंड में है। यहाँ भी आपकी पोजीशन अच्छी है और ये भी आने वाले टाइम में हम लोग की यूएस रैंकिंग अच्छी हो जाएगी, ऐसा हम लोग का अपना प्रयास है। रिसेंटली एक रैंकिंग और होती है सिमैगो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग। इस रैंकिंग की अगर आप बात करें, इस रैंकिंग में भी आपका विश्वविद्यालय, ये भी रिसर्च रिलेटेड रैंकिंग है, आपका विश्वविद्यालय प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नंबर 1 है और पूरे देश में इंक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स एंड ऑल द रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वी आर एट 66 नंबर, 66वें स्थान पर हम हैं और हमारे से ऊपर कोई भी राज्य विश्वविद्यालय इस देश का नहीं है। हम भी यहाँ नंबर 1 पे हैं। हम लोग के रिसर्च पब्लिकेशन, टारगेटेड जर्नल्स हमने यहाँ दिखाने की बात की। हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स, हमारे छात्र जर्नल पब्लिश करते हैं, वो सब डेटा मैंने यहाँ दिखाने की बात की है। मैंने बताया था लगभग 24-25 इम्पैक्ट फैक्टर तक हम लोग छापते हैं और एवरेज इम्पैक्ट फैक्टर हमारे यूनिवर्सिटी का अगर हम बात करें लगभग 5 है, 5 है। ये कुछ एक कोलैबोरेशंस, नेटवर्किंग की बात है। यहाँ हमारा नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी कोलैबोरेशंस हैं, काफ़ी हम लोग के एमओयूज हैं और फैकल्टी एक्सचेंज भी हो रहा है और मुझे इस मंच के माध्यम से इन बच्चों को बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि हमारे छात्र भी, छात्राएँ भी सीधे जापान, चेक रिपब्लिक, कोरिया, यूएस जैसे देशों की अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में सीधे पीएचडी में या पीएचडी के साथ-साथ वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा भी हम लोग कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट काइंड ऑफ नेटवर्किंग, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट काइंड ऑफ एमओयूज व्हिच वी हैव विद डिफरेंट यूनिवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब। अभी हाल ही में यू हैव हर्ड पीएम ऊषा, पहले इसको रूसा बोलते थे, अब ये पीएम ऊषा हो गया है। यहाँ भी आपके विश्वविद्यालय के इस तरह के रिसर्च के, एकेडमिक्स के और ओवरऑल माने अचीवमेंट्स को देखते हुए और दूसरा मैं ये भी माननीय कुलपति मैडम की जो एक्टिवनेस है उसको देखते हुए हम लोग को पता है हम लोग क्या हैं, बट वो बता नहीं पाते थे हमसे पहले, कई बार ये होता था। वो सारा डेटा निकालना, उसको प्रेज़ेंट करना, उसको बताना हम क्या है, जो मैं भी अभी कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ऐसा हम पहले नहीं करते थे। ये सब हुआ, उसी के नतीजा ये हुआ कि हम लोगों को नेहरू में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, इस कैटेगरी में भारत सरकार ने आपके विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए की ग्रांट सैंक्शन की है। मात्र 5 विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश में हैं और 26 विश्वविद्यालय पूरे देश में हैं, जिनमें एक आपका विश्वविद्यालय भी है, स्टेट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, ये 100 करोड़ की ग्रांट हम लोग को मिली है। इसके लिए भी आप सभी को बधाई। ये भी आपका एक अचीवमेंट है, जिसमें लगभग 30% हम लोग नए कंस्ट्रक्शंस पे खर्च करेंगे, लगभग 30% रिसर्च के इक्विपमेंट्स पे हम लोग अच्छा करेंगे, रिसर्च लैब बनाएँगे। 30% जो इनोवेशन है वो करेंगे और लगभग 8% का हम लोग का काम इसमें सॉफ्ट स्किल्स है, सॉफ्टवेयर है, ऐसी ट्रेनिंग्स है, उन पे करना है। माने ऐसा भी आपके विश्वविद्यालय को एक ग्रांट मिली है। These are some prominent alumni of your university, nothing to say, all well, सबको आप जानते हैं, उनके फेस भी आप जानते होंगे। ये सब लोग हमारे ही विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं।
आपको भी शुभकामनाएँ हैं कि आपका हम लोग फ़ोटो इस तरह के प्रेज़ेंटेशंस में आगे आने वाले प्रेज़ेंटेशंस में लगाएँ। आप भी इससे मोटिवेट हों, जस्ट इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अभी मैंने बताया भी था कि काफ़ी स्टूडेंट्स हम लोग के 2023 का ही डेटा है। आप देखिए कम से कम 8-10 स्टूडेंट्स मैंने लिखे हैं, जो मुझे पता थे, बाहर गए हैं पीएचडी के लिए या कोई कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अभी विश्वविद्यालय आपका कर रहा है, ये भी मुझे आपको बताना था। That was all about the achievements of your university, Chaudhary Charan Singh University. Now, the second part of my talk is I have to give some overview of IPR. Although we have a lot of speakers about IP and IPR and their policies, मेरा इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी थोड़ा-सा बताने की मैं कोशिश करूँगा। मैंने इन जनरल जो जहाँ तक मैं आईपी को समझ पाया हूँ, बौद्धिक संपदा को समझ पाया हूँ, हम लोग अपने लाइफ में भी, अपने जीवन में भी यही रहता है, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, अल्टीमेटली वी हैव टू गैदर द प्रॉपर्टी। पढ़ने के बाद भी आप जो करेंगे, आपका मेन टारगेट यही रहता है कि कुछ न कुछ संपदा आपके साथ जुड़ी हो। और अब तक जो आप सोचते हैं कि संपदा क्या हो, यू नो वेल, आपके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा मोबाइल हो, समथिंग लाइक दैट। ऐसी आप बातें करते हैं। ये कड़वा सच है, यही हम लोग का ध्येय रहता है और उसी में हम लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है, राष्ट्र निर्माण की बात भी उसी में करते हैं, पहले अपने आप में एक माने इस तरह का विज़न हम रखते हैं। इसी प्रॉपर्टी में आप लोग एकेडमिशियंस हैं, आप लोग इंटेलेक्ट्स हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी को तो करेंगे ही, दैट्स कॉल्ड टेंजिबल प्रॉपर्टी। उसके साथ-साथ इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसकी भी चिंता आप करेंगे जो आप कर सकते हैं। इट्स द प्रॉपर्टी व्हिच यू विल क्रिएट बाय योर ओन माइंड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम बताएँगे, आपको आप पढ़ते भी होंगे, वो आपको करना है। साथ-साथ टेंजिबल में आपको पता होता है, कई बार एडवोकेट्स भी लिखवाते हैं, चल और अचल संपत्ति। वही है मूवेबल और इमूवेबल, बट in case of intangible or intellectual property there are two category, one is industrial property and second is copyright, that is totally related to you people, although both are related to you but copyright तो लिखने पढ़ने वाला काम तो आपका है। तो ऐसी प्रॉपर्टी आपको करनी है। एंड अमंग इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी you have patents, design, ICs, trademarks and GI kind of IP you have, and in copyright कि आपको कंटेंट्स बनाना है, कुछ अच्छा कंटेंट जनरेट करना है, कुछ फील्ड्स में मैं आपको दिखाऊँगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी। दिस इज़ द एग्जैक्ट डेफिनिशन ऑफ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। आप इतना ही मान लीजिएगा कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज़ क्रिएटेड बाय योर ओन माइंड और उससे अलग है जो आपके चारों तरफ है, जो आप देख रहे हैं, दैट मे बी माने उनको छोड़ दीजिए, एक्सक्लूड real and personal property as a piece of land, as buildings, ships, automobiles, books, machines, tools, etc. etc. The things you are seeing around you, इनको छोड़ते हुए जो प्रॉपर्टी आप अपने माइंड से बनाएंगे, अपने इंटेलेक्ट से बनाएंगे, दैट रियली कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और कैसे होगा? दैट रियली इंक्लूड योर इन्वेंशंस, योर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, योर डिजाइन्स एंड ड्राइंग्स, your symbols, including your signs and logos, names and image, and etc. etc. So that kind of property will be come under the intellectual property. Here I try to mention three kind of things. That's the resources, brain and labor. यहाँ समझने की आप कोशिश कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और योर टेंजिबल प्रॉपर्टी, all are really all around resources, labor and brain. But your intellectual property, you cannot gather that property by labor. You cannot gather that property by resources. You can only own that property by your intellect, by your brain, जो आप में है। बस इतना सा यहाँ पे मुझे बताना है। This is all about ownership of tangible property. As you have your ownership by your own property. If you have mobile, then you may prove that it's your mobile. If you have a piece of land, then you may prove that it's of your piece of land. Even if you have a house, you may see the registry or whatever that paper, and you may prove that this particular kind of property belongs to you only. At the same time, you have to protect, you have to have licensing, you have to have ownership of your intellectual property. वो भी है, उसके लिए भी इस तरह के नियम कानून हैं और जो आपको करने हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना मान लीजिएगा कि जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल में, संविधान में आपका प्राविधान है कि आपकी संपदा आपकी है, ऐसी बौद्धिक संपदा के लिए भी संविधान में अधिकार है, संविधान में
पूरा प्रोविजन है कि ये प्रॉपर्टी आपकी ही है, बस इतना मुझे स्लाइड से बताना है। उसके एक्ट्स है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके रूल्स है, उसके रेगुलेशंस हैं। माने अगर आप कुछ क्रिएट करते हैं, तो जैसे राइट्स आपके वहाँ पे है, आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे ही डिफाइंड राइट, ओनरशिप, लाइसेंसिंग आपकी यहाँ भी है, इतना। दिस इज ऑल अबाउट के प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, हिस्टोरिकली मैंने कुछ एक बातें यहाँ पे लिखी हैं, कहाँ से शुरू हुआ, बट अल्टीमेटली यू कैन से योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रियली एनकरेज योर क्रिएटिविटी। क्यों करना है, क्यों दिमाग खराब करें, क्यों इन्वेंशन करें, दैट रियली encourage you just to be a creative human being, and for dissemination, for application of its outcomes, and even for fair trade. You can do that, which would really contribute to economic and social development of any nation or of your society or of your individual development. So you have to have, or you have to own that kind of property. This is all about again the importance that you have to protect your property, and ultimately you have to have the license. जैसे पेटेंट होता है, प्रोटेक्ट हो जाती है, देन यू इस जगह आप बताते हैं मेरे इतने पेटेंट्स हैं, आपका कहीं भी पढ़ा जाता है, वहां बोला जाता है आपके इतने पेटेंट, एकेडमिक राइट आपको मिलता है, एंड दैट एक्सक्लूड अदर्स, जिनका नहीं होता है उनसे आप अलग हो जाते हैं। देखो इनकी पेटेंट्स है, इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इनके पास में कॉपीराइट है, समथिंग लाइक दैट, एंड अल्टीमेटली you may utilize that for any commercialized purpose, you may invest and earn, and ultimately you may get in academic prize. That was the importance of that kind of property. And this is all about the different subject matters, माने किस किस को आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपको प्रोटेक्ट करना है, that is all about that. You may go for literary and artistic and scientific works under IP, performance of performing artists, or your phonograph and broadcast, ये भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कॉपीराइट में आप यही कि लिखना ही आपको है, आप कुछ बोल भी सकते हैं, वो भी आपका कंटेंट है। इन्वेंशंस इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर, which is really created by your own mind. Scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names, and designations, and GI is the latest one under IP. This is all about the very first, the patent. Okay, and अभी मैं आपका शेड्यूल भी देख रहा था, पेटेंट्स पे काफी लेक्चर आपके यहाँ होने हैं, उसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि पेटेंट्स आर रियली द टेम्परेरी मोनोपोली ऑफ योर डिस्कवरी, ऑफ योर इन्वेंशन। एक टाइम के लिए आपको मिलेगा, टाइम बाउंड आपका, और उसके साथ साथ कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स आप कर सकते हैं, ट्रेडमार्क्स कर सकते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स कर सकते हैं, एंड फॉर योर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यू मे हैव प्लांट ब्रीडर्स राइट, पीबीआर, एंड प्लांट वैरायटी राइट, माने जो भी आप वैरायटी बनाते हैं, जो भी आप ब्रीडिंग्स करते हैं नई-नई अपने प्लांट में, उनको भी आप अंडर आईपी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ यू हैव सम डिजाइन फॉर आईसी, एक का मामला है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वो भी आपका डिजाइन हो सकता है, उसके सॉफ्टवेयर को भी तक भी आप कर सकते हैं। जीआई आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये भी आपका आईपी के अंदर आपका आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द पेटेंट एक्ट, पेटेंट सिस्टम कब हुआ, कैसे हुआ, जैसे-जैसे अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ होते हैं, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए यहाँ भी ऐसा होता रहता है। द सेकंड थिंग इज इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ माने पेटेंट आर रियली द टेरिटोरियल राइट्स, ये पूरे देश में, पूरे विश्व में एक पेटेंट हो जाए ऐसा नहीं होता। तो यूएस पेटेंट करना है या आपको इंडियन पेटेंट करना है या आपको ऑस्ट्रेलियन पेटेंट करना है, उसके लिए आपको देखना होगा। और हमारे इंडियन पेटेंट के लिए पूरा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, तो इंडियन पेटेंट एक्ट है, और साथ-साथ एक ipindia.gov.in, यहाँ जाके आप अपनी डिस्कवरी को, अपनी इन्वेंशन को, अपना जो भी नया काम आप कर सकते हैं। आगे चलिए। दिस इज ऑल अबाउट कॉपीराइट। कॉपीराइट इज रियली अ लीगल कंसेप्ट, और योर लीगल राइट टू ऑफ योर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, जो भी आपका है, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, और यहाँ ये भी ध्यान देने की बात होती है कि बार हम रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हैं, यहाँ पब्लिशर आपसे कॉपीराइट ले लेता है, बड़ा जल्दी वो कॉपीराइट का फॉर्म भेजता है, हम भेजते हैं, वहाँ वो वहाँ चला जाता है, ये भी आपको समझने की बात है। बट कॉपीराइट आपके अपने किसी भी वर्क आप कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक,
अगर आप खुद ही उसके पब्लिशर हैं। बट पब्लिशर कई बार क्या होता है कि उसको कॉपीराइट ले लेते हैं, जर्नल्स तो इन जनरल ले लेते हैं। दीज आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट। क्या-क्या आप कर सकते हैं? लिटरेरी वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, even your sound recording works, even your artistic work, even your musical work, even your cinematographic film, ये सारे के सारे all are the subject matter that comes under the copyright। ये सब हैं, एक यही नहीं है कि आप आर्टिस्टिक या कोई लिखने पढ़ने का ही काम कर रहे हैं। These all are really comes under the subject matter of copyright। अ, इसमें ये भी ध्यान देने की बात होती है कि अगर हम कोई रिव्यू लिखते हैं या थीसिस, वहाँ इसके लाइसेंस हैं कॉपीराइट के। देयर आर 6 लाइसेंस। एक पब्लिक डोमेन में रहता है, वो अलग है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अदरवाइज़ 6 लाइसेंस की भी आपको चिंता करनी है आईपीआर में, माने फेयर यूज़ ऑफ कंटेंट कैसे आप करेंगे, आपको वो भी ध्यान रखना है। ये वही 6 लाइसेंस मैंने यहाँ दिखाने की बात की है। जो बीच वाला है पब्लिक डोमेन, अगर इस तरह का सिंबल वहाँ पे है किसी भी फिगर के नीचे, किसी भी कंटेंट के नीचे, किसी भी डायग्राम के नीचे, तो यू नॉट नीड टू वरी, यू विल यूज़ दैट इन योर वर्क। बट इफ यू हैव सीसी बाय एसए, बाय एनसी, माने जो भी मैंने लिखे हैं, तब आपको देखना होगा, चेक करना होगा, सबके लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, तभी आप उसको यूज़, ऐसा भी आपको बताना है। दिस इज़ ऑल अबाउट कि कौन-सा लिस्ट फ्रीडम रखता है, कौन-सा मोस्ट फ्रीडम रखता है और कौन-सा आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ में यूज़ कर सकते हैं और कौन-सा आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए नॉट इन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में जिसको यूज़ नहीं कर सकते। कई बार आप कुछ भी करते हैं, कुछ कंटेंट्स बनाते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि क्या कंटेंट्स है, किस तरह का आपका कंटेंट्स है, उसको क्या लिमिटेशंस है, क्या लाइसेंस है। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स आप सभी जानते होंगे एंड दैट विल बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। उसके साथ-साथ सर्विस मार्क्स, कुछ एक एग्ज़ाम्पल में ट्रेडमार्क्स के लिए आगे चलिए। अ, यू ऑल नो दैट इतने फेमस हो चुके हैं, सबको पता है, लेकिन आप लोगों से पहचान लेते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इट मे बी योर डोमिनो, दैट मे बी एप्पल एंड इन एडिशन टू दैट यू मे हैव सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेडमार्क्स। किस-किस को आप कर सकते हैं? Trademarks including service marks also, and that may be trade names, that may be collective marks, that may be certification marks, that may be tagline, that may be slogan, and that may be say। अभी जब हम लोग मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग को रिसर्च साइटेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला। क्लैरिवेट एक संस्था है जिन्होंने ये दिया। वहाँ उनके बैनर पे एक लाइन लिखी थी, थिंक फॉरवर्ड, और उन्होंने उसको रजिस्टर्ड कराया हुआ था। वहाँ पे लिखा हुआ था ट्रेडमार्क एंड आर भी लिखा था। देन आई सिंपली थिंक कि क्या है थिंक फॉरवर्ड? आप भी सोचिएगा, अंग्रेजी में अगर ये कहें थिंक फॉरवर्ड, और हम लोग भारतीय होने के नाते रोज क्या कहते हैं? आगे की सोच। वही था, उन्होंने उसको अपना टैगलाइन या अपना स्लोगन मान के रजिस्टर्ड कराया हुआ है। हम लोग ध्यान ही नहीं देते। रोज हम यही ज्ञान बाँटते रहते हैं। कुछ भी हो जाए, अच्छा हो, बुरा हो, लास्ट में हम लोग का एक ही सेंटेंस रहता है। हमारी फिलॉसफी ये है कि ठीक है बेटा, ठीक है, जो हुआ ठीक है, अब आगे की सोचो। देन आई रियली थिंक व्हाट दैट? थिंक फॉरवर्ड, और उसी को उन्होंने अपना टैगलाइन बनाया। ऐसा भी आप सोच सकते हैं। आगे चलिए। दीज़ आर सम सर्विस मार्क्स एंड ट्रेड मार्क्स, आपने देखे भी होंगे। सब इससे अच्छी तरह अट्रैक्ट भी होते हैं। ये ग्रीन वाले से बच्चियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। मेरठ में खुल गया, पता भी है, भागते हैं वहीं पे। क्या है, क्या नहीं है, एयरपोर्ट पे भी देख रहता है। चलिए, ज़्यादा मुझे नहीं बताना। ट्रेड सीक्रेट्स, दैट मे बी एनी फार्मूला, दैट मे बी एनी प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं बिज़नेस में, उसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर आईपी। अ, एज़ आई टोल्ड यू, माने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स के लिए, जेनेटिक्स एंड प्लांट साइंटिस्ट्स के लिए आप पीबीआर एंड पीवीआर भी जा सकते हैं, कर सकते हैं। साथ-साथ ये फिजिक्स वालों का सब्जेक्ट, आईसी डिजाइन को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलिए। दिस इज़ वेरी रिसेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, माने जो आपको भौगोलिक स्थिति का ज्ञान कराएगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ का है, और आप अमेरिका में खड़े और बासमती राइस की डिमांड करें, तो समझ में आ जाता है कि इंडिया के चावल इनको चाहिए। ऐसा ज्ञान, ऐसे आपके प्रोडक्ट कम अंडर आईपी। और मैंने बाहर के बहुत लिखे हैं, उनको मैं नहीं बताना चाहता, आप पढ़ लेंगे। उसके साथ-साथ कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहीं के दिखाए आपको। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ये सारे के सारे जीआई टैग्स
नहीं देखते हैं और आप भली भांति इनको एक-एक को जानते होंगे। चाहे वो चाय है, चाहे वो मरकाना मार्बल है, जो ताजमहल में लगा है, चाहे वो रतनाम के सेब हैं एमपी के, वो सब आपके जीआई टैग्स हैं। यहाँ आप सोच सकते हैं कि आपके मेरठ में क्या जीआई हो सकता है। आप सजेस्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ऐसा आपको करना है। अभी रिसेंटली ये बीच में बनारसी पान रखा है। ये देखिए, बनारस में वो जीआई टैग नहीं उनको मिल पाया। हमारे यहाँ एक चीज़ रक्षा बता रहे हैं, वो अच्छा हो सकता है। साथ-साथ खाने के आइटम्स में हम लोग नान खताई पे जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अभी यहाँ देखिए बनारसी पान को भी जीआई टैग मिल गया। बनारस के पास लगभग शहर के पास लगभग 5 जीआई टैग है, जहाँ तक मैंने इसको देखा है। अभी उत्तरांचल में, उत्तराखंड में एक न्यूज़ थी, वहाँ भी 5 छह प्रोडक्ट को उन्होंने जीआई टैग कराया है। हमारे यहाँ भी प्रक्रिया कर रहे थे, बट आप भी अपना योगदान दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या जीआई टैग आपका यहाँ आपके शहर के नाम के साथ जुड़ सकता है, ऐसा भी आप बता सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वैलिडिटी एंड वैलिडिटी ऑफ आईपीआर, माने कब तक उसको वैलिड होना है। जैसे आपका राइट्स है तो कब तक उसको रहना है। पेटेंट 20 ईयर, 20 साल बाद आपका राइट खत्म हो जाता है। जो मोनोपोली आपकी है, मोनोपोली तो वहाँ पे लिखा था 20 साल बाद आपका अधिकार नहीं रहता है। डिजाइन 10 ईयर प्लस 5 ईयर, 10 साल प्लस 5 साल तक करा सकते हैं। ट्रेडमार्क के लिए कोई समय नहीं है, इंडेफिनिटली उसको आप, बट आपको रिन्यूअल कराना होता है एवरी 10 साल के बाद। और जीआई फिर यही है कि आपका अगर एक बार आपका हो गया, इंडेफिनिटली सब्जेक्ट टू रिन्यूअल, रिन्यूअल आप करते रहेंगे। कॉपीराइट, ये आपके काम की बातें देखिए, व्हिच आई रियली माने जो मुझे सबसे अच्छा लगा, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, कुछ आप इस तरह कर लेते हैं, पूरी जिंदगी तो आपकी प्लस 60 ईयर, आपके मरने के बाद भी 60 साल तक आपका अधिकार रहे, एकमात्र प्रॉपर्टी है कॉपीराइट। आप देख लीजिएगा, जिस प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, जिसके लिए हम दिन रात लगे रहते हैं, उसका क्या हाल होता है। ये कोई की बात नहीं है। जैसे आदमी जाता है, 2, 4, 5, 10 दिन बाद भी कई बार तो वही शुरू हो जाता है मामला कि ये किसका है, ये किसका है। और एकमात्र कॉपीराइट है, आपकी पूरा जीवन और लगभग एवरेज लाइफ भी आपकी 60 ईयर ही है, माने आपकी 2 जीवन का अधिकार है, ऐसा कॉपीराइट। हू कैन अप्लाई? इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है। और एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। एक एप्पल के लैपटॉप में देखिए एलईडी डिस्प्ले जो इसका आपका है, दैट्स पेटेंट अंडर आईपी, वो पेटेंट है। बॉडी ऑफ लैपटॉप उसका डिजाइन किस तरह का है, वो डिजाइन के अंदर आपका आईपी है। एप्पल साइन, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका ट्रेडमार्क है। उसके साथ-साथ यूजर मैनुअल, जो आप खरीदेंगे छोटी सी एक बुकलेट निकलेगी, उसके अंदर क्या लिखा है, उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, एप्पल वाला को कॉपीराइट है। इवन जो उसके अंदर लेआउट ऑफ आईसी, सेमीकंडक्टर जो आईसीज़ वहाँ पे लगी हुई, उनके लेआउट का भी उनके पास में, डिजाइन का भी उनके पास में आईपी है। माने एक प्रोडक्ट में किस तरह आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट आईपी हो सकते हैं, ऐसा मुझे आपको बताना था। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना और आईपी के एक्सपर्ट्स आपको और ज़्यादा ये बातें बताएँगे। कहीं लगा हो कि मैं आईपी के बारे में मैंने कुछ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया या कुछ इन्फॉर्मेशन सही से मैं नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा करेंगे क्योंकि ये सारा आईपी वालों का ही मामला है, विशेषज्ञता उनकी है। मैंने ओवरव्यू देने की आपको कोशिश की है, आपने मुझे ध्यान से सुना। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से आयोजकों ने मुझे काम के लिए रखा कि मैं विश्वविद्यालय के अचीवमेंट्स आपसे शेयर कर पाऊँ और आईपी पे बता पाऊँ। आयोजकों का भी बहुत-बहुत सभी का धन्यवाद। Thank you, sir, for very informative lecture. Now I think most of us are well versed with all the achievements of our university and also have a glance of IPR and its importance. Thank you. Now I request our chief guest, Professor Dr. Mr. Chandrasekhar Sharma Tanikela, scientist, TIFAC, New Delhi, to say a few words about this program. Thank you. गुड आफ्टरनून। मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि मैं अभी हिंदी में कुछ बोल पाऊँ।
Honorable Vice Chancellor Professor Sangeeta Shukla ji, Dr. Dinesh Kumar ji, Virendra Tiwari ji, and Veerpal Singh ji, and learned faculty on the dais and off the dais, scholars and researchers. Good afternoon. आप सबको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं, नेशनल साइंस डे की। एंड ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट आई विल ट्राई टू कनेक्ट कि मेरठ सिटी से टेक्नोलॉजी आईपीआर के लिए क्या रिलेशन हो सकता है, एंड एक आदमी या एक इंसान कैसे हम लोग अपने life को बदल सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी सोच रहे हैं कि विकसित भारत, बिकॉज़ वी आर ऑल नेशन। अब इंडिपेंडेंस लाने के लिए बहुत सारे लोग ने कोशिश की। इट ऑल स्टार्टेड विद द फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी एट मीरठ 1857 में। वो भी ऐसे शुरू हुई कि एक आदमी एक टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना चाहता था। मंगल पांडे, एज़ वी ऑल सी, वो एक कारतूस को व्हिच वाज़ मेड ऑफ वेजिटेरियन सोर्स, तो वो यूज़ नहीं करना चाहता था। ही रिवोल्टेड। तो एंड आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। सो एक आदमी का सोच, जैसे सर ने भी कहा है कि किसी ने टैग लिख दिया है कि थिंक फॉरवर्ड, बट लेकिन सोच, टू थिंक, वी ऑल व्हाट वी हैव, हम सब में है। वी ऑल कैन थिंक, एंड वी ऑल कैन थिंक फॉर अ बेटर लाइफ। संपदा किस लिए करते हैं? मतलब व्हाई डू वी एक्वायर प्रॉपर्टीज? टू लिव बेटर, टू मेक आवर लाइव्स बेटर। तो इसमें जैसे सर ने भी एप्पल की है, सबके पास होगा मोबाइल फ़ोन्स, तो इसमें बहुत सारे आईपीस हैं। इट ऑल एनहांसेस द लाइफ ऑल ऑफ अस। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके लाइफ बदल सकते हैं। तो एज़ वी गो ऑन, बिकॉज़ टाइम कम, विल डेल्व ऑन दैट इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। तो सोच एक जो है सब में है। वी ऑल हैव द power to think, and to think creatively, to use that thinking for the betterment of all of us. With all that, thank you. Thank you, sir, for your motivational words. Now I request Professor Sangeeta Shukla ma'am, Honorable Vice Chancellor CCS University, to give a presidential address. Thank you, sir. Good afternoon. Respected dais, respected Dr. Dinesh Kumar ji, Principal Scientist from New Delhi. Then we have our Chief Guest, Chandrasekhar ji, from Government of India, DST, Veerpal ji, Rahul ji, हमारे वीरेंद्र तिवारी जी, एंड हमारे गौरव जी, जिन्होंने आज बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट आप सभी के लिए रखा। यंग फ्रेंड्स, फैकल्टी फ्रॉम डिफरेंट, अभी आपने बहुत सारी बातें सुनी, कुछ समझ में आया? ये समझ में आया कि आपका विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अच्छा लगा आप लोगों को? मेरा सवाल ये है कि ये विश्वविद्यालय इतने अचीवमेंट्स कैसे कर रहा है? सिर्फ आप लोगों की वजह से कर रहा है? ऐसा लगता है आप लोगों को? See, for me, university grows. We have three pillars. First is students, second is teachers and employees, and the third most important pillar is research. Students अपनी पढ़ाई करते हैं, टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, और तीसरी बात जो क्रिएटिविटी की होती है वो होती है रिसर्च की। रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप सभी लोग आगे चल के रिसर्च करेंगे? करेंगे तभी तो आईपीआर सुनने बैठे हैं। कुछ अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सोचेंगे, यही आज की बात है ना? तो व्हाट इज आईपीआर? इट इज अ राइट given to you. For me, IPR is nothing. It is a right given to you for the power of thinking you have. आपके पास सोच है, बहुत अच्छी सोच है। आपको उस सोच को एकदम वाइल्डली सोचना है।
जितना सोच सकते हैं ना, अपनी जितनी उड़ाने भर सकते हैं भरिए। चाहे कितना भी गलत सोच रहे हो, आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उसको भी सोचिए। सोचने में तो कोई बुराई नहीं है, सोचने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना? आप जब सोचेंगे तो फिर आप सोचेंगे कि ये मैं क्यों सोच रहा हूं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ूं। फिर आप एक नॉलेज क्रिएटर बनेंगे, आप उसके बारे में पढ़ेंगे, और आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आपको समझ में आएगा कि जो मैं सोच रहा हूं इसको मैं कैसे पूरा कर सकता हूं। मैं बिल्कुल आपसे सिंपल वे में बात करूंगी। ऐसे ही होता है ना, हमको अगर कोई चीज समझ नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, अपना फोन उठाते हैं, जल्दी से गूगल खोलते हैं, उसमें पढ़ते हैं, अरे ये क्या है, इसका मतलब क्या है। आजकल बच्चे इतना ही करते हैं ना, टेक्स्ट बुक तो बहुत देर से खोलते हैं, और फिर रिसर्च पेपर तो खोलते ही नहीं है। उसका क्या करूं मैं? तो जब आप थोड़ा सा गूगल पे पढ़ते हैं, उसके बाद मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, टेक्स्ट बुक पर जाइए। आप सबके पास कम से कम 25-25 टेक्स्ट बुक्स के नाम ऐसे रटे होने चाहिए कि ये बुक इस एडिटर की है, इस किताब में इतने पेजेस हैं, ये तक आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप एक स्कॉलर में कन्वर्ट होंगे। अगर आप धीरे धीरे अपने आप को इस ओशन में ले जाते हैं कि यू नो गुड टेक्स्ट बुक्स, you know the names of the editors, and then finally you know the content of those books. जब आप वो धीरे धीरे थोड़ा पढ़ते हैं ना, तब आपको लगता है कि नहीं, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमको ये रिसर्च पेपर भी पढ़ना चाहिए। फिर अब जब रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो वो जो आपकी वाइल्ड थिंकिंग है, जो आप सोच रहे हैं, कुछ भी करने का सोच रहे हैं, तो आपको सेल्फ को डायरेक्शंस मिलने लगती हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अपने टीचर्स से भी आगे बढ़ के सोचें। आप अपने टीचर्स को इतना परेशान कर लें, सवाल पूछ पूछ के, पढ़ के, कि आपके टीचर को भी आपसे ज्यादा पढ़ना पड़े। हम तो ऐसे सोचते हैं। यू नो, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो हम लोगों में कंपटीशन होता था कि आज किस टीचर को परेशान करना है और कौन करेगा। तो हम लोग भी बदमाश बच्चों में आते थे तब, और उस वक्त तो बहुत कम बच्चे पढ़ा करते थे, और लड़कियां तो एमएससी में बहुत कम होती थी यूनिवर्सिटीज में। तो हम लोग डिसाइड करते थे कि आज कितने सवाल इन टीचर से पूछेंगे, और जब रिसर्च स्कॉलर पढ़ाने आते थे तो फिर तो पूछिए ही नहीं। हम लोग अपने टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च पेपर्स, क्वेश्चन लिख लिख के जाते थे। तो उससे क्या हुआ, हमने पढ़ने की आदत डाली, हमने पूछने की आदत डाली, और उसी से इन्वेंशन, क्रिएशन, पब्लिकेशंस, पेटेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें आगे बढ़ती हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि आप में जितना पोटेंशियल है, हम लोगों में अब नहीं बचा। आप लोग थिंकर्स हैं, आप लोग क्रिएटर्स हैं। अभी आपको बीरपाल जी ने इतना सारा बताया, सर ने इतना सारा बताया। ये जो पब्लिकेशंस इस यूनिवर्सिटी ने किए, कैसे किए? मेहनत करी, सोचा, और अब बच्चों ने काम किया, पब्लिकेशन हुआ। ट्रांसलेशनल रिसर्च, पब्लिकेशंस टू प्रोडक्ट्स, हमको जाना चाहिए। प्रोडक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन रिक्वायर्ड फॉर द नेशन। तभी तो हम विकसित भारत होंगे। और विकसित भारत के साथ साथ हमको क्या बनना है? विश्व गुरु। तो ये सब चीजें इन बातों से आती हैं, और ये सब चीजें आप कर सकते हैं। हम लोग तो अब द जनरेशन इज नाउ, वी आर, हमारी जनरेशन अब ओवर। हम लोग अपना आपको ट्रांसफर कर रहे हैं कि अब आपको इस देश की कमान संभालनी है, और ये टेक्नोलॉजी से ही आगे बढ़ेगी, आपकी नॉलेज से ही आगे बढ़ेगी, आपकी सोच से ही आगे बढ़ेगी। अभी आपने G20 देखा, इंडिया का कितना नाम हुआ। तो सिर्फ मुझे आपसे ये कहना है कि आपको गर्व होना चाहिए कि आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। उसके बाद आपको बहुत प्राउड फीलिंग होनी चाहिए कि आपने भारत में जन्म लिया, जहां आप जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, आप कर सकते हैं।
डेफिनेटली मुश्किलें हैं, मैं ये नहीं कहती सब कुछ बहुत आसान है। आपको नौकरी करनी है, आपको नौकरी ढूंढनी है, उसके बाद आपको अच्छा अपने आप को प्रूव करना है, जिसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। और कई बार मेहनत करने के बाद भी हम जितना सोचते हैं उतना नहीं पाते हैं। तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम उस जगह पे नहीं पहुंच रहे, मैं तो एक बात सोचती हूँ कि अगर मैंने सोचा मुझे ये बनना है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो व्हाट आई फील इज मैंने ब्लेसिंग्स कम ली हैं। हमें सबकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। जब आप सबकी ब्लेसिंग्स लेते हैं ना, सबसे पहले अपने एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स की, अपने घर वालों की, अपने पेरेंट्स की, एंड फाइनली अपने टीचर्स की। जब आप लोग अपने टीचर्स की ब्लेसिंग्स लेते हैं तो आप लोग बहुत ब्लेस्ड रहते हैं, एंड यू रिमेन हैप्पी, यू रिमेन पॉजिटिव, एंड यू डू वंडर्स इन योर लाइफ। ये मैं आपसे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हम जितना इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, हम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो आज की वर्कशॉप के लिए सबसे पहले तो मैं गौरव को बहुत सारी बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूंगी, जहां गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया। और ये स्टूडेंट्स आज यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? ये लेकर जाएंगे कि आप लोग, दीज आर ऑल एमएससी स्टूडेंट्स, नो, एमएससी पीएचडी। व्हाट आई वांट इज एमएससी का बच्चा भी एक रिसर्च पेपर अगर पब्लिश कर सकता हो तो फाइनल ईयर तक आते आते एक पब्लिकेशन करे, कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिश करने के लिए आपको एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट, एक अच्छी गाइडेंस की आवश्यकता है। फाइनल ईयर में बच्चे क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं लिख सकते? आपको ये सोचना है। सो बिफोर यू कम आउट ऑफ योर फाइनल ईयर रिजल्ट, यू शुड एटलीस्ट राइट वन पेपर। अगर आप एक आर्टिकल लिख सके, एक पेपर लिख सके, तो मैं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को बस थोड़ी सी एडवाइस ही देना चाहती हूँ कि ये सब चीजें आप में हैं, आप उनको कैसे आगे ले जा सकते हैं। अब आपके पास एक्सपर्ट्स हैं जिनको आपके को आईपीआर के बारे में बताना है, इसलिए मैं बहुत देर यहाँ ना रहते हुए, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई रियली होप यू विल डू गुड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you for your inspiring words, ma'am. Now it is time to felicitate our honorable dignitaries and guests by presenting them a memento as a mark of remembrance about the program. I request Professor Anil Malik, sir, Head, Department of Physics, to present a memento to Professor Sangeeta Shukla, ma'am, Honorable Vice Chancellor, CCS University. Thank you, sir. I request Professor Jiten Singh, sir, Head Department of Microbiology, to present a memento to Sri Chandrasekhar, sir, Chief Guest of the Day. Thank you, sir. I request Dr. Vinay Pawar, sir, from Department of Genetics and Plant Breeding, to present a memento to Professor Birpal Singh, sir. Thank you, sir. I request Dr. Pavitra Dev, sir, from Department of Horticulture, to present a memento to Dr. Dinesh Kumar, sir, our guest of honor. Thank you, sir.
I request Dr. Dushyant Chauhan sir, Assistant Professor Zoology, for to present a memento to Dr. Virendra Kumar Tiwari sir. Thank you all for doing the honors. Now I request Professor Rahul Kumar sir to extend vote of thanks. Thank you, Gyanika. Good afternoon to all of you. It is my great pleasure to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Sangeeta Shukla ma'am, who come here and present here from his busy times and grace the programs and blessed us in this program and present here throughout the program. Thank you very much, ma'am. I am thankful to Dr. Dhirendra Kumar Verma ji, the Registrar, CCS University, who are present here. I am thankful to Professor Birpal Singh, Director Research, who is present here. On behalf of the IP cells, I am also thankful to Dr. Chandrasekhar Sharma ji, Scientist Staff, DST, and I am thankful to Professor Dinesh Kumar ji, who is the Principal Scientist from ICR, and I am thankful to all of the head of the departments who is present here, Dr. Anil Kumar, Dr. Jitendra Kumar. My special thanks to the Dr. Pooja Tiwari ji, Dr. Pooja Yadav, Joint Director, CSTUP, who is also provide the logistics, who is provide the sponsorship to the programs in this workshop. Thank you very much, ma'am. I am also thankful that Dr. Virendra Tiwari, Shiksha Sanskriti Uttan Vyas. Thank you very much, sir. I am thankful to all who are present here, Dr. Neetu, Dr. Nitin, Dr. Vinay, Dr. Pradeep, Dr. Dinesh, Dr. Ashwini, Dr. Lakshman, Dr. Pavitra, Dr. Ashu, and Dr. Sangeeta. Thank you very much all. I am thankful to all the media person who are present here. I am thankful to all of the person who is involved in the organizing this program and make it success. I am thankful to all of the students present here and participants in this workshop. Thank you very much to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request everyone to please stand up at your respective places for a national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय जय. Thank you all. Students are requested to stay back. There is an arrangement of high tea, but let our dignitaries and guests take the refreshment first. You please stay back for 10 minutes. Thank you.
Shekhar Sharma sir is very senior. He is the topmost person of India in the area of IPR dissemination from TIFAC. So please we have some patience. Thank you, sir. This technical session is being chaired by Professor Anil Kumar Malik, sir. Professor Kumar Malik, sir, is head of the Department of Physics, CCS University. He has completed post-graduation in engineering physics from IIT Roorkee and PhD from IIT Delhi with exceptional scores. He is a recipient of various prestigious awards and fellowship like Raman Postdoctoral Fellowship, Dad Research Fellowship, Teachers Fellowship by University Grant Commission, Delhi, to complete his PhD at IIT Delhi. He is also NET JRF. He is GATE, and he has obtained fellowship through GATE to complete his degree at IIT Roorkee. He also holds the responsibility of Assistant Dean Student Welfare at CCS University Meerut. He has published more than 30 research review publications in high-impact journals. This session is being co-chaired by Professor Neetu Singh ma'am. She is presently working as head of the Department of Biotechnology at Mewar Institute of Management, Ghaziabad. She has over 17 years of teaching and research experience in advanced life science domains ranging from nanobiotechnology to green chemistry, phytochemistry, and agriculture and environmental biotechnology. She has over 100 publications in conferences, proceedings, and high-impact journals. Few noted research papers have been published in various research papers like Nature Portfolio, Springer Nature Elsewhere, and various others. She has published one patent as well. She has guided more than 100 master students in their researches, and she has been visited various international organizations to deliver different lectures. With this, I request the chairperson and co-chairperson to start the proceedings. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I request chairperson, sir, or co-chairperson, ma'am, to give a brief introduction about our keynote speaker of the day, Mr. Chand Shekhar, sir. Sir, you are cordially invited on the stage. Sorry. This session is being reported by Dr. Lakshman Nagar, Department of Microbiology, CCS University. You are also welcome on the stage. Good afternoon, ladies and gentlemen. It with great pleasure and enthusiasm that I welcome you all in this workshop on IPR and its pivotal role in technology transfer hosted here at CCS University Meerut. As co-convener of this event, I welcome
and give a brief introduction to our chief guest, Chandrasekhar Sharma Tankila ji. Mr. Tanikela Chandrasekhar is Scientist F in charge Horizon Scanning Unit, Foresight and Vision Division, Technology Information, Forecasting and Assessment Council, IFAC, New Delhi. He completed Bachelor of Engineering from Shivaji University, Kolhapur in 1991 and post-graduation biotechnology from JNTU, Hyderabad in 1994. He has more than 27 years of professional expertise in the areas of food processing, biotechnology and bioprocessing, industrial and environmental biotechnologies with specialization in IPR management, technology, intelligence, forecasting assessment and management, strategic planning and management, program development and project management. He joined TIFEC in August 1995 and under the guidance and in close interaction with Dr. APJ Abdul Kalam, the then chairman TIFEC, he coordinates nation's first long-term national technology forecasting exercise technology vision for India up to 2020. And follow-up action, currently he is coordinating technology vision 2047 for the nation along with defense and space sector. During 2011 to 2014, he headed Patent Facilitating Center, which supports protecting patents and intellectual property rights, emanating from Indian Academic and National R&D Institute, free of cost and trains women scientists in IPR-related areas. During his tenure, he initiated many new activities and programs to take PFC to the next level. He coordinated key projects on preparation of national mission on one interphysical cybersecurity and two quantum technologies and applications. Currently coordinates horizon scanning unit activities, impact assessment study of typhoid report, special reports on chemicals and petrochemicals. He's advisor of Innovation Council and mentor for many innovation startups. So I would like to invite our chief guest for keynote lecture. Please. गुड आफ्टरनून। मेरी जो प्रेजेंटेशन है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में होगी, माफ़ कर देना मेरी हिंदी अगर अच्छी नहीं है। बेसिकली मेरी जो होगी इट्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीआर एंड इट्स रोल इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की सब्जेक्ट सबसे पहले हो जाना थोड़ी सी मुश्किल है, बट लेकिन आई सी दैट इट्स अ स्मूथ ट्रांजिशन, क्योंकि आईपीआर के बारे में बताना पड़ेगा तो देयर विल बी सम ओवरलैप। आपने कुछ स्लाइड देखी होंगी प्रोफेसर वीरपाल सिंह जी के, तो आई थिंक रिपीटिशन इज गुड टू मेमोराइज एंड थिंग्स। नेक्स्ट वन प्लीज। आई वेलकम यू ऑल फॉर अ जर्नी ऑफ आईपीआर एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से बात कर रहे थे कि एक छोटी सी सोच कैसे टेक्नोलॉजी एरिया को ही बदल सकती है। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ एम्यूनिशन कि बुलेट्स कैसे चेंज हो गई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लाइक दैट टेक्नोलॉजी के लिए यू नीड प्रोटेक्शन। जैसे सर ने भी कहा कि पेटेंट इट डजंट यू टू इट अलाउज यू टू डू योर ओन जो प्रोटेक्टेड आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया है आपको वेंचर करने के लिए, बट बेसिकली राइट किस पे मिलती है कि दूसरे आपकी कॉपी ना करें। तो आर एक्सक्लूडेड टू कॉपी योर आइडिया, वो राइट। लेकिन आपकी आइडिया को परस्यू करके उसको एक प्रोडक्ट में लाने के लिए देयर इज ए एंटायर प्रोसेस। आपने एक रिसर्च की, एक कुछ खोज किया है, फिर उसके बाद हाउ टू ट्रांसफॉर्म पेपर, जो रिसर्च पेपर पेटेंट फाइल आपके जो फाइंडिंग्स हैं रिसर्च के,
वो प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। नो मैं सुबह जैसे बात कर रहे थे कि कोई प्रोडक्ट कुछ हो गए, कोको कोला या फोन, लाइट या फैन, ये सब स्टार्ट हुए थे विद ब्रेन, विद बौद्धिक संपदा में, बट लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करके प्रोडक्ट में रियलाइज करने के लिए देयर इज अ ह्यूज प्रोसेस अंडरगोस। So again, concept of property I will because types of property हमने देखा है, मतलब movable, immovable, intellectual property. Uh, yeah, the range of innovations can be very small. Large technology भी हम लोग कहते हैं वहाँ से लेकर के स्पेस रॉकेट टेक्नोलॉजी हैं अभी जो ग्रीन फ्यूजन या हाइड्रोजन इकोनॉमी की जो बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइजर सोचने के लिए तो बहुत सिंपल है, बट लेकिन टू रियलाइज हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम टैप वाटर और मे बी वाटर, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, इवन कहीं नासा लेवल टेक्नोलॉजीज भी हमें यूज करनी पड़ती हैं। सो बट लेट्स नॉट वरी अबाउट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ टेक्नोलॉजीज क्या होगी, इट ऑल स्टार्ट्स विद अ सिंपल आइडिया, सिंपल सॉल्यूशन। धीरे-धीरे बाद में रिक्वायरमेंट बढ़ती है, स्पेसिफिकेशंस बढ़ती जाती हैं, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो दैट्स हाउ लाइफ इज़ आल्सो। हम बचपन में हम लोग जाते थे, पढ़ के आ जाते थे, अभी पीएचडी कर रहे हैं, अभी नौकरी ढूँढनी पड़ेगी, फिर उसके बाद नहीं पड़ेगी। सो इट्स and it also depends on other culture. I'm really happy that CCS has made in progress number one university. I'm really happy. There is a culture which is built in university campus, and वो एक टीम बिल्डिंग होने के बाद एज ए इंडिविजुअल इनोवेटर, इंडिविजुअल रिसर्चर काम करने के बाद यू इंटरेक्ट विद फैकल्टी, इंटरेक्ट विद यू हैव इंटरेक्ट विद पीपल आउटसाइड द कस्टमर कौन है, आपका प्रोडक्ट क्या है, एंड देन हु आर द कंपनीज हू विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप टेक्नोलॉजी टू मेक दिस प्रोडक्ट। तो इसके लिए काफ़ी नेटवर्किंग और बिजनेस डेवलपमेंट ये सब करनी पड़ेगी, and then it has to be very strategic. National economy के लिए individually your product would be a kind of unique product where others will be sorting to take this product. कि आपके product को लेके distribute, तो उसके लिए आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी। So these are all capabilities of why you should protect this. So broadly जानते ही होंगे कि आपने पहले भी कुछ IPR वर्कशॉप अटेंड की होगी। So there are 7 intellectual property rights in plus 18 जो साइंटिफिक रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। कॉपीराइट, क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मेंस, डांस, लिटरेचर, कंप्यूटर कोड्स कॉपीराइट्स में आते हैं। ट्रेडमार्क, देखा था कि इमेज, तो दे ऑल कम अंडर ट्रेडमार्क्स। इंडस्ट्रियल डिजाइन में आपको आता है, मतलब उसको भी देखा था कि प्रोडक्ट्स बेसिकली फंक्शनल एंड फील ऑफ द प्रोडक्ट, मैकेनिकल ज़्यादा होता है उसमें इंडस्ट्रियल डिजाइंस में। And geographical indications are like particular place. Banaras study is like has come from Banaras. And Bhujia, no, because it all started from Bikaner place. Bikaneri Bhujia is famous. So that's like geographical indications. It is a particular place. Alfonso mango, Goa में जो mango है, Alfonso mango is world popular, like that. And integrated design circuits, electronics और semiconductors के लिए this will play a new role. Semiconductor industry में लाने हो रही है। We lag behind some time period on this, but big companies, they are coming up to make their manufacturing units. But उसकी प्रोटेक्शन इंडिया में होना उन कंपनीज के लिए एडवांटेज होगा, क्योंकि दे विल बी फ्रीली कम टू इंडिया, कि वो हमें इंडियन गवर्नमेंट जो आईसी लॉ है
एक्ट है प्रोटेक्ट करेगी. विद दैट कॉन्फिडेंस दे आर कमिंग इन. So, protecting undisclosed information is trade secret. It remains trade secret. So, as long as it remains trade secret, is there. Otherwise, once it comes into a public, it doesn't have any value to it. And the last one is the new plant varieties and breeders varieties farmers के लिए. When the genetic engineering was coming, like so then people were made aware. You don't have to worry about such things because you have, as a breeder, you have your own rights to keep your seeds for your next sowing season. And if you have developed as a farmer, if they have developed their variety, they can have their rights so that they can distribute among them or to mutual venture. So इसके लिए rights बनाए गए थे. These rights were enacted into act so that you are. So what is patent? I will not delve much into it next because copyrights, because literary, dramatic, basically, क्योंकि technology transfer नहीं, yeah, next, yeah, correct. So most of the technology transfer जो आगे बात करेंगे हम, it all mostly depends on how strong are you able to prove कि टेक्नोलॉजी मेरी है, दैट राइट. कि प्रॉपर्टी के लिए हम लोग प्रॉपर्टी पेपर्स दिखा देते हैं, तो गाड़ी के लिए आरसी या उसका दिखा देते हैं. सो लाइक दैट यू नीड टू हैव दैट दिस इंटेलेक्चुअल आइडिया ऑफ माइंड is mine and it is protected by a document which is called a patent document, granted patent. So this holds value. उसमें claims होती हैं. What do you claim in your patent? तो उसके basis पे negotiations होती हैं. Technology transfer, documentation, business development. How do you market your idea? How do you convince the company that this is what is my patent? So this is all is protected. तो वो claims में काफी होते हैं, which are all disclosed in the patent document. Next one, please. Copyright. Copyright, as I said, dwells upon creative literary work and software, engineering drawings, plant layouts, artistic work, cinematographic films, sound tracks, video films. No, last time जब मैं आया था, I think I talked about the Three Idiots incident. The film was released and Chetan Bhagat was also there with his parents. When they all saw credits were going on, Chetan Bhagat's mother said, "Beta, तुम्हारा नाम कहाँ पे है? The story was yours, but you didn't get a credit." So then he had to fight with Amir Khan and got that acknowledgement. Story writer, as a script writer of the basic concept of the film. So you have the right to be credited for. So ये सब protect होती है copyrights में. Yeah. So trademarks are distinctive design, signs, images with words, colors, combination of colors. It can be alphabets, words, images, symbols. They all form part of trademarks. Next. I am not showing the images because I leave it to your imagination. सुबह भी मैं बोल रहा था कि the unique capability of human beings, apart from all other animals, is the ability to think. हम सोच पाते हैं, and we are able to process and analyze that thinking data. That's what makes us very unique, and we all should leverage from that capability to create something of our own, and then get protected for that, and try to get an economic value out of it. So that's what will technology transfer वो सब हम लोग उसमें we make it valuable. Industrial design is for features of shape, press, iron press, the tea, coffee making machine,
लुक एंड फील्स जो हैं वो डिजाइन्स में आती हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, 2 dimensional or 3 dimensional code forms. So these are all ways of protecting your idea to market later and convince a company to make the product. Geographical indications, yeah, is based on a territory, on a physical territory, and it is protected by a group of people or maybe an institute which is represented for the group of people, and then it is applied for, and it can be a product uh, of economic value. Next one. Yeah, next. So some examples you already had in the morning, Kanjivaram sari, because Kanjivaram gold zari jo hai, that was, some saris were being made in Surat and being sold as Kanjivaram saris. So people objected, our reputation is going down. Kanjivaram saris and silks saris have started. And Darjeeling tea, it also, it's already a commercial product. No one contests for it, but it gives a premium value uh, domestically. Even when you export Darjeeling tea, Assam tea, they have a unique flavor. So they are identified by their locality. A tree which is particularly grown in a particular area gives a different fragrance, different flavor. Kulu shawl, Kangra tea, Moga silk. These are all geographical particular locality. Yeah, protecting IC circuits, layouts, semiconductors. So these are all PCBs which are laid, and it basically gives all the acts give the creator a value to the product that is being sought for a protection. So ICE का आपके पास design है, it is unique because Apple is more fast. Apple phones are more faster and processing because their ICs are laid in such a way that processing time is very less. So it has to be original, novel, and distinctive. Yeah, next one. I will be mostly focusing on technology transfer, but I'm taking you through this initial phase of the kinds of IPR. Yeah, undisclosed information, Coca-Cola's formula, things like that, are very secretive, and it remains secret as long as it is closed. And people may say, कि, okay, if this is the formula, you might have heard कि Coca-Cola की formula मिल गई है, but the company says no, 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 that's not the formula. So it remains a secret. Yeah. So it can be a formula, pattern, compilation, code. Unless it is printed and taken as a copyright, it can still remain a code. Chat GPT का जो AI का जो coding है, it's all open. But still, there is something which people compete in. So that's kind of a thing which can also be a kind of undisclosed information. People may change. They may change the code itself कि वो daily अपने आप को ही change करता रहे. So that code itself, how to change itself by day and day, is a secret. So it remains basically in companies, some traditional companies, maybe there is a process which is at the last stage, Irani chai. Uh, there is something which, some magic ingredient is there. We don't know what it is. So it can be a lot of things. Yeah, you can skip next. Yeah, you can go next. Next. Yeah. So these are all different data sets where they can be classified as trade secrets or undisclosed. Next. So coming to the farmers, right? Again, it's a brief, again, kind of touch up. Just to brief up ourselves, what is it? It's vegetable varieties, food varieties, maybe uh, survey delve upon much on these plant varieties and genetic materials. So
This is another protection that a farmer also gets. Breeders and farmers get next. Yeah, universities, agriculture universities, they can take for this particular IP also. Yeah, to have you can produce, sell, market your variety and export. That's the right that is given. So there is a particular period of time for every IP you get protected for as long as except for the copyright as for the lifetime of the author and beyond 60 years. For this we get 15 to 18 years. So now we come upon once we know these are the kinds of intellectual property rights that I can avail of. Whatever you think about is a very creative idea. It may fit in one of these categories: patent, copyright, uh, design. So, okay, you have created IP. We have thought, worked, we have done research, and we have filed a patent or taken a copyright registration, and you have in your hand that your idea is protected. Okay. Now, is it okay कि we keep our 100 rupees in the locker and say कि, okay, I'm safe, my 100 rupees is safe, or you create something, make value out of it. So, like that, you have created a IP, your creative idea is protected. How do you get monetary value out of it? One way is कि you do societal work, do charity. I don't want anything, let it be public. So I don't want any monetary benefit out of it. Let everybody benefit out of it. Or you take the monetary benefit out of it and still do your charity. So there are business reasons. Why do we protect? Why should we protect IP? If you don't, like for example, two people are simultaneously thinking something. It's a classic example of telephone. No, telephone. Who invented telephone? Graham Bell. But there was a person called Elisha Gray, in whose lab Alexander Graham Bell was working. It was the person Elisha Gray who had conceptualized the idea of telephone, but he didn't go to the patent office. Alexander Graham Bell went to the patent office. So you all know Alexander Graham Bell. Who was the first person to land on moon? Who took his photograph? So that's the kind of gap. Unless you protect, it doesn't make any. You're not identified. You're not valued for. Okay. So it makes you more visible. Okay. So it makes technology transfer process easy because people confide on you. Yes, he's the person. He's the owner of that IP. So I can talk to him. I can take this technology. He the person who can tell me what to do, how to do to make it into a product. It was not Steve Jobs who made the iPods or iPhone. It's an entire team. So they are all protected. So the inventors are also stakeholders in Apple. So it also attracts collaboration. Samsung gets a lot of collaborations because it has created a competing IP with Apple, and many people now go to Samsung. Samsung has more products, but Apple products are more stable. They're faster. People still pay more money to buy an Apple than a Samsung. So funding agencies, if you are a startup, if you have an idea, you have lots of schemes in nation, the country itself. Then you can prove your concept into a prototype, and a prototype into a workable, replicable product. And then once you have confidence in replicable product, there are schemes which can support for marketing. And then if you are able to market, then people will come and buy you out. There are strategic reasons to protect in India. The defense and atomic energy technologies are not patented.
because they have to be kept a secret for safety of our country. But apart from that, there are technologies like missile technologies, ammunitions, they are transferable. So in order to create new area of domain, when genetic engineering, genetic crops, it has created a new revolution. You have started work on that, molecular biology, biochemistry, and genetics, plant breeding. So they all amalgamated into a new product called genetic crop, BT cotton, high yielding, drought resistant products. So it opens up new area of domain to further work. Biotechnology is a combination of all the things. So, but biotechnology is as a sector itself is very prominent, and it creates image building. Apple, Steve Jobs, uh, Bansal of Flipkart, those uh, founders. So it gives a value when your idea is brought into a product. You know, how many of you can imagine Chetan Bhagat as an image? Or how many of you remember? How many of you remember Steve Jobs? An image comes to you, turtleneck, and things like that. So that's that. Like in the morning, ma'am said there were some names and some photographs of the CCSU alumni. So it brings you into that platform. You are put up on the launch pad where you are very unique, you are recognized. Next. So the purpose is we know the reason why we want to protect. So now with that you get licensing, you can license with technology. Tell people, more people to take the license, franchisee. So they can give you an assignment or a kind of fellowship, or they want to partner with you. You can be made into a startup. All these openings come up to you when you can prove that you have a IP which is protected. So later on, it goes on to you can be taken over. Flipkart, before Flipkart, it was a small group. It was taken over by Tata's. Like that, people will come and take you out. You are bought out. Wherein some people don't mind being bought out because they get more money for that venture, and they still work on doing something better, which will be a voluminous amount. And it enhances your market value, through which you can raise funds. Next, the production of IP protects you with differentiatable products, and wherein regular stream of profits comes in, and you as a researcher or an innovator, you have your own. What was the first email? What was the first email you remember? Before Gmail, there was some more. Huh? Hotmail. Who created Hotmail? Sabir Bhatia. So he was bought out by MSN. Hotmail was bought out by MSN, and he is a venture capital for more than 100 companies in Silicon Valley because he got that money from selling Hotmail to MSN. So you are your life extends. You can create, you can do more. You're not limited with Hotmail. Now he's a boss of 100 companies. Various diversified products, healthcare, defense, energy. Uh, Even some there is an NGO in India also working on agriculture and farmers' livelihoods. You can do a lot more, and it gives an international recognition, global presence. Next, please. So this is I'm telling the context why we should create or protect IP and how does it improve. We'll get more complex when we go into the process of technology. What are the models and things like that. Uh, so it gives a linkage between you as an innovator, and to create a product, there has to be a company which makes it.
So that gap has to be built, and that can be built with confidence with the protected IP. So it can process into a better transfer, and it can lead to research support. You can get more research grants on that. It gives you a competitive edge over others. Yes. So now we are getting into technology transfer and its model. It's a process which is mainly concerned with the transfer of technology from research areas to the production and quality assurance environment. Apple product is US Army ready. US Army standards are very stringent. So it complies with the product requirements. So a quality assurance is also there. When you buy a phone these days, you see what is the emission radius, which or something like that is mentioned on the product also. Which radiation, how fast it gets heated up. It cause some disturbances. So those quality assurances also have to be followed. Even when you buy Maggi, there is FSSAI certification. There is a standard which says it doesn't affect human health. So there has to be, when a product is being launched into market, as long as it is in a lab and on paper as a research, it doesn't affect anybody. Once it goes into a market as a product, every public is uh, health is concerned. Safety, their safety is a concern. So there has to be a safety requirements, and our product has to meet the requirements. So then only a product can come. No, so it's an investment decision, and investors are guided for the economic value out of it, and how much money they can pay. Technology transfer valuation is a different entire area where we will not go into. And with this technology, which is protected IP, that even if the technology is transferred, that company who takes this IP or gives a royalty or loyalty or a fee basis or lump sum basis if they buy your technology, they are prevented from competition because you license your IP to a company which is exclusive, or it can be to many companies which is non-exclusive. So all of those companies work in different geographical domains, and they get protection from the competitor from the other geographical domains. It's a process for conceiving and implementing a new idea, application into an existing technology, for an existing technology into a product. There are some definitions of technology. So, WIPO says that transfer of technologies from universities and research institutes to parties which are capable of commercialization. And the technology transfer is a process of sharing of skills, knowledge, technologies, methods of manufacturing, samples of manufacturing, and facilities. Definition. It's a process of conceiving and implementing a new novel application for an existing technology, as we said. So it goes through a entire process of idea to R&D to technology to validation, and then next is. So this technology, you have a technology, you have an idea, you have protected, you want to transfer. What is the way? Maybe this is too early for you to understand this, but I've been given this, so let's understand. Maybe you will also go through the other processes. There has to be a disclosure, which comes as kind of patenting document. You disclose something. Whatever you disclose in your patent document is only protected. Even if there is something which you have created or identified or invented, if you don't disclose, it is not protected. If someone discloses that what you have already did and discloses in his patent document, he will get the protection, but not you. You have to disclose all your invention in detail. And then the patent document will let you commercialize that. So there has to be an agreement between the parties.
as an inventor, and the funding institute which has funded your research. It can be a university or it can be funding scheme of government. You all have to go through a kind of agreement, MOU or agreement. And then with that, once you have identified your potential manufacturer or the person the company which will make the product, you license. You allow them to use your invention. That's license. It can be exclusive. But they only will make, no one else will make, or many people can make, which is non-exclusive, as I said earlier. So it has various stages, typical behaviors, and it can be understood at different levels in technology, policy, individual science. They all play a different role in the entire technology process. There is an inventor, and there is a group of inventors, and there is a institute, and there is a ecosystem beyond institute. It can be a college, it can be a department, and there is an university. At which stage the research is progressing. So they are all funding you. So they all also become stakeholders in your invention in a way. You remain the inventor, but you have to give credit to the institute also because you have used their facilities, which is in kind maybe, but without that facilities, your invention could not have happened. So you give a stake to the resources which you have used. And then they all become stakeholders. They all become stakeholders. And once you patent document also is a kind of process where you communicate. You can communicate. It's published, and you write articles and you market. There are ways how you market your idea. Next. So, where is the catalytic? What is the catalytic process? Where is the catalyst? The academic system, university system is the catalyst for the entire research process to start, to ignite. It's the institute where idea comes, breeds in the initial stages of creation. So they play a very important role. So my topic also would little go into the kind of roles of university and academia in the way of protecting the technology transfer. What steps they should ensure that the technology transfer happens smoothly. So the university system also encourages the entrepreneurial startups. A ecosystem is put in place where innovator can become can create a company or maybe a small startup inside the academic institute with the multi-departmental approach. They can create a product, try to create a product to a prototype. So it goes through different stages. We are running short. Uh, we'll skip this text part. Okay. So we once you go through that, we need to assess the technology assessment readiness levels are there. So TRL levels are there for various domains. Now TRL 1 is basic idea, and TRL 9 is technology which can be immediately transferable into a product. So yeah, so I have a limitation of time. Let's quickly go. And the role of IPR is that it's critical for investors because they put a lot of money. It guarantees that there is no misappropriation, and it's easy. It makes easy to transfer the technology, and there are various factors which the company which is taking your IP is able to afford. We'll not go into this. What is technology transfer? Go. Again, we'll not go what is technology. Yeah. So it emphasizes that the licensing that IP is a major vehicle for technology transfer. So our IP document is the one which is our starting point to do the technology transfer. It's our legitimate. It gives a legitimate value that we can make the product with with the help of a company. You can also start your own company and manufacture your own product. Yeah. Next.
So it can be a technology push, or it can be a market pull, and we have to prepare the ground, and all these steps are there. So there are different roles played in technology transfer. You know, there is an idea, there is a research, there development, and wherein the research universities and research institutes play a role. And at the startup levels, also research and product development are supported, and then it goes into production scale and it is marketed and made into product. So these are different types of technology. And these are technology readiness levels. You know, there are TRLs at different stage. So the commercial operations is on the top right, which is called TRL 9. So you have to migrate from your red bullet at the bottom, which is a starting with an idea, to the commercial product. So this is how the process goes up. We have to move, and as we move up, complexity of technology also increases. Next. So these are the constituents. We will need to, there's a technology transfer, then there is promotion. The company will do it. Technology development, the company will do it along with your innovator. And there is a continuous innovation and R&D which is going on. You know, Apple still does R&D. And technology assessment, specifications, requirements, safety standards, all have to met. Next. Next. Yeah, university holds a key role in teaching, creating new innovators, new inventors. This is the budding place where it is nurtured, creativity is nurtured in universities, and this is the starting point. Within from you can use the resources and transform your creative ideas into a product. First, you protect your IP, and then the technology transfer. Start next. Next. So it's a innovation is demand driven. You know, if someone doesn't use your idea, it remains in the patent, and if no one is interested, it doesn't come into a reality product. Next. So the culture of science is nurtured again in universities. You know, it bridges the gap, and R&D communication has to happen. And next, maybe I will get little more time. We can skip these statistics and data. Yeah, I'll just go to the, yeah, we will go to the last few slides. Go on. These are the stakeholders, and this is how it influences. These slides will be made available to the organizers, wherein it can be distributed. Next, we'll go to the images. Yeah, because there's not much time to discuss. Yeah, go further. The different methods, how, go back one slide. Yeah. So how do we transfer, how do we inculcate the system of technology transfer is we can train students, the publication of research results and exchange research materials. They go to various conferences, workshops, do a collaborative research to a consortia, and then faculty does a consortia project, and then with the IP they can go to licensing, and they can start their startups and venture with startups. Next. And this is the entire process of technology transfer, how it happens to from the ideation to the product realization, commercialization. And this is again TRL made into kind of how different schemes are there. Between TRL 1 to TRL 4, there are some schemes, and then again TRL 6 to TRL 9, there are technology development board and things like that. But there is a gap between TRL 4 to 3 to 4 and 5 to 6, so which is called the valley of death. That's where most of the technologies stop, and they don't get a partner, and it stops. It wanes away. Next. Some models are there. It can be an in-house technology transfer. It can be collaborative. You can license it, you know, or you can out-license the technologies. This is NRDC model, how they do technology transfer. You know, technology evaluation is done, and they identify the IPR, whether it is protected or not, and then they scout for the companies which are interested, whether it can be small, medium, large companies with the CSIR
alumni or in their association, then they try to transfer these technologies to companies. Next. And this is how the CSA technologies are transferred. Next. And I will not tell much because learned expert is there from ICR. He will talk about how technology transfer happens in ICR institutes. And some best practices for small and medium companies, how do we do it? Regular international institutionalization contacts, scientific clubs. You can promote scientific clubs and internships, joint projects, industrial partners. Your alumni can, who are in industries, they can come and support you. And university professors goes to industry and then come back. So, successfully conducting a technology transfer requires champions at each step of the process, and it is nurtured by training and experience. Next, there are some places where you get more information on technology transfer documents and agreements and licenses, and I think this is the last slide. Thank you. It's a Thank you, Doctor. Now, house is open for question. We can take one or two small questions. If someone of you have curiosity to ask something, we can take one or two questions. So I think you are hungry. it's a tough subject to introduce in the initial stages itself. So technology transfer process in the beginning itself. So thank you very much, sir. डॉक्टर चंद्रशेखर, मेरी अभी बात हो रही थी सर से, जितना यहाँ बता करके गए इससे बहुत ज्यादा है कि टाइफेक में है, और टाइफेक आज की डेट में मिनिस्ट्री के साथ हैंड टू हैंड काम कर रहे हैं। जैसा अभी सर ने बताया कि आपका अभी जो गवर्नमेंट का बहुत एम्बिशियस मिशन है, उसका जो विजन डॉक्यूमेंट है क्वांटम टेक्नोलॉजी का, वो सर उसमें इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इतना आपने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए आईपीआर पे। आईपीआर क्या है, कौन कौन से सेगमेंट आईपीआर के हैं, जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, तीनों को आपने बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान एग्जांपल्स के साथ मैं देख पा रहा था कि सामने बच्चे भी उसमें सीधा इंटरेक्ट कर रहे थे। ऐसे एग्जांपल्स थे जो आंसर दे पा रहे थे बच्चे। तो यही एक स्पीकर की आर्ट भी होती है कि आप सीधा कनेक्ट कर पाओ ऑडियंस के साथ में। तो ब्यूटीफुली आपने उन्हें एक्सप्लेन किया। उससे आगे बढ़ करके अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का कॉपीराइट है तो कैसे उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हैं, उस पर भी आपने बताया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे हो सकती है। टेक्नोलॉजी को आप कैसे अपने आप अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं, आप अगर यूज करने की स्थिति में नहीं है तो कैसे आप दूसरे के साथ शेयर करके ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरी जितनी समझ में आया है और जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं 2018 में यहाँ ज्वाइन किया था इस यूनिवर्सिटी में, एंड आई वाज आल्सो रशिंग टू फाइल a patent, and at that time I was not able to find out whether there is some expert who can help me to write a patent, how to write a patent. घूम फिर करके 4-5-6 अमेरिकन पेटेंट स्टाइल पढ़े, अपने इंडियन पेटेंट स्टाइल पढ़े और पेटेंट फाइल कर दिया। दैट वाज आई थिंक अराउंड 2020 आई फाइल फर्स्ट पेटेंट, और फॉर्चुनेटली फर्स्ट एग्जामिनर रिपोर्ट में ये लिख करके भी आया कि बोले आपकी कनेक्टिविटी बहुत प्रॉपर नहीं है, आप क्या करना चाह रहे हो, क्या है। हमने उसका आंसर दिया सारा, तो सर 2021 में वो पेटेंट ग्रांट भी हुआ। मुझे लगा 2021 या 22 में पेटेंट ग्रांट हुआ। पेटेंट थोड़ा सा टेक्निकल है। हम लोगों ने कोशिश की थी एक मेथड डेवलप करने की कि फोटोन को कैसे हम ट्रैप करें, लाइट को कैसे ट्रैप करें, जब मर्जी करें ट्रैप करें, जब मर्जी करें छोड़ दें। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लाइट स्लोइंग का। इसकी लाइट की स्पीड को हम कैसे स्लो कर सकते हैं मटेरियल इंटरेक्शन के लिए। तो उस तरह की डिवाइस हमने मल्टीपर्पज वो मेथड हमने किया था, उस पर पेटेंट हुआ था। कई जगह से कमर्शियली भी लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जो साइंटिफिक कंपनीज हैं, उसके लिए कई जगह से हमारे पास कॉन्टैक्ट है। बट मुझे ये समझ आता है पेटेंट आपकी इंटेलेक्चुअल, जैसा सुबह बिरपाल जी ने भी बताया था कि जो इंटेंजिबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके लिए एक लॉक प्रोवाइड करता है, ताला देता है जिससे कोई चोरी ना करे। गारंटी नहीं देता कि चोरी नहीं होगी, लेकिन एक लेवल की सेफ्टी आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसे आप लेवल तक प्रोटेक्ट कर सकते हो। ताला दरवाजे पे लगा है, खिड़की से कोई कूद के निकाल के जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। यहाँ भी ऐसा होता है, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि हम ताला लगाए ही ना। उससे भी ऊपर का मुझे लगता है कि ताला लगाने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है नहीं तो ताला किसका, उसके लिए आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए
क्योंकि क्यूरोसिटी की मदर होती है इन्वेंशन, इनोवेशन और किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए। हम लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, यूनिवर्सिटी भी आज की डेट में बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे, नेशनली और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन में बहुत सारे रिसर्च में भी सुबह बताया गया यूनिवर्सिटी क्लास, आप लोग उसमें बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अभी यही सोचना है कि बहुत सारा सेगमेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, मोर देन 400 नंबर है, ऐसा गवर्नमेंट स्टेट में जिससे हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इस मैन पावर को हम जो इंटेलेक्चुअल हमारे पास इंटेलेक्ट है उसे हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अच्छा होता है यहाँ भी, जैसे मैंने क्वेश्चन के लिए ओपन किया, बहुत सारे हाथ उठते हैं और ये जानने की जिज्ञासा होती है कि नहीं नहीं सर ये ऐसे कैसे होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होगा, पेटेंट हम करें तो क्या करें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे जैसे क्योंकि गौरव जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। मुझे भी पता है हमारे पास ट्रेंड लॉयर भी है, यूनिवर्सिटी के पास एक बहुत अच्छी फंक्शनल आईपी सेल है। उससे 5 साल पहले हम उतना उस डायरेक्शन सोच रहे थे और अभी मुझे लग रहा है एवरी ईयर वी आर फाइलिंग 10 to 15 पेटेंट्स, मोर देन दैट इवन। तो दैट इज रियली अ वंडरफुल थिंग कि हम अगर इतना इस लेवल का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ हम सोच रहे हैं, हो सकता है क्वालिटी बहुत अच्छी ना लगे लोगों को, हो सकता है सभी कमर्शलाइज ना हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पेटेंट अगर बनता है तो मुश्किल से 5 से 7% पेटेंट कमर्शलाइज होता है। लेकिन एक दिन जब पेटेंट की भूख लगेगी तो वो कमर्शलाइज और अच्छी टेक्नोलॉजी की भूख भी लगेगी, क्योंकि जब एक बार नंबर खड़ा होता है तो फिर एक कंपटीशन होता है क्वालिटी का। नंबर के बाद क्या बचेगा, आदमी ह्यूमन बीइंग है, क्यूरियोसिटी होती है। बहुत सारे नंबर है, पब्लिकेशन आज से 30 साल पहले जापान पब्लिकेशन करता था, जंक होता था, बहुत बहुत जंक पब्लिश करते थे, बहुत नंबर। चाइना ने आज से 20 साल 15 साल पहले तक किया, बहुत सारा नंबर पब्लिश होता था, और आदमी क्या आप क्या करते, कंपटीशन किसका स्टार्ट होगा, नंबर का कंपटीशन। मेरे 10 है, मेरे 20 है, मेरे 50 है, मेरे 250 है, मेरे 300, अब वो सबके हो गए, क्या करेगा, क्वालिटी की तरफ चलता है। इसलिए हंगर पैदा होना बहुत जरूरी है, और हंगर पैदा होगी आपकी क्यूरियोसिटी से। ये सारे जो इवेंट्स होते हैं, इसका पर्पज ये होता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप की जाए। आप यंग माइंड है, जो बिगनर होता है उसके पास सोचने के लिए बड़ा हॉराइजन होता है, जिसका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी डेवलप होता है वहीं आसपास ऐसा है, ये तो मुझे पता होता होगा, उससे ज्यादा नहीं सोच पाता। और आपकी जिज्ञासा भी ज्यादा होती है, तो जिज्ञासु बनिए, प्रॉपर्टी का लॉक लगाने के लिए प्रॉपर्टी पैदा कीजिए इंटेलेक्चुअल। इसी पर्पज से सबने जितना सारा आपको बताया, लगाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छा लेक्चर सबने दिया, और हमें उम्मीद है कि आप कॉल करेंगे आगे भी, तो आप आते रहेंगे। ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूँ, इस तरह की स्टेट यूनिवर्सिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्टिव रहती है, सब इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस वो हमेशा एक्टिव रहते हैं इन सब चीजों में। बट स्टेट यूनिवर्सिटी में इस तरह की इनिशिएटिव लेकर के, पेन लेकर के, और आप इतनी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेंट इकट्ठा होना, रियली आप धन्यवाद के पात्र है, और इससे भी ऊपर आप बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई थिंक So, on behalf of organizing committee, I extend my vote of thanks to keynote speaker, Mr. Chandrasekhar Sharma Tanikela sir from DST, and I am also very thankful to Professor Anil Malik ji, HOD Department of Physics, who has been he is so busy. He has been given large number of responsibility to make our university on top. Continuous, he is playing with data and working hard to fill the data for NIR or for keywords ranking for another different thing. He is the mainly leading person to whatever the award morning that was announced by Professor Birpal Singh, the man behind that all things is Dr. Anil Malik. So I think this is a huge round of clapping required for his work. And he is so busy, but even then, when I requested him, immediately he generously he accepted my request and given from morning continuously. You can see he is here with us. So I'm very thankful to you, Dr. Anil, and Dr. Neetu Singh, my friend from MIM Ghaziabad,
HOD of the Department of Biotechnology. She is also came with several students from Ghaziabad, and here she has performed a role as a co-chairperson of this section. So I'm also very thankful to Dr. Neetu Singh. And with us, Dr. Lasman Nagar, my younger brother and assistant professor of Department of Microbiology. He is also, since last several days, he is with me and busy, and he is working hard to make this workshop, and he has also continuously this making as a report here, this documenting the lecture of Professor T. Sharma sir. So thank you to all of you. Now I request Gyanika, Dr. Gyanika and Dr. Nitin, please provide the certificate moment to honor our guest speakers, chair coach, co-chairperson report here. Thank you. I request Professor Jiten Singh sir and Professor S.S. Gaurav sir to felicitate our keynote speaker by presenting him a memento and a certificate. Thank you, dignitaries, for doing the honors. Thank you, Chairperson, sir, Co-Chairperson, ma'am. Thank you, Reporter, sir. I request Professor S.S. Gaurav, sir, to present a certificate and memento to Professor Anil Kumar Malik, sir. I request, sir, Professor S. Gaurav, sir. I request Dr. Sachin Kumar, sir, to present a memento and certificate to Dr. Neetu Singh, ma'am, co-chairperson of the session. I request Dr. Vinay Pawar, sir, Department of Genetics and Plant Breeding, to present a memento and certificate to Dr. Lakshman Nagar, sir, reporter of this session. Thank you, sir. Thank you, dignitaries on the dais. Okay. Now, there's arrangement of lunch at the side of this arrangement. Please, all the students stay back for 10 minutes while the dignitaries and guests take the lunch. Thank you.
like to give a brief introduction about the chairperson of the particular session. Professor Jiten Singh Sir is head of the Department of Microbiology at CCS University, where he joined in year 2022. He had worked as assistant professor in College of Biotechnology at Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Meerut, since 2005, where he worked for about 17 years and completed his tenure as assistant professor and associate professor before joining here as professor. He had completed his master's and doctorate degrees from CCS University at the University of Queensland, Australia. His area of research interests include viruses, phytoplasmas diseases of horticulture crops of Western Uttar Pradesh, impact of climate change on plant viruses, and recombination detection, whitefly transmitted Gemini viruses, Trips transmitted viruses, plant viruses, and phytoplasmas, etc. He has received various project grants from different funding agencies and published research review papers and other book chapters. With this very brief introduction, I would like to invite Professor Jiten Singh Sir to do the proceedings of this particular session. Thank you, sir. Respected speaker of the day, Dr. Dinesh Kumar, my fellow colleagues, and dear friends. So today we have an eminent personality, we can say a dynamic personality from Indian Council of Agriculture Research with us. Today we have Dr. Dinesh Kumar, sir. He's having a vast experience in the area of biotechnology, bioinformatics, and he served ICR as senior scientist at National Bureau of Animal Genetic Resources, Karnal, for a period of 15 years. And after that, he was also a visiting scientist at Iowa State University of Science and Technology, USA, from 2006 to 7. And he was also associated with the Central University of Haryana as a professor biotechnology and dean academic affairs from 2021 to 2023. He also served as of International Affairs, Central University of Haryana. He is a member of different funding agencies like DST Sir, DBT in the area of plant science, and currently he's working as principal scientist biotechnology at Indian Agriculture Statistical Research Institute, New Delhi, from 2022. He was also having some special attachment in his account. He also served as a chairman, scientific panel, GMO and food, FSSAI from 2023 to 2026. Will be a period for 3 years. Ministry of Health and Family Welfare. He was also a member of Technical Advisory Committee members, State Biotechnology Mission, Government of Gujarat, and also served as a resource person of UGC for implementation of NAP 2020 under the NLTC program. If we speak about the educational qualification of Dr. Dinesh Kumar, he is well acquainted with many degrees, like he has BSc honors from BHU, MSc Biotechnology from BHU with DBT National Fellowship, and again PhD with NET from UGC NET from BHU, and after that he worked as PDF at Iowa State University, USA, and he has also done PG diploma in technology management in got gold medal from Central University of Hyderabad. He is also having LLB and LLM degree. He has also having many honors awards, peer recognition in his account. He is also a recipient of National Fellowship of DBT, recipient fellowship of NET, GATE, and
or DBT Overseas Long-Term Fellowship Award from 2006 to 2027. If we talk about the research contribution, so Professor Dinesh Kumar sir has many number of research papers in peer-reviewed journal of high impact. The highest impact is 63.83. I have not seen from my near and dear scientist which is having an impact of such a higher range. So with this, we are thankful to you, sir. We requested you for this presentations, and you agreed for the same and spare the time for the Chaudhry Charan Singh University. With this, I invite you, sir, for your presentation. Thank you, Professor Jitendra ji, and respected dignitaries on the dais and faculty members, dear student. I understand that once you have wonderful lunch in very wonderful amount, you feel sleepy. And to break the sleep, I think I am the right person because I worked with younger people and I have that connect. So I am sure you will not sleep at the sleepy point and I will be able to have your full attention. And today's topic, which they are going to run, today's topic is very interesting. That we are going to discuss the role of bioinformatics in intellectual property, especially in agriculture. And if you go to the next slide, I will say that previous three speakers, they have made my job very easy. That what is intellectual property or what is property, and three different kinds, movable, immovable, and your intellectual property of the 8 different kinds you saw by Dr. Sharma, and also you saw in our first two lectures. So we will directly go to the type further. Next. Please see the last point. Only last bullet, because others are covered. If you have invented something which is not reported earlier, why you have to disclose? Why somebody will make copy? And what is wrong if somebody is making copy? And if you keep it secret, you can do the business like Coca-Cola of more than 100 years. Still it is a trade secret, longest ever, much longer than your copyright. But if society gets the knowledge that what is the composition or what is the formulation, society gets rewarded because no need to repeat the same research. But if there is some budget is required to do the research, return on investment, like you buy the share, buy the plot, then money must appreciate. Otherwise, nobody will put the money there. So the purpose of intellectual property is disclosure of knowledge, and the inventor is rewarded, and there is a balance between incentive to the inventors and also disclosure to the knowledge of society. And sometimes we see a classical question that intellectual property is a mechanism for betterment of society and also betterment of inventors. Please discuss these kind of things. I was learning as a student, and same point I am sharing with you. Let us see the very next essence of intellectual property. Next. These are discussed
different types. So we will go to the next one. Now, I am starting this lecture or talk or sensitization to you with a real picture of country and real problem of one of the intellectual property right, that is plant variety. Already 3 speakers they took the name. What happened that if Chetan Bhagat's novel is xeroxed and circulated for 2 years, and then Chetan Bhagat wins the case that it was his knowledge, his creation, somebody had copied, and the case took 2 years to decide. Still, it is fair enough. 2 years to decide. By the time how many copies will go to how many people in digital form, there is no check. And even if that person wins the case, money cannot be recovered. तब तक वो बट गया, सबके पास चला गया. अब वो बिकेगा नहीं क्योंकि जेरोक्स कॉपी अवेलेबल है. ऐसी सिचुएशन आई दिल्ली में 2019 में. और जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी which can be biologically propagated annually, can it be verified for years for uncertainty? This was the question between two companies of seed, and company's name you can see, the Pioneer and Kaveri. एक ने दूसरे की सीड को नए नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिया. झगड़ा हो गया कि भाई मैंने रिसर्च करके ये बीज बनाया है, आप कैसे ले लोगे, और ये मेज का बीज था मक्के का. अब हुआ कि इसकी जांच कैसे करेंगे. जो हमारी पुरानी पद्धति थी प्लांट वैरायटी बौद्धिक संपदा के रूप में स्वीकार करने के लिए, उसमें 2 सीजन, 2 साल, 2 पैदावार खेत में लगाई जाती थी. कृषि विशेषज्ञ उसमें देखते थे कितने बाली हुए, कितना वजन हुआ, कैसा उसका कैरेक्टर है, और तब वो एक्सपर्ट लोग बोलते थे कि ये जो ओरिजिनल वैरायटी है उससे मैच कर रहा है परसेंटेज में. लेकिन सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, बाली छोटी हो गई, प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हुआ. और उस 2 साल में अगर सीड फैलता गया तो फिर जिसने पैसे लगाए थे वो अपने पैसे को तो नहीं निकाल पाएगा. चाहे उसकी बेहतरीन बीज हो, बेहतरीन पैदावार हो, रोग रोधन क्षमता उसके अंदर ज्यादा हो सकता है उसके अंदर एमिनो एसिड का कॉम्पोजिशन भी बेटर हो सकता है उसमें विटामिन भी बेहतर हो, लेकिन उसके सभी शोध के पैसे कानून में कमी के कारण चले गए. 2019 में ही हमें भी लग रहा था कि भारत में ये जो बौद्धिक संपदा है, नई किस्म, पौध किस्म जो हम बना रहे हैं, इसके डिस्प्यूट को उसकी पैदावार से पहले डीएनए टेस्ट से अगर किया जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनडी तिवारी का बेटा रोहित तिवारी डीएनए टेस्ट से निकल के आ सकता था. नैना साहनी केस जो तंदूरी कांड था डीएनए से, शिवरासन केस डीएनए से, सद्दाम हुसैन को पहचाना गया डीएनए टेस्ट, राजीव गांधी जिसकी इन कैमरे हत्या हो गई वो भी पहचाना गया लीगली इंडियन एविडेंस एक्ट में डीएनए टेस्ट से. तो क्या हम इस तरह के पौध किस्म की चोरी क्या हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कर सकते हैं? ये मूलभूत प्रश्न था जिसमें बहुत सारे आधे से अधिक विदाउट पीएचडी वाले लोग काम कर रहे थे. एमएससी जिन्होंने किया हुआ था, रिसर्च कर रहे थे, उन लोगों ने इस काम को किया. तो हुआ कि कौन सी नमूना रखा जाए जिसकी हम फिंगरप्रिंटिंग विकसित करें. एक सज्जन ने बताया कि गेहूं, आशीर्वाद आटा, मध्य प्रदेश का आटा, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट का आटा,
बहुत महंगा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं चाहिए, और वो चलता है, मार्केट अच्छी है उसकी। तो हुआ कि गेहूं का जीनोम हेक्साप्लॉइड है, उसके जीनोम का आकार 16 जीबी का है, 16 जीबी, और 350 से ज़्यादा गेहूं की पौध किस्म प्रजाति वैरायटीज हैं। अगर इसके अंदर हम कोई हर एक वैरायटी का 12 डिजिट का आधार कार्ड बना लें डीएनए से, तो हम अपने मोबाइल से नोटपैड फाइल में, एक्सेल सीट में जो सीक्वेंस जीनोटाइपिंग रिजल्ट हैं, उसको अगर मैं अपने ऑर्डिनरी मोबाइल से अपलोड करूं, सर्वर में कहीं रेफरेंस वाली चीज रखी रहे, उससे वो मिलान करके रिजल्ट बता दे, तो ये काम हो जाएगा। ऐसी सोच, इस तरह की तकनीक पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। हम लोगों ने छान मारा। मुझे लग रहा था कि ये बहुत आसान है, मेरे पूरे टीम को लग रहा था कि स्टोरी तो मजेदार है, पता नहीं होगा या नहीं। पहला प्रश्न था कि कितने वेरिएंट्स या मार्कर हम लेंगे। तो 368 368 वेराइटीज, हर वेराइटी से 35,000 मार्कर। तो आप गुणा कर लीजिए, 368 इंटू 35,000। बहुत बड़ी एक्सेल सीट जो विंडोज में हैंग करने लग जाए, उस तरह का मामला हो गया। फिर ये हुआ कि इसमें से एक यूनिक निकालना है जो जिसकी संख्या कम हो, 50 से भी कम हो, 35,000 से, लेकिन वो वीसा कार्ड वाला नंबर हो, आधार वाला नंबर हो, यानी व्यक्ति विशेष हो या प्रजाति विशेष हो या पौध किस्म विशेष हो। अगर आप मेरे प्रश्न को समझ पा रहे हैं तो मेरे लेक्चर में आपका भाग लेना सफल है, क्योंकि पूरा लेक्चर इसी पे आधारित है जो अभी आप सुन रहे हैं। फिर क्या हुआ कि उतने बड़े एक्सेल सीट को लेके तरह तरह की स्क्रिप्टिंग की गई कि जो कॉमन सब में है डिलीट करते जाओ। 21 क्रोमोसोम थे क्योंकि हेक्साप्लॉइड था। अब हर एक क्रोमोसोम को मिलाए जा रहे हैं, जो कॉमन मिल गया डिलीट करते जा रहे हैं। सरदार जी की पहचान आप कर लोगे 5K से, केस, कृपाण, कंघा आपको याद है। लेकिन अगर 2 लोग टर्बन पहन के आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे, फिर आप बोलोगे हाँ ये स्पेसिफिक है, पहचान जाओगे। इसी तरह से हमने भी सारा डिलीट किया। 43 जगह हमें अलग अलग क्रोमोसोम पे ATGC 4 ही अल्फाबेट हम देखे जा रहे थे। हम देखे जा रहे थे मतलब हमारा कंप्यूटर देखे जा रहा था। स्क्रिप्ट और मिल गया हमें, फिर हमने उसको टेस्ट किया, लगा ये बता रहा है। फिर उसको हम लोगों ने एक सर्वर बनाया, ऐप बनाए, डेटाबेस बनाया, SQL बोलते हैं, प्रोग्रामिंग हुई, और फिर हमारे ही कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एंड्रॉयड ऐप बनाया, उसमें उतनी तरह की फाइल अपलोड करने की सुविधा थी। फिर मैंने अपने सबसे खटारे पुराने मोबाइल में चलाया, चल गया, रिजल्ट आने लग गए। हम लोग यूरेका की स्थिति में आ गए। फिर हमने उसको भेजा, हमारी टीम ने, वीट इंस्टीट्यूट से हमारा कोलैबोरेशन था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च, डॉक्टर रतन तिवारी हमारे लीडर थे वहाँ से। तो ये काम कर रहा था, शोध पत्र छप गया, साइंटिफिक रिपोर्ट नेचर ग्रुप ऑफ जर्नल्स में, और हमारे ट्रिब्यून, तरह तरह के मीडिया में उसकी रिपोर्ट आने लगी। उसी समय में आप उसकी टाइमलाइन देखिए, हमने जुलाई 2018 में इसको सबमिट किया और मार्च 19 में छप गया। जुलाई 19 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि क्रॉप वैरायटी की टेस्टिंग
डीएनए की सहायता से की जा सकती है। 2 साल तक बीज को आप फैलने ना दें, न्याय नहीं हो पाएगा क्योंकि तब तक बढ़ चुका रहेगा चेतन भगत का नॉवल। और आप 6 महीने के अंदर डीएनए टेस्टिंग की रिजल्ट दे दीजिए, अगर वो एनुअल क्रॉप है तो। और मुझे ये बताते हुए आप लोगों के साथ खुशी हो रही है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, इस पे हमें कॉपीराइट का सर्टिफिकेट भी मिला जो मैं आपसे शेयर करूंगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑफ दिस टेक्निक। और ये अनुसंधान पत्र भी छपा। इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई, उनसे भी हटके जो हमने सपने में नहीं सोचा था। मुझे लगता जरूर था एज ए लॉ ग्रेजुएट कि इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि हम 100 दिन पहले छापेंगे, 100 दिन बाद ही हाई कोर्ट को जरूरत पड़ेगी। और ये न्यूज में था, उन लोगों ने देखा, और तब हमें लगा कि अनुसंधान, थिंक लोकल बट एक्ट ग्लोबल, जो नारा है वो उसी का प्रतिरूप है कि हमें ये समस्या दिख रही थी और इसमें हमने जिक्र किया। और मुझे ये खुशी है कि उस शोध पत्र में लिखा था कि सोवरेनिटी एंड आईपी डिस्प्यूट, दिस टेक्निक इज इम्परेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्लोब। और कोर्ट ने भी इस चीज को माना और ये शोध पत्र भी छपा। और ये पहला उदाहरण है कि हाउ बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैन generate intellectual property of a methodology to test plant varieties where dispute cost is going to be too much, and if you are growing the crop in the field, और दुर्भाग्य से सूखा, बाढ़, भूकंप या मानवीय भूल, सिंचाई की कमी, क्रॉप रोटेशन, दलहन फसल पहले लग गया, एक में नहीं लगा, तो आपको अंतर नजर आएगा। स्टैटिस्टिकल इनएक्यूरेसी कैन बी ओवरकम्ड बाय डीएनए टेस्ट because DNA amount and sequence in a given cell remains constant irrespective of its location। जो चारगॉफ्स लॉ हमने 10वीं और 12वीं के बायोलॉजी बुक में पढ़ा वो आज भी वैलिड है। और ये मेरे लेक्चर का पहला भाग है जो मैं इसी एक स्लाइड पे समाप्त कर रहा हूँ। दूसरा भाग है, उसके बाद आप लोग फ्री हैं मेरी तरफ से और मैं भी आपकी तरफ से। उम्मीद है आपको नींद नहीं आ रही होगी। और इसमें काम करने वाले आधा से अधिक जो लोग खोज कर रहे थे, उनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी, जज्बा था, जोश था, और वो काम करते गए और सब कुछ हो गया। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन अगर किसी का सबसे कम योगदान है तो वो मेरा है। लेकिन सबको लगता है कि नहीं नहीं इनका होगा, इनका होगा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ये पूरी टीम का ही श्रेय है, दोनों संस्थान के, उन लोगों ने मिलकर किया, लेकिन इस तरह से हम आगे बढ़े। इस शोध के ऊपर हमें एक मेल आया कि आपका ये आर्टिकल साइट हो गया है। हम लोग लगा के रखते हैं, थोड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो कोई हमारे काम को साइट कर रहा है। तो एक साइटेशन ऐसा आया जिससे लगा कि अच्छा, हमें ही नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं। एक झटका तो हमें कोर्ट से लगा कि हम कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट आदमी है, हमें ही नहीं मालूम। फिर हमने उसको डाइजेस्ट कर लिया कि चलो हमें थोड़ा हाइप मिल रहा है, हम बोलते हैं कि हम ज्ञानी थे, हमें पता था देश को जरूरत है इसलिए हम कर रहे थे, हमने वैसे वैसे किया। एक जगह आया कि जो स्पीड ब्रीडिंग होती है, जिसमें कम समय में आप बहुत तेजी से पैदावार ले सकते हो, वहां पे 10 टेस्टिंग की जरूरत तो होगी नहीं जो आप फील्ड में उगा रहे हो, देख रहे हो, क्योंकि स्पीड ब्रीडिंग है। क्लासिकल मेथड्स ऑफ ग्रोइंग देम इन फील्ड फॉर 2 सीजन 2 लोकेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क। वहां लिखा था कि स्पीड ब्रीडिंग के लिए ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है, और उसका साइटेशन हमारे से भी ज्यादा हाई इम्पैक्ट में था। तब हमें लगा कि हमें शायद हम कॉम्प्रोमाइज कर गए, हम ऊंची चीज थे लेकिन हम बहुत छोटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उसको सोचे निकल जाने दो, निकल जाने दो। हमें ही नहीं पता था हम स्पीड ब्रीडिंग के लिए, हमने वो डिस्कशन में भी नहीं लिखा, लेकिन किसी और को समझ में आ गया कि इनका काम स्पीड ब्रीडिंग के लिए भी रिलेवेंट है। मुझे हम लोगों को तब सीखने को मिला कि अनुसंधान एक ऐसी चीज है जो छप जाने के बाद भी चलती रहती है। ये मैं कंक्लूजन पॉइंट बोलता हूँ कि थ्रू आउट योर लाइफ यू विल रियलाइज
इसकी और भी यूज है, इसके और भी यूज हैं। टू मेक द स्टोरी शॉर्ट, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की खोज 1966 में हुई थी। 83 तक कैरी मुलिस जैसा कोई पैदा नहीं हुआ जो उसको उस नजर से देखे और नोबेल प्राइज लेके जाए। इसी तरह से जीनोम एडिटिंग जिसने खोज की थी, नोबेल प्राइज उसको नहीं मिला, और जिसके पेटेंट हैं उसके पास नोबेल प्राइज नहीं है। तो ये एक क्लासिकल डाइकोटॉमी वाली सिचुएशन है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज हाउ मच इम्पॉर्टेंट दैट यू मे हैव Nobel Prize, but you may not have IP on your own invention. And genome editing and Doudna's case is the best example for every student to understand. Now let us see the second example before we finish the lecture. तो आप तेजी से थोड़ा सा आगे बढ़िए। ये आप लोगों को लगेगा मैं तैयारी करके आया हूँ, तो इसके लिए देख लीजिए कि वो पेपर का टाइटल है जिसकी मैं बात कर रहा था, डीएनए सिग्नेचर ऑफ प्लांट वेराइटी, हाउ वी मेड इट। सो दिस वाज पब्लिश्ड एंड वी मेड वर्ल्ड्स फर्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। ये अलग अलग क्रोमोसोम है गेहूं के, उसके अंदर जो आपको स्पॉट दिख रहा है, आप यूं समझिए कि ये पिन कोड है उस शहर का जहां पे चिट्ठी भेजी जानी है। तो आपको अगर यूनिक पिन कोड पता है 43 शहर का, तो आप वहां पे चिट्ठियां बांट सकते हैं, उस शहर को पहचान सकते हैं। शहर का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ यूनिकनेस से है। हमने उसी 43 न्यूक्लियोटाइड 54 अल्फाबेट्स को, 54 न्यूक्लियोटाइड को हमने क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी जब आशीर्वाद का आटा जाएगा पैकेट में, क्यूआर कोड लिखा रहेगा। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चैलेंज करना है कि ये सरबती ग्रुप ऑफ वैरायटीज मध्य प्रदेश की है या नहीं, लाइक योर बासमती वैरायटी। आप उस सीक्वेंस से चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे में वो सीक्वेंस नहीं निकला। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की भी एक तरह से बैलेंस है, बिसाइड्स द इन्वेंटर और डेवलपर ऑफ द वैरायटी, कि उसको कोई चुरा नहीं सकता। सो इट्स ए बैलेंस, जो पहला पॉइंट हमारा था। नेक्स्ट, ये मेरा सेलफोन है, काफ़ी पुराना। इसके अंदर ये प्रोग्राम रन हो रहा है। आप आज भी गूगल प्ले स्टोर पे विस्टा हमने नाम रखा, वेराइटी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर ट्रिटिकम एस्टिवम, जो उसका बायोलॉजिकल नेम है। नेक्स्ट प्लीज। हम लोग समाचार पत्रों में थे इस शोध पत्र को लेके कि इंडियन साइंटिस्ट दे हैव डेवलप्ड दिस टेक्निक। नेक्स्ट, ये ट्रिब्यून वगैरह का है। उधर आप देखिए, ये हमारे ग्रुप को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिला। ये हमारे दल ने एक ऐसी बौद्धिक संपदा को निकाला है जो जिसमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और ये हमारा है, ये रजिस्टर्ड है, ये सर्टिफिकेट है। इसमें सभी को इन्वेंटर्स का नाम लिखा है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स लोग भी हैं। नेक्स्ट, ये वो कोटेशन है कि स्पीड ब्रीडिंग में भविष्य में अगर कोई वैरायटी का सिग्नेचर होगा तो वो बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस और फिनोटाइप ना हो करके बेस्ड ऑन डीएनए होगा। ये उस शोध पत्र में साइटेड है, जो हम अपने डिस्कशन में भी नहीं जानते थे कि इसकी वैल्यू क्या है। अगला देखिए आप, ये सब पिक्चर देखते जाइए, स्टोरी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट, अब बात आ रही है कि क्या राइस बासमती को तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं चाहिए, वो ऐसे ही प्रीमियम दाम पे बिकता है। क्या हम उसकी पहचान डीएनए से कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, और कुछ लोगों ने किया हुआ था। हम हमारा देखिए आगे। नेक्स्ट, हम लोगों ने करीब मोर देन 800 राइस वेराइटीज का डीएनए सिग्नेचर बनाया। हम उसको पहचान सकते हैं, बिल्कुल जैसे जो गेहूं वाली कहानी है उसी तरह से। और ये भी सर्वर हमारा काम कर रहा है, और इस पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए आवेदन किया हुआ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि धान और गेहूं की प्रजातियों का डीएनए से टेस्ट हमारे ग्रुप ने किया है, एंड दिस इज द टाइटल ऑफ द टॉक, हाउ बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैन प्ले रोल इन
intellectual property right development and management of your protection, legal dispute, and to attract more investment by giving DNA level protection of dispute resolution in 6 months. Next. जब हम लोगों ने ये इस तरह के काम शुरू किए तो हमारे ग्लोबल हिट्स जो फिनोटाइप को कंट्रोल करने वाले ट्रेट थे, हमने उसकी संबंधित एसएनपी को खोजने की कोशिश की और जैसे ही हम लोगों का ये पेपर छपा, आप देखिए पूरे विश्व से लोग डाउनलोड करना शुरू किए, क्योंकि वीट इंडिया में हाईली डाइवर्स क्लाइमेट में होता है। कुछ के अंदर रस्ट रेसिस्टेंस है, कुछ के अंदर आप देखिएगा तो एबायोटिक टॉलरेंस, ड्राउट टॉलरेंस, ये सब है और पूरे विश्व को इसकी ज़रूरत है। तो ये देखिए इम्पोर्टेंस कि आप ग्लोबल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट स्टोरी का पार्ट देखेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अब भाग 2 शुरू होता है, जिसमें बात होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। आज आपने देखा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात चल रही थी, अब हम लोग इस पे बात करेंगे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से दार्जिलिंग का उदाहरण आज दिया गया था। दार्जिलिंग की एक अच्छी कहानी आपके नींद को तोड़ सकती है, वो मैं सामने रख रहा हूँ। दार्जिलिंग जिस क्षेत्र में पैदा होता है चाय, दार्जिलिंग की जो पूरी पैदावार है उसका जो आंकड़ा है वो हमारे दार्जिलिंग एक्सपोर्ट करने के आंकड़े से ज्यादा है। अब आप समझ गए, ओरिजिनल दार्जिलिंग टी जितनी पैदा हो रही है, एक्सपोर्ट उससे ज्यादा हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? मिलावट। सिंपल, ये कौन सी मिलावट है? तो जो नॉन दार्जिलिंग टी है उसको भी मिला दो उसमें, अब एक्सपोर्ट का वॉल्यूम तो बढ़ गया। लेकिन जो दार्जिलिंग टी एसोसिएशन है वो बोल रहा है हमारी तो पर यूनिट पैदावार ही इतनी है, हम मैक्सिमम पैदा करेंगे तो इतना करेंगे। ये एक्सपोर्ट हो कहाँ से ज्यादा रहा है? वो पहला केस था जीआई का कि लोग समझने लगे कि ज्योग्राफिकल ओरिजिन इज कनेक्टेड विथ टेस्ट। अगर मैं दार्जिलिंग चाय खरीदता हूं तो उपभोक्ता के रूप में मेरा ये हक है कि मुझे दार्जिलिंग चाय ही दिया जाए। और अगर आप दार्जिलिंग चाय पैदा करते हैं तो प्रोड्यूसर के रूप में आपका ये हक है कि आपके नाम पे कोई फर्जी दार्जिलिंग चाय ना बेचे। जो पहली स्लाइड को याद करिए, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का बैलेंस आंख बंद करके तराजू में, वो कैसे हो सकता है? अब बात करेंगे डीएनए टेस्ट की, कि क्या इससे हो सकता है? क्या ये टेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए रिलेवेंट है? क्या ये इस विश्वविद्यालय के लिए रिलेवेंट है? क्या ये टेस्ट यहाँ के शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है? क्या यहाँ के प्राध्यापकों के लिए सोचने के लिए महत्वपूर्ण है? इस पे हम चर्चा करके आज का समाप्त करेंगे। तो ये दूसरा आपके सामने है। अब मैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के डिटेल में नहीं जाऊंगा कि पर्टिकुलर ज्योग्राफी में कुछ पैदा हुआ, उसके अंदर कुछ खास क्वालिटी थी, वो क्वालिटी कंज्यूमर को भी मिलनी चाहिए स्वाद के रूप में, और उसके जो बढ़े हुए कीमत है, प्रीमियम प्राइस है, वो प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट इतना ही है, बाकी तो लीगल चीजें हैं, हमारे जानने के लिए इतना काफी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या इससे उत्पादन, उससे क्या किसान की आय बढ़ सकती है? बासमती सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 30 से 40 हजार करोड़ रुपए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 30 से 40 हजार करोड़ रुपए हर साल ये बासमती चावल जिसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसके निर्यात करने से देश को प्राप्त होता है। 30 से 40 हजार करोड़, पिछले साल 43 हजार करोड़ था। ये मैं पिछले 10 साल का बोल रहा हूँ, किस रेंज में चल रहा था। अगर आप आईसीआर का सारा खर्चा देखेंगे तो 8,000 करोड़ है।
A single commodity can replace 5 times price of running expenses of the institution. That is the value of geographical indication in agriculture of our country. Now the question is, क्या बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोई रोल है या नहीं है? अगर है तो एक्चुअल एग्जाम्पल क्या है? तो हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि कृषि के जीआई कितने हैं, जो लेटेस्ट डेटा 2024 का, तब आपको लगेगा कि हमें इस तरह का कार्य एमएससी के प्रोजेक्ट में कैसे करना चाहिए, पीएचडी के प्रोजेक्ट में कैसे करना चाहिए, देखते हैं। नाउ आप देखिए नेक्स्ट, 10,000 ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्रोडक्ट दुनिया में है और इसके व्यापार करने की क्षमता 50 बिलियन यूएस डॉलर है। लेकिन ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाले प्रोडक्ट हैं, इसका साइंटिफिक एविडेंस, इसके प्राइस डिफरेंस, कंज्यूमर अवेयरनेस, लीगल प्रोटेक्शन, लीगल अवार्ड ऑफ द सर्टिफिकेट टू द सोसाइटी, ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें प्रदेश के शिक्षक और विद्यार्थियों की अहम भूमिका है कि उसको डॉक्यूमेंट कर सकें। और 90% ये भारत जैसे 30 देश में ही है, तो हमारे जैसे देश में इसकी भूमिका और भी ज़्यादा है। और आप देखिए 167 देश में आप देखिए तो एक संघ है जिसके अंदर ट्रेडमार्क और जीआई लोग म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप मेरे प्रोटेक्शन दो, मैं आपको दूंगा। तो यानी एक पासपोर्ट की तरह से है, वीसा की तरह से है व्यापार करने के लिए। बासमती उदाहरण है, देखते हैं आप विज्ञान का इसमें क्या रोल है, हम देख लेते हैं। ये तो मैं भूमिका बना रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट है व्यापार के लिए। अब अगर हम देखते हैं जीआई, तो 540 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले प्रोडक्ट भारत में आज हैं। अगर यूरोप में देखेंगे तो 3000 है, यानी हमारे यहाँ अभी इसकी खोज बाकी है। आज बात चल रही थी, बनारस के पान को दे दिया गया। बनारस के गंगा नदी के उस तरफ रामनगर है, वहां के बैगन को भी दिया गया उसी के साथ। हरे रंग का बैगन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का सर्टिफिकेट है। इलाहाबाद का सुनहरा अंगूर, उसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। मेरठ की कैंची, उसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है कि उसमें यूनिक ढंग से उसको बनाया गया है। और ये जो कड़कनाथ मुर्गी है, जिसका अंडा कम होता है लेकिन महंगा होता है, 10 रुपए का होता है, उसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया। हैदराबाद हलीम, उसको भी खाने की चीज है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया। तो इसकी संख्या काफी कम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन चीजें बहुत हैं और इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। ये मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था। अगला आंकड़ा देखिए अब, कि ये देखिए कि 31 जनवरी तक जो इम्पोर्टेंट जीआई हैं, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। ये सामान्य उत्पाद जो होते हैं कृषि के, उससे इनकी कीमत ज़्यादा है इसमें, लेकिन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑथराइज्ड सेलर ही इसको बेचेगा, कोई और बेचेगा तो वो अरेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह का ये बौद्धिक संपदा जो क्षेत्र के पैदावार से संबंधित है, उसी क्षेत्र के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और छात्र इसको अपने पीजी थीसिस में भी लिख सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। इसका अलग से जर्नल भी आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, जिसमें आसानी से छपता भी है, और आप देश का ही काम कर रहे हैं अपने ही लोगों के लिए। अगला अगर आप देखिए कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, कि क्रॉप का जीआई और एनिमल का जीआई दोनों का अपार मार्केट है, और जिसमें आईपीआर में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की भूमिका है। अब थोड़ा तेजी से चलाइए, अंतिम पे चलते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए किया था कि जो एक्सपोर्ट वैल्यू है, अगर आप बासमती राइस का देखें तो जो मैं आपको बोल रहा था कि 40,000 के करीब चला जाता है करोड़ तक, ये आप देख सकते हैं। और कोरोना के बाद तो बहुत ही बड़ा है। आगे देखिए, इसी तरह से बफलो का जो मीट है, उसका भी एक्सपोर्ट वैल्यू राइस से कम नहीं है, लेकिन इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं
क्वालिटी के मामले में, तो इसमें शोध की जरूरत है। आगे ये देखिए, जीआई सर्टिफिकेट मिलते ही ये पश्चिम बंगाल का आम बहराइन पहुंच गया। इसकी क्वालिटी को सर्टिफाइड लोग ही बेच रहे हैं। ये केला जलगांव का दुबई पहुंच गया जीआई के चलते। व्हीट गुजरात का 700% इंक्रीज, अनबिलीवेबल। ये पास्ता बनाने के काम आता है, इसकी एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ गई। यूरोपियन डेटाबेस में देखेंगे तो 3800 जीआई है, भारत में 540 और उत्तर प्रदेश में मात्र 11। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इस तरह की कार्यशाला में ऐसी चर्चा नहीं करते हैं, जो आज किया जा रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। वैज्ञानिक के रूप में, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में जो भूमिका जीआई में होनी चाहिए, ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी टीम की तरफ से था। उड़ीसा के चिल्का तालाब में एक भैंस जिसकी दूध से बना दही 1 सप्ताह तक सामान्य तापक्रम पर कमरे के तापमान में बिना किसी फंगस के इन्फेक्शन के सुरक्षित रहता है। जैसे ही हमें ये पता चला, हमने उसके ऊपर कौन से माइक्रोब्स हैं, क्या विधि है, क्या वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए क्वालिफाई करता है, इसको प्रकाशित किया। अब बात आ रही है, 15 साल में बायोटेक्नोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रहा था, तो वहाँ एक सोच थी कि क्या हम ब्रीड पहचान सकते हैं। ब्रीड का दर्जा पेटेंट का नहीं है, वैरायटी का है। ब्रीड के लिए हम लोगों ने ये शोध किया, तो पेपर छप गया, तो मैं समझ गया था कि प्लांट वैरायटी और पेटेंट लॉ में स्कोप ज़्यादा है। तो ये हमारी पुरानी जो शोध थी वो आगे हमारे लिए मददगार हुई, और मैं करनाल से दिल्ली पहुंच के इसी काम को प्लांट वैरायटी में लगाया और हमें इतनी बड़ी सफलता हुई। तो सपने साथ चलने चाहिए, सपने बदलने नहीं चाहिए, धैर्य की ज़रूरत है, और सही डाटा सही समय पे सही चीज़ें हो सकती है। इतना सही हो सकती है कि 6 महीने बाद कोर्ट केस में आपके के रिसर्च को कोट भी किया जा सकता है कि इसकी ज़रूरत है, और ऐसा हुआ है। आगे देखिए, कैन वी हैव डीएनए सिग्नेचर ऑफ मैंगो वेराइटीज? यह प्रश्न हमने गेहूं की सफलता के बाद रखा। भारत में 15 आम ऐसे हैं जिनका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकार पत्र प्राप्त है, परंतु जेली, अचार, उबाले हुए आम के प्रोडक्ट से आप उसकी पहचान नहीं कर सकते। इतनी सी सोच के साथ हमने 100, सच कहूं तो 96, क्योंकि परचेज ऑर्डर उतने का ही जाता है, प्रोफेसर जितेंद्र जी जानते होंगे, उसमें से 4 सैंपल खराब हो गए। 92 हमने इससे खोज करने की कोशिश की, और उस समय जीनोम सीक्वेंस भी नहीं था, जैसा मैं गेहूं में आपको दिखा रहा था, 21 क्रोमोसोम। लेकिन तब भी हमें सफलता हाथ लगी, और हमने साइंटिफिक रिपोर्ट में ही प्रकाशित किया। और आज के तिथि पे हम ये बोल सकते हैं कि अल्फांसो आम के अंदर महाराष्ट्र का जो नक्शा है, इंक्लूडिंग गोवा, और ये इंडिकेटर है, ये हमारे टेस्ट में भी है। लंगड़ा आम, मलिहाबादी आम, और दक्षिण भारत के आम और गुजरात के आम, सभी का डीएनए सिग्नेचर हमारे पास है, हमने प्रकाशित किया। और हमें ये कॉन्फिडेंस आया कि अगर जीनोम नहीं भी है सीक्वेंस्ड, तब भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से उसकी पहचान कर सकते हैं, उसका डेटाबेस बना सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं। और जो पहला हमारा ब्रीड का फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट था, वो 50,000 फिंगरप्रिंट को एक पर्टिकुलर ब्रीड से मिलाने के लिए गोट के कुछ सेकंड्स में करता था। तो उससे हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम लाख और करोड़ के डाटा से खेलने लगे सुपर कंप्यूटर में। और अब आप वो शोध पत्र देख लीजिए, फिर मेरा टॉक पूरा हो जाएगा। अब देख लीजिए ये कैसे हमने इसको प्रकाशित किया, मैंगो वैरायटी सिग्नेचर। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा चैलेंज था कि एक
0.25 मिलियन मार्कर से क्या हम मिनिमम सेट ऑफ मार्कर निकाल सकते हैं जो डीएनए से बता सके कि कौन सी वैरायटी है आम की? तो उत्तर सामने है। नेक्स्ट प्लीज। ये इंटरनेट से चल रहा है इसलिए थोड़ा सा लैग है। चल रहा है? चलिए मैं आपको बता देता हूं कि भारत के नक्शे के ऊपर अगर आप अलग अलग जगह पे आम को जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं और हमने ये फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया, चल गया है देखिए। तो ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री है इसको आप भारत के नक्शे पे रखेंगे तो ये उसी जोग्राफिकल एरिया को शो करेगा। यानी by superimposing the phylogenetic tree constructed based on the unique genotype sequence markers identified in the panel of 92 varieties, they were so specific that they were able to make phylogenetic tree, and every existing OTU were falling in the geographical area superimposed on the phylogenetic tree, except the hybrid one which we have reflected separately in a group। और इसी चीज को हमने बढ़िया से डिस्कशन में लिखा कि आम के व्यापार में जोग्राफिकल इंडिकेशन के पहचानने में बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटेशनल जीनोमिक्स की अहम भूमिका हो सकती है। और ये शोध पत्र नेचर ग्रुप ऑफ जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ और इसका भी हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राप्त है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस कार्यशाला में आपके सामने ये साझा करते हुए कि भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय छात्र ने अपने ही देश के दिए गए भौगोलिक संकेतक का डीएनए के रूप में हस्ताक्षर जो पौध किस्म के हिसाब से है उसका न केवल निर्माण किया, परंतु आज एक्सपोर्ट में कोई भी डिस्प्यूट होती है कावेरी सीड्स की तरह मेज की, तो इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। और एज ए लॉ ग्रेजुएट मैं समझता हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट में यही एक चीज है जो एडमिसिबल है और इसको इक्विवेलेंट टू विटनेस मानते हैं कि वैज्ञानिक उस साइट पे नहीं है परंतु उसके द्वारा टेस्ट किए गए को एक विटनेस के रूप में एक्सेप्टेबल है across the world in the judicial system. So with this, I am thankful to the entire group and all the participants present here. And the conclusion is DNA signature can be used for IP dispute resolution in plant variety protection and geographical indication, or bioinformatics can play very critical role in minimum time without compromising with the accuracy and efficacy independent of environmental constraints by testing the DNA in any form of the produce, not necessarily the right phenotype, or growing them at 2 season, 2 location, and again disputed statistical result. So यही दो चीज हैं। और आगे आप लोग मेरा ईमेल लिख सकते हैं। दिनेश कुमार बहुत असहज है याद रखने के लिए, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सफिक्स है दिनेश कुमार BHU@gmail.com। तो प्रश्न अगर अभी है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आप भेज भी सकते हैं। So thank you to all of you for very patient hearing. I really enjoyed this lecture. बहुत कम होता है कि भोजन के बाद नींद ना आए, और मैं अपने लिए डरा हुआ था, आप लोग के लिए भी डरा हुआ था, बट दिल से शुक्रिया। और सभी आयोजकों का कुलपति महोदया का आभार, और मेरे मित्र प्रोफेसर जितेंद्र जी का और प्रोफेसर गौरव जी का कि आप सभी लोगों ने मुझे विश्वविद्यालय से जुड़ने का मौका दिया। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं किसी भी छात्र या छात्रा या किसी भी अध्यापक के कार्य आ सका, क्योंकि हमारी सैलरी आपके दिए गए टैक्स से आता है। और मैं समझता हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में 12 रुपये महीने से मैं PhD किया हूँ, फेलोशिप उससे ज़्यादा लिया हूँ, तो मैं इस समाज का कर्जदार हूँ और मुझे खुशी होगी अगर मैं काम आ सका। धन्यवाद। Thank you, sir. So now house is open for question and answers.
If you are having any query, you can ask. We can take 1 or 2 questions. क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मुझे ये आशा है कि शायद नींद किसी भी स्टूडेंट को नहीं आई होगी। आई क्या नींद? नहीं आई। ये जो हमारे डॉक्टर दिनेश सर हैं, ये इनकी सरलता का ही एक उदाहरण है। सरल सर जो हैं बिल्कुल सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और अपनी सर ने हमारी बहुत सारी चीज़ों को ना सिंपल कर दिया है। सर ने एक मैसेज हमारे लिए इजी कर दिया है कि सर ने आप लोगों में साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करने की कोशिश की है अपनी रिसर्च के माध्यम से। सर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उसके बाद बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आए के क्षेत्र में आए और उसमें बड़ी सरलता के साथ सर ने ऐसी रिसर्च को अंजाम दिया कि जो कि हमारे IPR के लिए और हमारे देश के लिए भी को भी गौरवान्वित करती है। तो इसके साथ मैं सर का धन्यवाद सर को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। सर का एक ये भी है कि सर से मैं पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और कभी भी हमने सर से रिक्वेस्ट किया है, सर एक आपका लेक्चर कराना है, स्टूडेंट्स को थोड़ा मोटिवेट करना है। तो सर ने आज तक 10 साल में कोई एक बार भी ऐसा नहीं हुआ सर ने मना किया हो और डेट चेंज करने के लिए भी कहा हो। सर ने बड़ी सरलता के साथ हमें हमेशा उत्तर दिया और हमारे छात्राओं को जैसा इस बार सर ने किया ऐसे ही सर पूर्व में भी करते आए हैं। तो सर के साथ अगर किसी छात्र को अपने शोध कार्य से या किसी शोध कार्य या कुछ कैरियर काउंसलिंग के केस में भी अगर सर से एक बात करनी है तो सर ने अपना ईमेल आप सबको दे दिया है, तो आप बेहिचक होकर सर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसमें मुझे पता है सर को यू विल गेट 100% रिस्पॉन्स। सो इसी के साथ मैं सर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सर ने अपने कीमती समय में से विश्वविद्यालय के लिए कुछ समय निकाला और हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया। धन्यवाद सर। So, thank you, respected dais, especially our speaker, Dr. Dinesh sir. I think मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र ने बहुत कुछ ऑलरेडी बता दिया है और उनको सुनने के बाद I can confirmed, मैं डिस्कस कर रहा था नीचे, this is the perhaps the first lecture that was so difficult and that was presented so in easy format, कि सबको समझ में आ जाए। असली में सारा बहुत कठिन था, तो इतनी उनकी वो सरलता है, उनकी क्वालिटी है, उनका इंटेलेक्ट है और यही IPR की खूबी है कि हम चीज़ों को कैसे ठीक तरीके से प्रेजेंट करें, कैसे उसको अपनी IP को जनरेट करें और प्रोटेक्ट करें। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सर ने दिया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हिम। केवल एक रिक्वेस्ट पे जितेंद्र बता रहे थे, आई अप्रोच डॉक्टर पंकज कुमार, ही इज माई फ्रेंड इन सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब से बात कर लो, मुझे नंबर दे दें, और इन्होंने बात की और केवल एक कॉल पर सर ने बहुत ही सहर्ष स्वीकृति दी और आए और टाइम से पहले ही आ गए थे। सो सर, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर जनरसिटी एंड फॉर योर टाइम। और प्रोफेसर जितेंद्र भी बहुत सरल हैं, इतना सारा इनके पास काम है, उसके बाद भी सुबह से लगातार 3-4 दिनों से जब भी इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जब भी इनको मैंने कुछ भी कहा कि डॉक्टर साहब ये देख लेना, वो देख लेना, कि हाँ सर आप चिंता ना करो, मैं देख रहा हूँ। तो कंटिन्यूसली इनकी जो इतनी पूरी टीम है, अपनी टीम के साथ ही इज विद अस। सो थैंक यू प्रोफेसर जितेंद्र फॉर गिविंग इज टाइम एंड चेयरिंग दिस सेशन वेरी वंडरफुल वे। और हमारे 2 साथी और हैं, डॉक्टर दिनेश पवार फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी एंड डॉक्टर फातिमा सबीन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। आप दोनों भी लगातार 3 दिनों से साथ में काम कर रहे हैं और पूरे सेशन को रिपोर्ट करने के लिए आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत इसके साथ ही मैं डॉक्टर ज्ञानिका शुक्ला से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे डायस को रिकग्नाइज करने के लिए और जो उन्होंने इतना टाइम दिया वैल्यूबल, उसकी मेमोरी याद रखने के लिए उनको मोमेंटो दे करके और सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित करने की प्रक्रिया पूरी करें। थैंक यू।
Thank you, sir. I request Professor V.K. Umrao, sir, from Head Department of Horticulture, Agriculture College, Machra, to associate with Professor S.S. Gaurav, sir, and felicitate our invited speaker by presenting him a memento and a certificate. Thank you, sir. I request Dr. Sachin Kumar, sir, to associate with Professor S.S. Gaurav, sir, and felicitate Professor Jiten Singh, sir, the chairperson of the session. Thank you, sir. Now I request Dr. Sangeeta Bajaj to associate with Professor S.S. Gaurav, sir, and felicitate our reputiers of the session, Dr. Dinesh Pamar, sir, and Dr. Sabine Fatima. I request Dr. Virendra Kumar Tiwari, sir, to associate with Professor S.S. Gaurav, sir, and felicitate Sabine Fatima, ma'am. Thank you, dignitaries, for doing the honors. And this marks the end of this particular technical session. Next topic, sir. Now we are starting with the next technical session. Thank you, sir. Thank you, ma'am. The next technical session is being chaired by Dr. Sachin Kumar, sir, Department of Genetics and Plant Breeding. And the reporter of this particular session is Dr. Ashu Tyagi, sir, from Department of Seed Science and Technology, CCS University. I request the chairperson and the reporter to take their seats on the dais, please. All the students who are sitting at the back, be seated on the front seats, as these seats are also vacant. Please move forward. Thank you, sir. Before starting this particular technical session, I would like to introduce our chairperson, Dr. Sachin Kumar, sir, who has joined the Department of Genetics and Plant Breeding, CCS University, India, first as JRF in 2007, and started his career in research. While his working as JRF, he visited North Dakota State University, USA. And he also visited various other prestigious universities in various countries during his tenure. Subsequently, Dr. Kumar was awarded with highly prestigious Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada Visiting Fellowship under Canadian Government Laboratories Program at Swift Current Research and Development Center under Agriculture and Agri-Food Canada scheme. Dr. Kumar has published more than 30 research papers in international and national journals of high repute, and his area of research covers plant genomics and molecular breeding in cereal crops, particularly wheat, which include development of molecular markers, high throughput SNP genotyping, construction of high density genetic or physical maps, physical and radiation hybrid maps, comparative mapping, etc. With this brief introduction, I would like to invite Dr. Sachin Kumar, sir, to start the proceedings. Thank you, sir. Thank you, Gyanika. Good afternoon, everyone. My name is Sachin Kumar. I am an assistant professor in Department of Genetics and Plant Breeding in this university. Today in this session, we have Mr. Abhishek Saini,
who will deliver a lecture on patent attorney. So Mr. Abhishek Saini is a seasoned patent attorney with a passion for helping individuals and organizations protecting their intellectual property. With over 12 years of experience, he has a proven track record for securing patents for a diverse range of areas and the clients. He has successfully guided numerous enterprises, startups, academic institutions, researchers, and individual inventors in securing patents for their creations. He is registered patent agent INPA 1731 and a notified patent facilitator by the Government of India under the Startups Intellectual Property Protection Scheme. Through this initiative, he regularly counsels startups regarding patent drafting and filing processes. His career path includes stint at prominent intellectual property boutique firms, allowing him to hone his skills in the realms of intellectual property. He holds an MTech in biotechnology and a law degree from the prestigious campus Law Center, Delhi University. He is also a practicing advocate and an active member of the Delhi High Court Bar Association. So we welcome Mr. Abhishek Saini in this hall and for in this workshop. So have a big applause for Mr. Abhishek Saini for this session. And with me, my colleague, Dr. Ajay Kumar, is also sitting here as a reporter. He is from Department of Plant Protection. So with this, I invite Mr. Abhishek Saini for delivering his lecture. Sir, please. Good afternoon, everyone. Thank you, Dr. Sachin Kumar ji, and for giving a wonderful introduction about me. Before I begin my presentation, I remember when I was in college, whenever the time used to be at around 4 o'clock, we tend to hurry back to our home, and the last session is usually we used to skip. और मुझे भी कुछ ऐसे ही आप लोग को देख के लग रहा होगा कि यार 4 बज गए हैं और अब तो जाने का टाइम आया, फिर से सर के कहने की वजह से बैठना पड़ रहा है यहाँ पे। तो मैं आप लोग को ज्यादा बोर करने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि आपके लिए जो ये सेशन हो काफी एंगेजिंग हो, काफी इंफॉर्मेटिव हो। और मैं एज ए पेटेंट लॉयर हूँ, एज ए पेटेंट एजेंट। इंडिया में पेटेंट एजेंट्स होते हैं, I don't know people are aware about or not. इंडिया में पेटेंट ऑफिस यूज टू कंडक्ट ए एग्जाम विच इज कॉल्ड पेटेंट एजेंट एग्जाम। ठीक है, जो लोग पेटेंट एजेंट एग्जाम क्लियर करते हैं वो ही पीपल प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर पेटेंट ऑफिस। जैसे कोर्ट में एडवोकेट्स ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे पेटेंट ऑफिस में सिर्फ पेटेंट एजेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई वाज फॉर्चुनेट एनफ टू क्लियर दिस एग्जाम इन 2010 एंड सिंस देन आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ पेटेंट एजेंट। तो जो भी मैंने पिछले 10-12 साल में सीखा मैं कोशिश करूंगा आप लोग के साथ शेयर करूं आने वाली प्रेजेंटेशन में। और जो भी पेटेंट की फाइलिंग है उसको लिखना, उसकी ड्राफ्टिंग है, वो सारी चीजें जो है वो सारी चीजें मैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कवर करूंगा। प्रेजेंटेशन थोड़ी सी एग्जॉस्टिव है बट टाइम कम है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी रैप अप करूं, बट आप लोग थोड़ा सा बियर करिएगा कि उसको मैं कोशिश जरूर करूंगा जल्दी खत्म करने की, बट देखते हैं। बट सेशन इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? स्लाइड। Three majorly I would be covering, my presentation will be comprising of 3 parts. First is the patent drafting, which is also called patent writing. एक skill है जो काफी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के साथ गेन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड सेशन होगा अबाउट पेटेंट फाइलिंग। भाई आपने पेटेंट लिख लिया, अब फाइल कैसे करना है, क्योंकि कई बार एरर्स होते हैं फाइलिंग के दौरान, आप अवॉइड कर सकते हैं। सो आई गोइंग टू टीच यू अबाउट हाउ कैन यू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन। एंड द थर्ड पार्ट वुड बी द एंटायर प्रोसीजर, पूरी लाइफ साइकिल क्या है, पेटेंट कहाँ से शुरू होके कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे वो पेटेंट ग्रांट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेटेंट होता क्या है, मतलब पेटेंट किस लिए दिया जाता है, उसका रैशनेल क्या है।
पेटेंट देने के पीछे जो अभी सर आए थे सेशन से पहले, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी इनिशियल स्लाइड में कहा था कि आप शेयर कर रहे हैं अपनी नॉलेज, और उसकी एक्सचेंज में गवर्नमेंट आपको अवार्ड करता है पेटेंट। और उसका रीजन ये है क्योंकि जब आप नॉलेज शेयर करेंगे तो आगे की नॉलेज मल्टीप्लाई होगी, कंपाउंडिंग होगी नॉलेज की। अगर आप नॉलेज को मल्टीप्लाई इन्फॉर्म शेयर नहीं करेंगे तो कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो यही एक रैशनल है, इसीलिए ताकि आपको अवार्ड पेटेंट के फॉर्म में मिलता है वंस यू शेयर योर इंफॉर्मेशन। सो दैट्स द रैशनल बिहाइंड अ पेटेंट सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड। अब व्हाट्स द सिग्निफिकेंस अबाउट पेटेंट ड्राफ्टिंग? भाई हम लोग अपने सेशंस में आज तक पहले से चीजें लिखते ही आ रहे हैं, पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो लिख ही रहे, राइटिंग लिख रहे हैं। भाई पेटेंट राइटिंग में ऐसा क्या चीज है कि यार उसके लिए एक अलग से सेशन किया जाए? सो पेटेंट जो भी मिलता है उसके पीछे आप खुद पेटेंट एप्लीकेशन के साथ नहीं जाते हैं, आपकी स्पेसिफिकेशन जाती है, और वो किस स्किलफुल तरीके से लिखी होती है उस पर डिपेंड करता है आपके चांसेस आपको पेटेंट मिलने के। So patent office judge your application under the patent law, which is Patent Act 1970। पूरा एक लॉ है जिसके अंदर पूरा पेटेंट सिस्टम कवर होता है। पेटेंट सिस्टम के अंदर ही, उसी एक्ट के अंदर वो सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन की गवर्न करते हैं। So that's why there is a significance of patent drafting altogether. If your patent application is not drafting well, there is a much likelihood कि आपने सारी मेहनत करी लेकिन आपको पेटेंट तो मिला क्योंकि आपने फाइल कर दिया था, पर आपको प्रोटेक्शन पूरी नहीं मिली, कि आपके क्लेम्स पूरी अच्छे तरीके से ड्राफ्टेड नहीं थे, तो आपको जो राइट्स मिले वो पूरे तरीके से नहीं मिले। तो इसलिए एक टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट है वेयर बाय ए टेक्नोलॉजी पार्ट इज इन्वॉल्व एंड द अदर इज अ लीगल पार्ट इज इन्वॉल्व। और उसमें क्या है, आप सेकंड स्लाइड, दिस इज टेक्नो लीगल एक्सपर्टीज। वन टाइम चांस यू कैन नॉट अमेंड द एप्लीकेशन कि भैया ये पहले रह गया था आप इसमें ऐड कर देते हो दोबारा से। यू कैन नॉट टू एंड फ्रो नहीं होता, एक ही बार अपनी स्पेसिफिकेशन आप फाइल करते हैं। सो इट हैज टू बी नीट, कंप्लीट एंड फाइनल, एंड वंस अ पेटेंट इज ग्रांटेड यू कैन नॉट मैनिपुलेट और चेंज द claims of the application. Next slide please. What is basically is specification drafting? Specification drafting is a techno-legal document containing scientific information constituting patent right. Purpose of a specification: to discuss details of the invention of which the protection is sought, define legal boundaries for which the protection is sought, sufficiency of disclosure, and disclosure of an invention in the specification is intent for a person skilled in the art to understand and work invention. So basically ये जो मेरी आगे की भी स्लाइड्स है और जो ये भी है ये थोड़ी डिटेल्ड है। एक्चुअली मैंने बुलेट्स में नहीं लिखा, आई नीड टू मेक इट अ मोर डिस्क्रिप्टिव सो दैट इवन बाय रीडिंग देम यू कैन गेन समथिंग। ऐसा नहीं कि बुलेट में मैं एक लाइन लिख देता, एक हेडिंग लिख देता और मैं आगे बोलता। इट्स बेटर, आई थॉट कि आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बनाया जाए सो दैट इवन इफ यू कैन कैरी दीज स्लाइड्स यू गेट अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि यार पेटेंट ड्राफ्टिंग कर रहे हैं आज, मैंने कुछ बनाया नया, तो इन चीज को अगर शॉर्ट में भी गो थ्रू कर लूंगा तो I can draft a patent application, at least prepare a provisional patent application. ठीक है, next slide please. There are basically two way of filing a patent application. One is a provisional patent and another is a complete specification. When we mean provisional specification, provisional is something when you are working on to something but you haven't finished it. मतलब आप अभी भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी वो पूरे तरीके से फाइनल नहीं हुआ या उसकी फाइनल आउटकम अभी तक नहीं आया, तो उस केस में हम यूजुअली एडवाइस करते हैं टू फाइल अ प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन। जब आपको लगता है कि भाई आपकी एप्लीकेशन पूरी तरीके से, मतलब आपकी इन्वेंशन पूरी तरीके से कंप्लीट है, इन दैट सिनेरियो वी एडवाइस अवर क्लाइंट्स टू डायरेक्टली गो फॉर अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट, these are the details which you are required to furnish in a provisional patent application. So जो भी आपके पास डिटेल है, यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। जो भी आपके पास आपकी रिसर्च की है, आपके फाइंडिंग्स है, आपके एग्जांपल्स हैं, वो सारी चीजें आप उसके अंदर कवर अप करना चाहेंगे, वो सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ती है। बस एक चीज उसमें ये होती है कि आप उसमें क्लेम्स कवर नहीं करते हैं। क्लेम्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन ड्राफ्टिंग कि भाई क्लेम्स होता क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लेम्स, क्योंकि सारी चीजें आपके क्लेम्स डिसाइड करता है कि भाई आपकी स्पेसिफिकेशन में भले ही आपने 10 चीजें लिख दी लेकिन आपने क्लेम किया सिर्फ एक चीज के ऊपर, तो आपको एक ही चीज के ऊपर राइट मिलेगा।
you will not get the right over the entire specification you have furnished, and your specification is also being judged while in the case of infringement suits and all those areas. Next slide, please. So once you have decided to file a provisional application और या provisional patent, कई लोग confuse करते हैं, बोलते हैं मुझे provisional patent file करना है, तो once you file a provisional patent, आपको उसके बाद भी एक complete specification file करनी पड़ती है, for which you get a 12 months time window. अगर आप 12 months के अंदर provisional patent से complete पे नहीं switch on करते, तो eventually आपकी provisional application will result in abandonment और वो आगे proceed नहीं होगी. Next slide. Next. Next. Now we comes to the most important part of the complete specification. I'm going to explain each and every component of a complete specification. So complete specification is a fully and particularly describes the invention and its operation or use and method by which it is performed. Discloses the method of performing the invention which is known to the applicant in which it is entitled to claim protection, and with a claim or set of claims defining the scope of the invention for which the protection is claimed. Make references, deposits the biological material in the International Deposit Authority if applicable, and should be accompanied by a brief abstract. Next slide. So these are the typical component of a patent specification. It starts with the title, जो भी आपकी application का title है, then it followed by a preamble, whereby you will mention that it's a provisional or complete, then followed by a name and address of nationality of the applicant, technical field of the invention, background, prior arts and problems to be solved, object of the invention, summary description of drawings, detailed description, statement of claim, abstract, drawing. So altogether a complete specification does comprise of 12 parts, but broadly it starts from the technical field and ends with a claim followed by the abstracts. Next slide, please. So first of all, what should be the ideal title of a patent application? आपने खोज तो कर लिया, आपने कुछ नया बना लिया, अब आप उसका पेटेंट लिखने वाले हैं, अब आपने पेटेंट लिखने के लिए अपनी ही दिमाग से लगा के एक टाइटल बनाया. कई बार होता है, I come across and inventors used to give their own title. यार ये मैंने नया बनाया, इसमें मैं कुछ अलग से हट के नाम रखूंगा. ऐसे अलग से हट के नाम रखना is not usually allowed while filing a patent application. It has to be descriptive. And it has to be confined to a minimum of 15 words. आप उससे बड़ा भी नहीं रख सकते, छोटा जरूर रख सकते, but it has to be descriptive. जैसे for example, a method of solving so and so, a system comprising so and so, a sort of a thing which is described, जिससे पता चले कि invention है क्या basically. So it has to be like that. The second thing is the technical field of the invention. When I say field of the invention, you have to say कि microbiology field का है या electronics का है या mechanical का है या किसी और फील्ड का है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस यूनिवर्सिटी को डिफाइन करना है, तो आप क्या बोलेंगे? एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक यूपी में है, तो उसी तरीके से लिखेंगे आप फील्ड बैकग्राउंड फील्ड ऑफ द इन्वेंशन. An invention of the field of microbiology, particularly this so and so, more particularly so and so. So that's how you explain the field of the invention. The next thing is the background of the invention. Background is basically you have to explain the problem which enticed you to create this invention. आप कोई भी इन्वेंशन बनाएंगे उसके लिए आपको किसी न किसी प्रॉब्लम से इन्फ्लुएंस किया होगा. मे बी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब गूगल के फाउंडर से सर्जे ब्रिन और लैरी पेज, उनसे पूछा गया यार आपने सर्च इंजन बनाया, कहते हमें जब उस टाइम हम सर्च करते थे तो हमारे रिजल्ट्स बड़े बेकार आते थे, तो इस चीज से हम इतने परेशान हो गए थे कि हमने थक हार के सोच लिया कि बस हमें सर्च इंजन ही बनाना है. तो they end up making Google. So the problem was you are not able to find the results during the search, and for the which they created search engine called Google, which is world over known for the good Google search results. तो यही चीज है, इसमें बैकग्राउंड में भी आपको अपनी प्रॉब्लम्स अच्छे से डिफाइन करनी है कि भाई ये चीजें थी जिससे इन्वेंटर को मोटिवेट करा बनाने के लिए, करने के लिए. वो सारी चीजें आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में, क्रिस्प में बैकग्राउंड में लिखनी है. उसके अलावा जो उसमें डिसएडवांटेजेस थे वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है. सो
ये सारी चीजें, और उसके अलावा अगर आपको प्रायर आर्ट्स कुछ पता है, तो मतलब कोई पेटेंट्स पता है आपको, तो उनकी साइटेशन आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड के अंदर कर सकते हैं। The next thing is the object of the invention. Objects is basically the objective which has derived you to perform the. So most of the things which you have explained in the background can be enticing you to act as an object of the invention. So you can write a brief 2 or 3 lines as to this, as the object of the invention is to solve this so and so problem, on particular problem which you are solving. Next. After you have written background and objects, the third and important thing is the summary of the invention. With the summary, you need to summarize your invention. There is no particular word limits for it. You can have to include all the essential things of your invention which you think is new and which is not known already in the prior arts. So you can write a brief summary about all those things, and it has to be, if you have advantages, you can sum up with a brief advantage of your invention there in the summary section. Next. The next thing which is most important is the drawings. Many a times you require drawings to explain your invention, and without drawing it becomes literally difficult for inventor or any person skilled in the art to understand the invention. So for that, you need to include the drawings. For drawings, there is a different section altogether, whereby first of all, you need to explain, provide a brief description about the drawings. So you can include a brief description about the drawings as to this particular figure number so and so is related to so and all those things. In that way, you can write a just brief 2 or 3 lines as a description about the drawings. The third thing is the detailed description of the invention. Detailed description is the part with which all your claims would be cross-checked and verified. The examiner, while examining your application, will look out for the base कि भाई जो चीजें आप क्लेम में लिख रहे हैं उनका कोई बेस आपकी स्पेसिफिकेशन में है या नहीं है. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने क्लेम्स में कुछ ज्यादा चीजें लिख दी और आपने डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा. तो इसीलिए डिटेल डिस्क्रिप्शन इज एसेंशियल पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए स्पेसिफिकेशन. Whenever the examiner raises any objections, it need to be supported by the detailed description part. So you need to include all those details which are readily available for you. It could be examples. If you have certain examples, you have carried out any experimental experiments, you can put in experimental details so as to you can overcome the objections in certain other sections which can be raised in a later stage. तो जितनी भी आपके पास चीजें हैं और जो आपको लगता है कि एसेंशियल है, वो आप इसमें डाल सकते हैं और डालिए. बट हाँ, इतनी भी ज्यादा मत डालिए कि आपको सब कुछ ही सारी चीजें रिवील हो जाए. You have to be, that's why the role of a patent agent do come into कि they know what to include and what to exclude. तो यहाँ पे वो सारी चीजें हैं और उन चीजों को ध्यान में रख के आपको चीजें कवर करनी. Many a times your invention may include biological material. A biological material could be a microorganism which you have used in your invention. So as per the Indian Patent Act, you are required to deposit the biological material. कोई भी आप biological material आप use कर रहे हैं तो आपको biological deposit authority है यहाँ पे, चंडीगढ़ में है यहाँ पे, मतलब नॉर्थ इंडिया में. So you are required to submit those and you can file a reference for that. And particularly for biotechnological inventions, particularly. And apart from that, you are also required to obtain National Biodiversity Board का एक approval होता है if you have used any biodiversity material in your invention. So prior to filing it, आपको वहाँ से NOC लेनी पड़ती है डिपार्टमेंट से कि भाई आपने बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से कि आपने ये मटेरियल यूज किया है, तो आपको वो नो ऑब्जेक्शन दे देते हैं. इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इट. नेक्स्ट. This is a sample drawing. You are required to label your drawings properly. You are not required to put extraneous details. मतलब आपको सारी चीजें explain करने की जरूरत नहीं होती है patent drawings में. इस तरीके की आपको पेटेंट ड्राइंग्स बनानी पड़ती है whereby आप इंडिविजुअल कंपोनेंट को न्यूमेरिक से आप रिफर करते हैं और इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग रेफरेंस आप स्पेसिफिकेशन में मेंशन करते हैं, so that it becomes easier for the examiner to understand. और यही रेफरेंस न्यूमरल आप क्लेम्स भी जब ड्राफ्ट करेंगे उसमें भी आप रिफर करेंगे if you are. So these are basically being more or less part of a mechanical based invention, जहाँ पे कहीं मशीन बनाई है किसी ने,
कोई नया इंजन बनाया है तो उसके पार्ट्स कैसे काम करते हैं, कैसे रोटेट करते हैं, तो यू नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट. फॉर दैट यू रिक्वायर अ डिटेल्ड ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हैव अ डिफिकल्ट हैज अ separate sort of a style for while filing a patent application. Unless and until there is a flow chart, you are not allowed to make any descriptive detail in the drawings. अगर कोई flow chart है, then it's an exception. Otherwise, you are not allowed to mention much descriptive detail in the drawings. मतलब लेबल करके एरो करके आप लिख रहे हैं, आप एरो करिए, नंबरिंग लिखिए और उस नंबर को आप रेफर करिए स्पेसिफिकेशन के अंदर. नेक्स्ट, जब आप दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ पेटेंट स्पेसिफिक ड्राइंग पेज. देयर इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑल टुगेदर. On the left hand corner, you have to write the name of the applicant, and the next on the right hand corner you have to mention the page number, and below there is the person need to sign it. If you are engaging an attorney, the attorney will be signing it. If you are filing it in your own personal capacity, then you yourself would be signing it. Next. Now the abstract. The abstract is basically a brief summary which defines your invention. Basically, while carrying out a patent search, you first of all go through the title and the abstract. So the purpose of the abstract is to have all the essential component of the invention being summarized in around 150 words or somewhere so. So an application is actually जब finish होती है claims के बाद आपको एक abstract submit करना पड़ता है. Abstract is basically a brief summary about it, and there is this typical style of writing an abstract which starts with a difficult, the present invention relates to so and so, and whereby after that we explain all the embodiments briefly. The abstract is also being followed by a number of a drawing. If you have figures there, you can mention a drawing number or figure number, or actually place a drawing also below it. Next slide. Next. Claims. Claims is the most वहीं से claims पीछे. Yeah, so here is where is the most important part of the claim. अब आपने क्या किया, आपने बता दिया कि भाई ये सारी जगह मेरी है ना. आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई खेत लिया, फॉर एग्जांपल कोई जमीन लिया, एग्रीकल्चर लैंड ली, आपने कहा यहाँ से यहाँ तक मेरी है. कैसे पता चलेगा आपकी अपनी? उसके लिए जब तक आप अपनी कोई बाउंड्री नहीं बनाएंगे तब तक आप डिमार्केट नहीं कर सकते कि ये एरिया मेरा है या उनका है. ऐसे कहना कि ये सारा मेरा है या ये यहाँ तक मेरा है, ऐसे नहीं चलेगा. सो जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो, उसके बाद जब आपने अपनी इन्वेंशन एक्सप्लेन कर दी, उसके बाद उसको डिमार्केट करना है कि भाई क्या क्या चीज आप ले रहे हैं, क्या क्या आपकी प्रोटेक्शन है. तो उसके लिए ही सारी चीजें जो होती है वो क्लेम्स के अंदर आती है, और क्लेम्स ही पेटेंट ऑफिस एग्जामिन करता है. प्राइमरीली क्लेम्स चेक करेगा, और क्लेम का बेस आपकी स्पेसिफिकेशन में चेक करेगा कि भाई जो आप क्लेम कर रहे हो, जो जो चीजें आप ले रहे हो, उसका बेस स्पेसिफिकेशन के अंदर है या नहीं है. अगर उसका बेस स्पेसिफिकेशन में अंदर है तो वेल एंड गुड, इट वुड बी थ्रू. if your application is able to meet other guidelines or other objections which have been maybe quoted in the examination report. So that's what the importance of claims is. So I would just read it out slowly and steadily just so as to make you understand about it. A claim is a statement of technical facts expressed in legal terms defining the scope of the invention sought to be protected. Okay. No exclusivity is obtained for any matter described in the complete specification unless it is claimed in the claim. Okay. What is not claimed in the claim stand disclaimed and open to public use even if the matter is disclosed in the description. Claims define the boundary of the legal protection sought by the patentee and from a protective fence from the invention which is defined by the words and phrases in the claims. So just to show you how important the claim is within a patent application, and next slide please. The claim shall define the scope of the invention with conciseness, preciseness, and accuracy, so that they may not be an exact, so they may know the exact boundary into which they should not trespass. Claims define
the contours of right if and when a patent is granted for an invention. Hence, claims are the most critical part of the patent application. In a complete specification, the description is followed by claims. Okay. So this is just one to two what I would like to highlight, that what is the importance of claims in a patent specification. Unity of invention and clarity of the claims. You are allowed to file a one application for a one invention. You cannot club 2-3 invention and file a within the one application. आप ऐसा नहीं 2-3 इन्वेंशन एक साथ फाइल कर दें और एक ही के साथ उसी के साथ ही एक ही एप्लीकेशन में सारी चीजें ले लें. तो यही मेरी वो यूनिटी ऑफ इन्वेंशन एंड क्लैरिटी ऑफ द क्लेम्स यही है. पेटेंट ऑफिस आल्सो यूज्ड टू लुक आउट फॉर कि आपने मल्टीपल इन्वेंशंस तो नहीं करा रखी. For that, they will ask you to file a divisional application कि भाई इसको अलग करो, ये इसका स्कोप broaden हो रहा है. They do not fall within the same scope of invention. Next. ये भी वही है लगभग जो चीजें अभी हमने कही. The claim should not be too broad to embrace more than what applicant has in fact invented. Claim which is too broad may encroach upon the subject matter which is in public domain or belongs to other. However, a claim may not be too narrow, and because such a claim would not be sufficient effective against potential infringement. An infringement would go scot-free if the claims were too narrow, and hence the full benefit of the invention may not accrue to the inventor. Having many claims where each claim has a different scope allow the applicant to have a legal title to different aspects of the invention. A good drafting may begin with broad claims and develop toward claims that are narrows into the scope. Next slide. So next kar lo. So this is a typical example of what should be a claim should be. A claim should have a preamble, it should have a transition phase and has a body. With preamble, what do I mean is introductory phase. With the introductory phase is with the introductory phase followed by a transition phase. Transition phrase could be example comprising, including, consisting essentially of. Next slide. The first claim is always the independent claim followed by the dependent claim, which is also known as principal claim. It should clearly define the essential and novel features of the most preferred embodiment of the process product that constitutes the invention. The claim may be properly characterized with respect to prior art. At time, in case of mechanical invention, the examiners require you to characterize the claim. Where by the characterization, I mean you need to disclaim the things which is in the prior art and the things which are not in the, which are known. Next slide. Then there are dependent claims that derives the antecedents from an independent claim and read into the features of the independent claim and may contain additional and non-essential features. Next slide. So this is a typical example of what a claim is altogether. It will give you a sense as to you will be able to understand कि यार ये claims इतनी देर से बोल रहे हैं 2-3 स्लाइडें पढ़वा दी ये है क्या मतलब claims है और कैसे करते कैसे हैं. तो ये उसका एक typical example है एक novel तरीके से. Everyone is having mobile phone आजकल सबके पास है उसी का एक example मैंने लिया है बड़ा ही layman terminology में. A mobile phone comprising preamble आ गया mobile phone और जो आगे ट्रांजिशनरी फेज आ गया कंप्राइजिंग. नेक्स्ट वो पहले हाँ तो वो आ गया टच स्क्रीन डिस्प्ले प्रोसेसर ए कैमरा ए माइक्रोफोन है ना. मोबाइल फोन कंप्राइजिंग एक मोबाइल फोन है जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है. द मोबाइल फोन एज क्लेम्ड इन क्लेम 1 फर्दर कंप्राइजिंग अ फिंगरप्रिंट सेंसर. सो दिस इज अ डिपेंडेंट क्लेम सो विच इज एसेंशियली डिपेंडेंट अपॉन द मेन क्लेम. तो आप इस तरीके से एक एग्जांपल है इस तरीके से आप क्लेम्स कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं सीख सकते हैं. और ये एक डिपेंडेंट क्लेम का एग्जांपल है कि भाई जो भी आपने चीजें फर्स्ट क्लेम में लिखी आप उसी को रेफरेंस लेके और जो भी चीजें ब्रॉड उसको करती हैं वो आप डिपेंडेंट क्लेम के अंदर फाइल करते हैं. सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट पेटेंट ड्राफ्टिंग ऑल टुगेदर. नेक्स्ट स्लाइड.
Now we would be switching on to patent filing part. I mean, till then I was explaining you about what a patent writing is. Patent writing is patent drafting, and what are the most important parts of a patent specification. I've tried to cover most of the things in brief. If you want, you can go through these slides again and can get a fair bit of idea about it and get a knowledge about it. What can you, what, how you can draft your patent application. The next thing is how to file a patent application. While for a patent filing application, most of the patent application nowadays are filed electronically. Gone are the days when we used to take a printout and submit before the patent office. आप कहीं पे भी बैठ के कहीं से भी आजकल पेटेंट फाइलिंग कर सकते हैं, और ये एक वेबसाइट है पेटेंट ई फाइलिंग मॉड्यूल. इसमें आप जाके अपने लॉगिन आईडी बना सकते हैं. The moment you create a login ID and password, next slide, you will get a home page something like this, whereby you have an option to select the form and begin your patent filing. Next slide. This is a typical form which you are required to file while submitting a patent application. ये एक typical form है. आजकल electronic form generate होते हैं, और simultaneously आपको PDFs भी submit करनी पड़ती है. So within this form you need to furnish all the details. मतलब वो सारी details आपको इसमें furnish करनी पड़ती है. अब आता है कि भाई फॉर्म्स वगैरह भी तो होते होंगे पेटेंट फाइल करने, यार है खाली वो डिटेल डालने से क्या होगा. सो दीज आर द टिपिकल फॉर्म्स व्हिच आर इन्वॉल्वड व्हाइल फाइलिंग अ पेटेंट एप्लीकेशन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द फॉर्म 1, which is being application for the grant of patent. The second is form 2, which is essentially the specification. जो भी आपकी provisional specification है या complete specification है, it is to be accompanied by form 2. Then there is a form 3. Form 3 is a statement and undertaking, whereby you give an undertaking that if you are going to file any patent application outside India, you are going to inform the patent office. Then there is a form 5, declaration as to inventorship. And there is a form 8, if you are seeking any fee benefit from the patent office, then you are required to submit form 28, whereby you would be adducing the proofs that you fall under educational institute, startup, MSME, or anything similar to it. Then there are 2 additional forms, form 9 and form 18, which are required to be submitted. Either you can find it at the time of filing, or you can do it at a later stage. The significance is they may lead into patent publication, and the another is examination. Next slide. These are the essential documents you need to furnish. Once you fill that particular form, you are here required to submit all the document in a PDFs. Next slide. Next. Now the thing is, this is another important slide, and you all will relate to it. The reason being expedited examination. होता क्या था, जब मैं बताता हूँ, जब हम लोगों ने पेटेंट फाइलिंग स्टार्ट करी थी, उस टाइम पेटेंट मिलने में करीबन 2 से 3 साल एवरेज लगते थे, या कई बार 4-4, 5-5 साल लगते थे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजन लेके आया, भाई 2016 में स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया. अब स्टार्टअप्स ने कहा साहब हम पेटेंट तो फाइल कर देते, लेकिन पेटेंट मिलता है 2-3 साल में, तब तक तो हमारा स्टार्टअप टाई फुश हो जाएगा. तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार उन लोगों के लिए आप क्या करो, एक प्रोविजन लेके आया कि भाई आप जल्दी से पेटेंट ग्रांट करो, जल्दी से, द मूवमेंट आई से जल्दी से करो कि उसको 1 साल के अंदर डिस्पोज ऑफ करो, 1 साल के अंदर पेटेंट ग्रांट करो. तो ये पर्टिकुलर स्लाइड उसी लिए है कि कुछ लोगों को आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पेटेंट ऑफिस अलाउ कर रहा है कि दे कैन फाइल एन एक्सपेडाइटेड पेटेंट एप्लीकेशन, whereby they will be able to obtain patent registration certificate within a year. हमारे भी कई क्लाइंट्स हैं whereby we are able to obtain patent certificate within a year. 1 साल के अंदर पेटेंट मिलता है. But there are only for these certain categories or these certain people जिनकी हम बात करें. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्टार्टअप. इफ यू फॉल अंडर स्टार्टअप, for startup there is a startup recognition certificate which is given by the DIPP, or you are a small entity for which you have a MSME certificate, or if you are a female applicant. So all those lovely ladies sitting out here, अगर आप अपना पेटेंट फाइल करते हैं तो you have an option to get your patent expedited, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रहा है कि अगर कोई भी फीमेल एप्लीकेंट पेटेंट फाइल करेगा तो उसको पेटेंट जल्दी मिलेगा. The other thing is the research institutes, basically government funded, the central universities. Apart from it, there are central universities and state universities. They are also allowed to obtain a patent within a span of 1 year. And the other is the
पीपल हु ऑब्टेन फॉर इंडियन ISR, इंडियन सर्च अथॉरिटी, अगर वो ऑब्टेन करते हैं PCT इंटरनेशनल एप्लीकेशन में, दे आल्सो हैव एन ऑप्शन. नेक्स्ट स्लाइड. The thing is, this is an important slide, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन अराइज होता है, यार पैसे कितने लगते हैं पेटेंट में, है ना, कितने पैसे लगेंगे, तो वही सारी चीजें इस पे सम अप की है. हाँ, अभी ताली बजाने के लिए बोलूंगा मैं. अभी बोलूंगा मैं, कोई बात नहीं. 5-10 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा सारा कवर अप कर दूं. ये इनको सस्ती लग रही है पेटेंट फाइलिंग. पेटेंट फाइलिंग सस्ती लग नहीं सर, कोई बात नहीं. तो देखिए, पेटेंट फाइलिंग की फीस वहां पे लिखी हुई है 1600 है. मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ फॉल अंडर 1600 कैटेगरी एक्सेप्ट द बिग एंटरप्राइजेस फॉर विच द फीस इज 8000 रुपीज. और पेटेंट एप्लीकेशन में होता क्या है, देखिए, पर पेज फीस लगती है. अगर आपकी एप्लीकेशन 30 पेज से ऊपर है तो पर पेज आपको फीस लगेगी एडिशनल. उसके अलावा अगर आपके नंबर ऑफ क्लेम्स 10 से ज्यादा है तो उसके लिए भी आपको पर क्लेम आपको फीस एडिशनल देनी पड़ती है. देयर इज अ फीस फॉर पब्लिकेशन विच इज ऑप्शनल. There is for which the fees is 2,500 rupees. There is a fees for examination. अब आप कोई भी एप्लीकेशन पेटेंट ऑफिस में फाइल करते हैं, ये मत सोचिए कि वो एग्जामिन होगा ही होगा. जब तक आप एग्जामिनेशन की फीस जमा नहीं करेंगे तब तक आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन नहीं होगी. और जो मैं बोल रहा हूँ आपसे एक्सपेडाइटेड करने के लिए, तो गवर्नमेंट भी थोड़ी चालाक है, इतनी आसानी से एक्सपेडाइट नहीं करेगी. उसकी फीस पहले से ज्यादा ले रही है. जो नॉर्मल है 4000 रुपये, वो लेती है 8000 रुपये. कंपनी के केस में 60,000 तक जाती है फीस. नेक्स्ट. पीपल डू टॉक अबाउट, आप में से कई लोग भी कहते हैं यार पेटेंट तो इंडिया में तो हो गया, इंटरनेशनल भी तो होता है कुछ. तो मैं आपको बता दूं, पेटेंट्स आर बेसिकली टेरिटोरियल राइट. दे डू नॉट, अगर आपने इंडिया में पेटेंट लिया, ऐसा नहीं कि आपको यूएस में भी मिल जाएगा. अगर आपको यूएस में पेटेंट चाहिए तो आपको यूएस में अलग से फाइल करना पड़ेगा. सो अगली 2 स्लाइडों में मैं यही चीज कवर करूंगा कि भाई आप इंटरनेशनल पेटेंट कैसे फाइल कर सकते हैं, हाउ कैन यू गो फॉर इट एंड हाउ कैन यू प्लान फॉर इट. सो बस 12 महीने का टाइम होता है इंटरनेशनल PCT एप्लीकेशन फाइल करने का. PCT एप्लीकेशन आप फाइल करते हो, उसके बाद आपके दरवाजे खुल जाते हैं 31 महीनों के, 30 महीनों के किसी और मेंबर कंट्री में फाइल करने के. This is a typical roadmap for filing an individual application. You find a Paris Convention application whereby you can directly enter into the country of interest within 12 months, or you can file your application in member countries after 30 or 31 months as the country has ratified their law. Next. This is a typical fee which is international filing fee. Next slide. ये पेटेंट प्रोसीजर है और आपके पास ऑप्शन है प्रोविजनल. ये एक पूरी चार्ट है, आप समझना चाहे कि क्या चीज है, कहां से कहां पहुंच रहे हैं हम, तो इसमें आप देख सकते हैं. आपके पास 2 ऑप्शन है, आप या तो फिर प्रोविजनल एप्लीकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं या कंप्लीट एप्लीकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं. द मोमेंट यू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन पब्लिश होती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ वेट. अगर आप चाहें तो उसको आगे पब्लिकेशन करा सकते हैं. फॉर दैट यू नीड टू पे एन एडिशनल फीस ऑफ 2500 rupees. This form 9. Then you are required to submit form 18 for request for examination. After that, your application will be examined. You are required to submit a reply to the examination report within a span of 6 months. After that, they will either allow your patent or they raise objection. If they have raised objection, you have a period of 6 months to raise objection. After they will hear concern control, allow your application, or secondly refuse. Next slide. पेटेंट पब्लिकेशन, many time people do come across, मेरे से भी पूछते हैं यार पेटेंट पब्लिकेशन, हमने पहले वाली स्टेज में बात की, पेटेंट पब्लिकेशन होता क्या है, कौन कहाँ छपता है, ये कौन से अखबार में छपता है, ये होता क्या पेटेंट पब्लिकेशन. So basically patent publication is a weekly journal which is being uploaded on the site of the patent office, whereby all the applications get published are particular. So application of other been recently published. अभी तक कर रहे थे वो हम सिर्फ इसी चीज के लिए कर रहे थे, जो है पेटेंट सर्टिफिकेट. That's how a typical patent certificate looks like. We have recently obtained it for one of our clients, and this is the letter which is accompanied by along with the patent certificate. ये वो एक लम्हा होता है जिसके लिए इन्वेंटरी मेहनत करता है.
करता है, सब चीज़ मिलता है, उसके बाद ये मिलता है तो स्टेशन फॉर्मेलिटीज़ वो अलग से चीज़ होती है। 47 है, those things, I'm not going to include those things. This is most certainly the last slide, and after that you can definitely clap your hands. Next slide, please. Now, I'm open to the questions. If any of you have any doubt, I hope you have. In case you don't have, then it's okay. You can pretty much note down my mobile number or email address. You can directly contact me if you have any issues regarding patent drafting, filing, or anything related to patent. So we can take one or two questions if you have. I don't think you have. Oh, yes, there's one. Mhm. 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 देखिए अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि प्रोविजनल का कंसेप्ट क्या है बेसिकली। प्रोविजनल का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया, पेटेंट एक्ट में प्रोविजन इसीलिए है उसके लिए, बिकॉज देयर आर टाइम्स व्हेन मल्टीपल पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल, राइट? नाउ you have half, the other person has also created half of the invention. Now the person who files the provisional application first will get the right, while the other one may have mutually exclusively working over the separate invention altogether will not get it right. So that's the importance of filing a provisional application. That's why I usually advise people, अगर आपके दिमाग में कोई भी idea है and you are working on to it, don't hesitate, don't delay, because delay will cost you lot more. तो इसीलिए जो भी चीजें हैं आप पहले फाइल करिए, और एक प्रायोरिटी एक कंसेप्ट होता है, आई कैन टेल यू, एंड प्रायोरिटीज यूजुअली जो भी पेटेंट सिस्टम में है, जो भी चीजें कैलकुलेट होती है प्रायोरिटी डेट से होती है, एंड वंस यू फाइल अ प्रोविजनल एप्लीकेशन यू गेट अ प्रायोरिटी डेट, and after that every your other all rights starts from that particular date. So with this, we thank Mr. Abhishek for the wonderful lecture. And I will return for it. So we are not taking your much time, and we will move forward for the next session and complete the formalities. So, thank you, Abhishek Saini ji, who has traveled from Ghaziabad and given his time. बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफी बच्चे अब थक गए हैं और उनको एक्चुअली जो प्रैक्टिकल पार्ट है यही था जो अभिषेक जी ने बताया, जिसको हमें नीड है, और वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी मस्ट नो। जब हम हायर स्टडीज में जाएंगे, रिसर्च में कुछ काम करेंगे, तो इसी बात की जरूरत है। दैट वाज एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेनिंग बाय डॉक्टर अभिषेक जी। तो सिंसियरली नहीं ले रहे थे बच्चे, लेकिन इट वाज रिक्वायर्ड। तो मेरी एक रिक्वेस्ट तो ये है कि अभी केवल 20-25 मिनट का लेक्चर हो रहा होगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने बच्चे हैं वो थोड़ा आगे आ जाएं, उसके बाद ध्यान से सुने। बाकी आराम करने का तो बहुत सा टाइम है। आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट भी आपके साथ बैठे हैं, उन्होंने भी ट्रैवल किया है। तो मुझे लगता है कि वी शुड पे एनफ अटेंशन एंड ऑनर टू आवर एक्सपर्ट, दोज़ आर टेकिंग पेन, और उनके पास, सबके पास बहुत काम होता है, उसके बाद वो समय देते हैं, टाइम देते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि उस नॉलेज को डिसेमिनेट कर पाएँ, हमें और आपको ट्रेंड कर पाएँ। तो उनका कोई इसमें लाभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, सिवाय इसके कि दे आर डूइंग सर्विस टू ऑल ऑफ अस। वी मस्ट ऑनर, वी मस्ट
So I am very thankful to Abhishek Saini ji for giving us such a wonderful lecture. और केवल एक बार के कहने पर मैंने कंसर्न दी। आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर नितिन गर्ग के वो शायद फ्रेंड या स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा कि नहीं सर मैं कह दूंगा। ये इनके पास टाइम नहीं था, फिर भी he has honored our word and given his consent. So I am really thankful to you. डॉक्टर सचिन अभी लगातार ही इज वेरी बिजी रिसर्चर इन दिस यूनिवर्सिटी। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, मेरी यंग फैकल्टी और आई हैव नो हेजिटेशन टू कन्वे दैट इन CCS University campus Meerut, he is the top post researcher, practical research. और इस बात को समझने के लिए आप उनकी प्रोफाइल देखो और उतने ही हम्बल हैं, सिखाने में रहते हैं, अपना टाइम देते हैं, किसी तरह की बनावट नहीं है, यंग है। और आप सबको जब भी आप जाओगे देन विल अंडरस्टैंड कि मेरे शब्दों का क्या मतलब है। अभी भी वो अपने लैब में और फील्ड में थे, बीच में कहा कि सर मुझे बता देना। उसके बावजूद तो सुबह से मैंने देखा कि ही इज कंटिन्यूअसली कमिंग एंड गोइंग मेनी टाइम टू लैब एंड फील्ड। और टाइम से अपना जो रोल दिया था हमने प्रिसाइड ओवर दिस टेक्निकल सेशन, उसको उन्होंने पूरा टाइम दिया। एंड डॉक्टर आशु त्यागी हिज फ्रॉम सीट टेक्नोलॉजी इज आल्सो वेरी सिंसियर। जो बच्चे सीट साइंस के उनको पता होगा या बॉटनी के हैं, तो पूरे प्रोग्राम में सेव आउट करने में, मेहनत करने में कल से लगभग पूरे टाइम मेरे साथ में है और बहुत ही हम्बल, बहुत ही सिंसियर है और उन्होंने अपना टाइम दिया। सो आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल। और इस स्टेज में मैं ज्ञानिका शुक्ला को भी बहुत अपना थैंक्स कन्वे करना चाहूँगा कंटिन्यूअसली। ये भी कल से अपना पूरा प्रोग्राम को सेव आउट करने में लगी हैं और काम कर रही हैं। So thank you to the dais. Or with this, I request Janika Shukla to please proceed to honor our dais with the token of respect, that is memento and certificate. Thank you, sir. I request Dr. Nitin Garg from Department of Biotechnology to associate with Professor S.S. Gaurav, sir, and felicitate our invited speaker, Mr. Abhishek Saini. Thank you, sir. I request Dr. Vinay Pawar, sir, to associate with Professor S.S. Gaurav, sir, and present a memento and a certificate to our chairperson, Dr. Sachin Kumar, sir. I request Dr. Amardeep Singh, sir, to associate with Professor S.S. Gaurav, sir, and present a memento and a certificate to the reporter of the session, Dr. Ashu Tyagi, sir. Thank you, sir, for doing the honors. Now we are towards the final technical session. Yes, sir. बहुत मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट लीव द हॉल। वी नीड ओनली 20-25 मिनट। हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। उनका छोटा बेबी है, कंटिन्यूअसली वो क्राई कर रहा है, उसके बावजूद भी सिंस मॉर्निंग शी इज वेटिंग आपको ट्रेनिंग के लिए। आप लोग आगे आ जाएं जो सीट खाली है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। एटलीस्ट आपका जो भी आपका व्यवहार है यूट्यूब में परमानेंट लोडेड हो जाएगा। यू आर ऑन लाइव स्ट्रीमिंग, प्लीज टेक केयर। जो भी ये आपका यूट्यूब यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में हमेशा रहेगा। तो जो बच्चे बात कर रहे हैं या जैसा भी कर रहे हैं, दिस इज ए परमानेंट फीचर। ठीक है, तो पेशेंसफुली आप लोग सुने, कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, बात करें। आपके उसके बाद सेशन के बाद टी है और चाय लेने के बाद फिर अपने सर्टिफिकेट लेकर के जाएं। कोई क्वेरी हो एक्सपर्ट को या मुझे मेल करें, तो ये क्वेरी विल बी एड्रेस्ड।
और again I am repeating, your all behavior will be recorded in live streaming. तो ठीक है, thank you to all. Thank you, sir. Now, the final technical session would be chaired by Dr. Vinay Pawar, sir, from Department of Genetics and Plant Breeding. And the reporter of this particular session are Dr. Nitin Garg, sir, and Ms. Urmila from Department of Biotechnology, CCS University. The invited speaker of the final session is Ms. Tanupriya. I request the chairperson, reporters, and invited speaker to take their seats on the dais, please. Thank you, sir. Now, before starting the session, I would like to give a brief introduction about our chairperson of the particular session. Dr. Vinay Pawar is an assistant professor in the Department of Genetics and Plant Breeding, CCS University. Dr. Pawar is a plant biologist with over 12 years of international research expertise in deciphering mechanism of plant microbe interactions and improving agronomic performance of crop plants for enhancing yield. Made major contributions in advancing basic and applied plant sciences by developing various state-of-the-art technologies and concepts used for identifying novel genetic targets and modulating beneficial plant traits to accelerate crop variety development. The area of expertise of Dr. Kumar includes plant molecular biology, RNAi, disease diagnostics, plant pathology, genetic engineering, plant virology, and functional genomics. He has published many research papers in high impact journals. With these words, I request Dr. Pamar to start the proceedings of the final session. Thank you, Ganga. I must say, a very good anchoring by you, and a very good afternoon to all of you. I hope that you can keep your patience as enthusiastically as you have been keeping since morning. Okay. So, first of all, I would like our master speaker of this evening, okay, Dr. Tanu, to our main reporters and all my colleagues who are present over here. So before I invite Dr. Tanu, I would just like to say a few words about her. So Dr. Tanu is a proficient patent and trademark attorney and advocate with more than 15 years of experience in research, teaching, and legal law. So as Dr. Abhishek said, before you have to become a patent agent, you have to qualify the exams. So she qualified the exams in 2010. So she specializes in intellectual property matters involving innovation intensive industries such as life sciences, diagnostics, agrotechnology, oil, gas, environment technologies, and energy. So basically, she tried to find in filing, drafting, how to prosecute them, and she helped in all the technical aspects of preparing these kind of, and she also helped her clients to present these patents and patents at various national and international agencies. So I think in her career she has helped more than 1,000 applications, if I'm right. So she has acted on behalf of various range of clients, including entrepreneurs, startups, early stage ventures, universities, organizations, and also multinational companies. And from her topic, what she will be talking about, I think, like how you can secure your ideas, especially patenting in context. So I'm quite sure this lecture will be quite useful to you because anyhow, at the end of the day, if you have something, you'll be filing patents in India itself. Okay. So
With these few words, I would like to invite Dr. Tunu over here to the dais for a presentation. Good afternoon, everyone. That was a nice introduction. Thank you for the welcome. Can we start the presentation? So my title is a comprehensive look at marketing in the Indian context. Most of you must have filed patents, or at least you have learned how to file a patent. You must have invented, all of you, I expect, are researchers. So you must be thinking whether my research file a patent or not. This is what we'll learn. If you are thinking that it is worth patenting or not, every idea need to look up some milestones which the India Act has put up for you. Uh, so we'll learn about patent and patentability. So you have already learned what a patent is. It's a legal right given to the applicant by the government for the invention. Patent is an exclusive and monopoly right. It's a negative right. Negative right means you don't have the exclusive right to use or sell your use your invention, because if your invention is a combination of different patents and one of the patent is with you, for example, I'll take the example of a purse. If you patent a purse in which something is very innovative and inventive, but still it will have a zipper, and for the zipper something someone else has patented, so you cannot exclusively manufacture and sell it until and unless you take the license for that zipper. So it is a negative right, but you can protect your invention so that nobody else can manufacture that purse and sell it. So it's a negative right, in which you can stop others, but it's not does not gives you the monopoly to do anything with your patent. So it's a territorial right, as already been said from the morning. There is no concept of international patents. However, you must all be thinking that just now Mr. Abhishek said that there are international applications. So how come there is no concept of international patents? We'll learn later on. It's for limited period of time. In India, it's for 20 years. Next is the patentability criteria. Most of you must be aware that innovativeness, three I's, innovativeness, inventive step, and the industrial application. So it should be new. Apart from new, it should be non-obvious. Like you must say, "Oh, is it possible?" So that is non-obviousness, and then it must be useful at the industrial level. And most of the important thing is that it should be disclosed in a sufficient manner, not too much, not too less. Now, why do we file patents? To enjoy the monopoly through exclusive rights. Okay. So next is to encourage in public interest. If you will not file the patent, you will not inculcate interest in public. Like if you file a patent, the people are aware that you have created something. Then they will try to invent something more interesting, more innovative onto that. If you'll keep it a secret, nobody will be knowing this has already been invented. They will again start with zero. So that doesn't make sense. And moreover, is to encourage the disclosure. You will not get anything. You disclose your complete specification, but you don't get the legal right. You have already disclosed your information. Anybody can. If you are not getting out of this, if you are not able to protect it, why will you disclose it? You don't disclose it. So it encourages the disclosure. And in lieu of disclosure, you get the right for 20 years. What are the benefits of patent? It has been told reduction in competitors, revenue generation, you can license it, you can sell it. Then next is confidence for venture capitalists, like they are more of sure that invention is patentable, so it is of more worth in your thing. Increases your value, like you can see your university is growing patents, good amount of patents.
So obviously its will and its value is increasing. Now we'll focus more on what is patentable. We have already learned how to draft an application, what is patent, how it is invented or not, it includes innovativeness or not. But what is patentable? Can I patent my invention? Most of the inventions are patentable, but still Indian government says there are few things which are not patentable. If your invention falls in those categories, won't be able to patent it, whether it's innovative, inventive, and industrial application. So, patentable is apparatus, article, machine, components, pharmaceutical products, compositions, processes, or art of manufacturing, but you cannot patent essential biological processes as process of reproduction of humans and animals. We'll learn more about what is not patentable. Uh, these are two main sections, Section 3 and Section 120 of Atomic Energy Act. So if your invention falls under any under Atomic Energy Act, like the hard metals like uranium, beryllium, these metals, it won't be able to get your patent, whether your invention is inventive, innovative, but still will not get the patent. And then we'll move to section 3. There are various first and foremost is section 3, which says that if somebody says I have made a machine with 100% performance, that's against the well-established natural law, which says if a machine is working, friction and other forces working. So you can never make a machine with 100% performance. If you go against these laws, then you cannot patent that. Then there is section 3B. If you have made a gambling machine, for example, it's against the public morality. So you order and morality, because if you will manufacture gambling machines in more of the numbers, there will be kiosk all over. And, so these are not patentable. Next is make weapons of mass destruction, for example, bio weapons that causes prejudice to human health and plant life. So these are also not patentable. This is an important section, section 3C, which says discovery of microorganisms is not patentable. However, if you genetic engineer the microorganisms, those are patentable. So, even if these sections are there, which say exclusive these inventions, but still, you will modify your invention according to these laws. You will be able to patent the non-patentable thing. This is one of the most important sections, 3D. If you have ever filed a patent, ever prosecuted it, you will see that in more than 80 to 90% applications, this section comes up as an objection. New form of a substance, such as crystalline form, etc., are not patentable. Second is new use of a known compound or new use of a known process. For example, if I say I have made a well, it's all already patentable. I have made a well which, but something like anything it does this also, but you have not anything else as an inventive step, that is not patentable. New use of a known substance or new use of a known process is not at all patentable. This section CE is also one of the most important sections. Most of the applications is an objection where they say that mere admixture of the aggregation of properties of components is not patentable. For example, if you mix sugar and color, it will give colored water. In water, then you will get a colored sugary water. That's not patentable. If you mix sugar, color in water, but it gives a sour taste.
is the mere arrangement or rearrangement or duplication of known devices. For example, you tie a torch with the bucket, it's not patentable. But if you tie a torch with the bucket in such a form that when you put the bucket down, it's off as soon as the bucket is filled and you lift it, it's on. So that if you have a moving dark, it's helpful. Then it's patentable. Next is section 8, that is method of agriculture or horticulture. For example, crop rotation is not patentable. This is again a very important section for those people who are working in medicine. Uh, Common objection and a very important one which many times proves fatal to your patent application, which says that any medical, surgical, diagnostic, and other treatment of human beings or animals or to increase their economic value is not patentable at all. For example, tumor removal. We also have the detection known the known doctor. So we kept on saying him, don't put the word diagnosis. But she was adamant that it is diagnosis of cancer. And her was rejected. If the control application is negative, but due to the word of diagnostic, the application is rejected. So this is really important to take care of. Next, section 3, animals in whole. If you discover any animal or a plant there, or you make clones of something, these species are microorganisms are excluded since they can be genetically engineered. Essential biological processes, for example, process of reproduction of plants and animals or their propagation, is not patentable. Next slide is say is another section for the people working in mathematical method, business method, algorithm, computer programs per se are not at all patentable in India. Computer programs are patentable in other countries, in few of the countries, but not at all in India. But if you combine the computer program with the hardware, they are patentable. So here comes the experience that you have computer program, how to combine with the hardware, so that it becomes patentable. Business like you are working in research, you make something so that it is now available in precise manner. For example, you the agar or so that if you are working in an industry where the same amount of SDS or commonly it will take a lot of time. It is the same. So, but this is the method of business. So, it becomes non-patentable. Musical artistic work is not patentable under copyright. Section is that a mere scheme, rule, or method of performing mental act, such as method of solving cross. For example, solving in a very innovative way, so that in 10 seconds you can solve Rubik's cube, but still it is not patentable. Next section is presentation of information. For example, presenting the presentations, I have made it with my inventive point of view, with my mind, but still I cannot patent it because it's copyrighted but not patentable. So method of expressing information is not patentable. Next is topography of integrated circuit. For this, we have an act, act of integrated circuit, where you can get it registered and grant, but not the patent. Next is this is another very important section that comes up very frequently in the biology applications, where we use the traditional
knowledge, for example, then they become objectable. But if you are able to prove them that we are not using the traditional knowledge, we are putting an effort into it, so that intellectual property is not that. But you can make a tablet out of haldi, so that along with the wound healing property, it's sweet, it's tastier, it's more comfortable to take, then it's patented. The tablet becomes patentable. So, so much of what is not patentable. So, what is patentable and who all can apply? All of us obviously can apply. All the foreign applications can apply in India for the patent, because patent is a territorial right. So, the foreigners are also first inventors. They can apply, or they can apply their rights. For example, if we are employees of the university, we assign our rights to the university, and then the university becomes the applicant of the patent. Or legal representatives can apply, and the applicants can apply alone, or they can apply jointly. There is no limit. Like it has to be there. There are hundreds of applicants. Now it is shortly about the type of patent applications. In India, we can file an ordinary application. It's already been registered. We can file the complete application. Then, after a few years, you have already prosecuted your ordinary application. It's or not prosecuted. You have modified, for example, in the ordinary application, you made a racket out of carbon fiber, and then after a few years, you made a racket with lighter. Then, what will you do? Idea is also already patented, so it will come out in prior art. Will you file patent of addition, like modification, or if you have already filed multiple applications in your ordinary application, and there comes the objective of invention. So what will you do? You cut down your claims regarding one, or except one except one invention, all of the invention have to be taken. Now, where is the right for? You can always have the right to file a provisional application, where you can file those inventions which have been deleted from your patent application. So next is the international application. So just now I said there is no concept of international patent. So how come this international application? Right, the question arises. There is a confusion. So the thing is, there is international application where you can secure your priority date, and it can be filed as TCT application. So what is TCT application? It is filed at the WIPO or International Bureau, or other centers, and you just say that this is my application, and I would in future file in other territory apart from India. So your priority date in those countries, in other countries, when you will file them, will be taken the same priority date as India. If you are not understanding, I'll explain. If you have filed an application in India today, okay, so within 12, legally, you have to file your patent application, any other jurisdiction, within 12 months. If you are a business person, you every filing in a US, Canada, and other countries, or like in France and other countries, if you are filing, you have to pay their attorney fees, you have to pay the translation, you have to pay their patent fees. Every fees has to be paid. So when the things come in lakhs, you have to rethink: should I file or should I not file? So what you can do is the international application PCP. That takes much lesser amount of money. So what the PCP will do, it will secure the priority date for 30 or 31 months from the date of filing in India. So what you were supposed to do in 1 year, now you are doing 2.5 years. But still your date
will be protected. So that additional 1.5 year, you will get to think whether I should proceed to file in all those countries or not. Is it beneficial? You can practically perform your invention and see what the business response is. And moreover, you can by the time prosecute the application in India, get the examination report with the report, you can analyze whether it's worth patenting in other territories or not. So you can file the international application, but after filing the international application, individually in every country, you have to prosecute applications in country individually. Concept like if you have filed international application, proceed in all other in other countries automatically. So there is no international patent. There is international application. It just secures your patent for much more longer time. I hope it went into. In case if you still have doubts, you can always contact us. Thank you, Dr. Tanu. Indeed, very informative. So, as you must have seen that you must have idea from her, like filing patent, file anything. Okay. So it's not like something I leave off and the next morning I run to Dr. Tanu, please help me to file. So for filing patent, you should have an innovative idea. It should have some quality linked to it. And I'm quite hopeful that from what everybody has gained from these technical sessions, now you must be quite well aware that if you have some very innovative idea, then what should I be doing? What will be my next step then? Okay. Well, these sessions were quite informative. I must confess that it was informative for me also. Like I was not aware like filing patent in India is so cheap because I've been working abroad for most of my career. I joined India just last year only, and filing patent in foreign country is so expensive and it's so lengthy process. So compared to that, I think it's very cheaper, very easy, and we already have so much of good experts who can help you to file these patents. So this was really very good information. So in my career next over here, while I'm working in CCSU, so definitely if I get any opportunity to if I get some do some research or something, definitely I know what I will be doing there. So thank you, Dr. Gaurav, for this for organizing all these good sessions. So with that, if you have any questions, please feel free. This is your time to ask question. Don't hesitate. Now, I think they must be not tired. And they know that they will be leaving in few moments. So, any questions? If not, then thank you, Dr. Tanupriya for this wonderful session. So, thank you, Dias, especially Dr. Tanupriya, IP attorney, IP Vaisai, Gurgaon. And I wanted to convey that she is our bona fide attorney. In last 2 years, we have acquired more than 65 patents. Out of 65, 15 are granted, for which we have been got the fourth position in India. This is only due to the creation मत समझो कि इनको इनका बहुत
वर्क बहुत ज़्यादा है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ बोनाफाइड legal attorney of several central and state universities. So he's very senior in the form of working, in the form of knowledge and intellect. So और बहुत सिंपल है, अगर आप कहीं मेल करेंगे, मैं तो रात में दिन में कभी करता रहता हूँ, बिजी होती है तो तुरंत बेचारी कॉल बैक करती, रिप्लाई करती है। आपको कभी कोई क्वेरी हो तो यू कैन मेक क्वेरी डायरेक्टली टू यू कैन एड्रेस or you can address to me, then I can forward to her. So thank you, Dr. Tanupriya, for your gracious presence and wonderful deliberations. और जो आज हमारे चेयर हैं, डॉक्टर विनय पवार, he is my colleague in the department, and he has been served in USA. मुझे याद नहीं है किस उसमें किया है, लैब में. He is very senior and wonderful worker. CCS में इन्होंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया है, 1-1.5 साल ही हुआ है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा इनका एज ए साइंटिस्ट, बोनाफाइड साइंटिस्ट और बहुत ही अच्छा मोलिकुलर बायोलॉजी में काम है इनके नाम से. यू कैन सर्च द गूगल, अभी मोबाइल है तो आप सर्च कर लो, देन यू कैन अंडरस्टैंड. बड़े बड़े जर्नल हैं, जैसे फ्रंटियर है, इवन की कई बहुत बड़े बड़े ध्यान नहीं है मुझे, बहुत से जर्नल्स के ही इज द एडिटर, एडिटोरियल बोर्ड में है और बहुत हम्बल हैं और बहुत अच्छे रिसर्चर हैं. वी आर रियली, आई कैन से दैट कि ये हमारे ऑनर की बात है कि ही इज माई कोलीग. बहुत आसान नहीं होता कि एक अच्छा वर्कर, बहुत अच्छा साइंटिस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में आके ज्वाइन करे, और वो भी अमेरिका जैसे दुनिया भाग रही है, वहाँ से इन्होंने आए और काम कर रहे हैं, कम सुविधा में काम कर रहे हैं और जुटा रहे हैं और बहुत ही हम्बल तरीके से. So I'm really feeling honored with your presence, Dr. Binay. Thank you for your time and precious deliberations. And we have with us Dr. Nitin. Dr. Nitin Garg has been my PhD student from 2000, I think 9, 10, 11. He was my first batch PhD student. और इन्होंने बहुत दिन तक MIT में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम किया और नोएडा में काम किया. बहुत ही एक्टिव वर्कर रहे. अभी बहुत ही डिग्निफाइड पर्सन है. MIT में थोड़ा-सा उनके वर्क हल्का सा था तो ही हैज लेफ्ट जॉब. और बहुत ही सिंसियरली अभी बायोटेक्नोलॉजी में इस रहे हैं और पूरा जो बैकग्राउंड है, इस पूरी जो आईपी सेल के द्वारा ये बना ऑर्गेनाइज की जा रही है इस पर्टिकुलर वर्कशॉप. इस वर्कशॉप में अगर बिहाइंड द सीन 2 मेजर पर्सन्स मेनली जिनका कंट्रीब्यूशन है, वन इज मिस्टर कुशाग्र हु इज माय ऑफिस फेलो और डॉक्टर नितिन. कंटिन्यू ये दोनों, बाकी और सभी पूरी टीम है, लेकिन रात दिन कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, आई वाज टोटली फ्री. मैंने कुछ नहीं किया, सब इन दोनों ने बहुत मेहनत की है. आई एम रियली अगेन नॉट ओनली ऑनर्ड, आई एम सो लकी दैट सच गुड पर्सन्स आर विद मी कि कुछ भी काम हो तो सिर्फ बताओ तो हैं. सो थैंक टू डॉक्टर नितिन फॉर योर प्रेजेंस, फॉर हार्ड वर्क, फॉर एफिलिएशन, for respect and for your love. And another, Mr. Urmila is here. He's recently joined. His elder brother is doing the department with Dr. His father is a very good friend. And she is also very sincere. Whatever task is given to her is very down to earth. जो टेक्नोलॉजी में जिनको पढ़ रहे होंगे उनको पता है, और जो भी टास्क दिया जाता है कभी मैंने कभी कुछ बोला तो बोलती ही नहीं है ना, तो थोड़ा सा के यस स्टार्ट वर्किंग. So I am again feeling very lucky that such a good student, such a good fellows are with me. I am also very thankful to Dr. Sapila for reporting this. So again thanking, और सब ज़्यादा थैंकिंग तो उन लोगों के लिए है, पूरा हॉल भरा था मॉर्निंग में, मोर देन 250 से ज़्यादा थे. और अब जो लोग बचे हैं they are actually आप सब लोग.
असली असली एक्सप्लेनेशन यही है, हाउ मच पेशेंस यू हैव, हाउ मच रिस्पेक्ट यू हैव टू द एक्सपर्ट, हाउ मच पोटेंशियल यू हैव फॉर लर्निंग, और कितनी आपकी ईगर है, कितनी आपकी हंगर है लर्न करने के लिए, समझने के लिए, और उन सबसे ज़्यादा कि आपको अपने जो बड़े हैं सिखाने आए कि इनके बारे में। आई एम रियली फीलिंग अगेन वेरी ऑनर उन सभी लोगों के लिए जो अभी के लिए भी थोड़ा ऑनर है जो चले गए, आपके लिए सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आप मुझे बहुत आसान नहीं है, अर्ली मॉर्निंग 9:30 बजे से आकर के और फिर खाना खाने के चाय भी नहीं मिली और कंटिन्यूअसली आप लोग बैठे हैं। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स who are here, all the faculty members, all my staff who are here continuously. इसके बाद हम हमारा जो डायस है इसको ऑनर करने के बाद फॉर्मली दिस वर्कशॉप विल बी स्टैंड क्लोज्ड। उसके बाद टी का अरेंजमेंट है, बीच में हमने इसको रोका, लाइव स्ट्रीमिंग बीच में रुकता तो फिर वहाँ गैप हो जाता। और आप जब चाहेंगे यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में जाकर के आप लोग जो बैठे हैं, जो चल रहा है एनी टाइम यू कैन, सो दिस इज परमानेंट लेक्चर्स। तो थोड़ी देर के बाद आप के लिए इनवाइटेड हैं, चाय पी करके जिनके सर्टिफिकेट हैं वो ले लें। अगर किसी वजह से सर्टिफिकेट कुछ कम पड़ गए हैं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि लोग रजिस्टर्ड होंगे, ऑर्डर इनके अगर रह गए तो बिल्कुल परेशान ना हो, 2 दिन के बाद कॉन्टैक्ट करें एंड दे विल गेट देयर सर्टिफिकेट्स। सो विद दिस ऑल आई अगेन इनवाइट डॉक्टर ज्ञानिका टू प्रोसीड फर्दर। थैंक यू। Thank you, sir. I request Dr. I request Dr. Lakshman Nagar, sir, to associate with Professor S.S. Gaurav, sir, and felicitate Dr. Tanupriya by presenting her a memento and a certificate. Thank you, sir. I request Dr. Ashu Tyagi, sir, to associate with Professor Gaurav, sir, and felicitate Dr. Vinay Pawar, sir, by presenting him a memento and a certificate. I request Dr. Dinesh Pawar, sir, to associate with Professor S.S. Gaurav, sir, and felicitate Dr. Nitin Garg, Department of Biotechnology. He played role of reporter in the current session. Now I will join Professor Gaurav, sir, to felicitate Ms. Urmila. Mr. Kushagra is also joining us for the honors. This marks the end of the workshop. Please take your tea. Good evening and good night. Thank you so much.